नमस्कार, आपका स्वागत है नवविमर्श के एक हिंदी पॉडकास्ट में। आज हम एक बार फिर से हाज़िर हो गए हैं बात करने के लिए, जो आजकल घटनाएँ हो रही हैं ईस्ट पाकिस्तान में। उसको बहुत से लोग बोलते हैं बांग्लादेश, पर हम लोग उसको ईस्ट पाकिस्तान ही बोलेंगे क्योंकि वही उसका असली नाम है। तो हमारे साथ आज आज फिर से उपस्थित हुए हैं डॉक्टर विजेत प्रशांता, जिन्होंने किताब लिखी है हिंदू मेशियन हिंदू जेनोसाइड्स, जिसके बारे में बहुत में चर्चा कर चुके हैं। तो विजित दा, आपने जो किताब लिखी थी हिंदू मिशन हिंदू जेनोसाइड्स, उस पर आपने नोआखाली जो था गण विध्वंस, उस पर बातचीत की थी। और हमने भी ये जो बंगाली किताब है बांग्लादेशी हिंदू हिंदू और बांग्लादेश, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आज जो घटनाएं हो रही हैं ईस्ट पाकिस्तान में, उस पर चर्चा और बातें की हुई हैं। तो हमसे देखा है आज क्या क्या हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए हैं, कलकत्ते में प्रोटेस्ट हुआ है बांग्लादेश एम्बेसी के सामने में, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी हुई हैं। तो ओवर टू यू, अब आपका क्या कहना है जो अभी तक घटनाएं हो रही है। हाँ, तो बेसिकली आपने जैसे कहा कि ये बांग्लादेश नहीं, एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान है। तो इसके बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करना ये चाहते हैं कि बांग्लादेश क्लेम करता है कि ये बांग्ला भाषा मतलब बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड द प्राइड अराउंड द लैंग्वेज ये एक देश बनाया गया है। बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि पहली बात तो जैसे हिंदू जेनोसाइड के ऊपर एक कंट्री बना है जिसका नाम है इंडिया। तो सेम आइडिया के ऊपर ही बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश में जितने 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी और करीब 5 लाख लड़कियों का रेप जेनोसाइड हुआ था। इनमें से लगभग 80 से 90% जो है, 90% लगभग हिंदू थे, जो बांग्लादेश ऐसे एक्नॉलेज नहीं करता। इंडिया का जो भी एकेडमिक लिटरेचर है उसमें भी इतना ज़्यादा इसको बताया नहीं जाता। बट रियलिटी यही है कि हिंदू जेनोसाइड के बेसिस पे 2 देश बनाए, 3 देश बनाए इनफैक्ट। जितने भी देश आप सोच सकते हो, अफगानिस्तान हो सके, पाकिस्तान हो सके, इवन इंडिया ऑल्सो, वो इसी बेसिस पे, क्योंकि जो पार्टीशन जेनोसाइड हुआ था उस 1947 में, उसके बेसिस पे फिर पाकिस्तान और इंडिया बना था। फिर सेम आइडिया पे बांग्लादेश बना। और ये कुछ नया नहीं है, ये हम लोग कोई हाइपोथेसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1947 में जब बांग्लादेश बना तब वहाँ का जो रेडियो था वहाँ पे ओपनली क्वेश्चन डिस्कस होता था कि ये जो हमारे देश में 30% या जो भी है 20% हिंदू रह गए, इनके साथ क्या किया जाए। दैट यूज टू बी अ क्वेश्चन, दैट यूज टू बी ओपनली डिस्कस्ड इन इन रेडियो। ठीक है, तो उसके जवाब में आता था कि अरब में जैसे ज्यूज के साथ हुआ था, कि क्योंकि बड़े किताब में वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा कि अरब में कोई जीव नहीं रहेगा, मतलब ऊपर का जो, जिनको लल्लन टप वाले आजकल ईश्वर कहते हैं, ठीक है, वो ईश्वर ने लगभग भेजा था। लोग तो खुदा अल्लाह पता नहीं, अरब वाले तो उसे अल्लाह कहते हैं। तो उन्होंने ये डिक्टाट दिया था कि अरब में कोई जीव नहीं रहेगा, तो जहाँ पे मिले उसको या तो कन्वर्ट करो या मारो या निकाल दो। सो उसी बेसिस पे तो ये वाला डॉक्ट्रिन जो है ये बांग्लादेश में ओपन डिस्कस होता था। प्रथम वालो एक अखबार था, अभी प्रथम वालो पे अटैक हुआ है रिसेंटली, है ना। तो ये प्रथम वालों में डिस्कस होता था कि हिंदुओं के साथ क्या किया जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा है आजकल। और प्रथम आलो हो गया, डेली स्टार हो गया, ये दो जो न्यूज़पेपर है, दिस यूज टू बी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड न्यूज़पेपर, जो बेसिकली अगेन जो हिंदू नर विध्वंस है उसको वाइट वॉश करने का जो माध्यम है, गणमाध्यम है, वो प्रथम आलो और ये न्यूज स्टार ये करता था। बट आप देखोगे कि इसी हफ्ते प्रथम आलो और डेली स्टार में अटैक हुआ और उनके जितने भी ऑफिसेस में जितने भी चीज़ें थे वो जलाया गया, वैंडलाइज कर दिया गया। विच मीन कि ये जो वायलेंस है इससे कोई भी बच नहीं सकता, और ये हमें ध्यान रखना होगा। सो इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिसेंटली ये क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके पीछे फिर कौन सा आइडियोलॉजी काम कर रहा है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको जैसे पता ही है, दीपू चंद्र दास एक 20-22 साल का हिंदू बंगाली बंदा, जिसको
ओपनली, मतलब आप देखोगे कि उसको, आई थिंक ढाका में ही हुआ है ये ढाका में हुआ था, राइट? ये वायलेंस ये मोयमन सिंह में हुआ या ढाका में हुआ? अ, एक बार चेक करना पड़ेगा कहाँ पर हुआ एक है बार चेक कर एग्जैक्टली, लीजिए। बट आप कंटिन्यू कंटिन्यू ये कंटिन्यू, हाँ, मैं हाँ, चेक हाँ। कर तो लेता हूँ। बेसिकली दीपू चंद्र दास एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम था पायोनियर्स नीटवेयर्स। ठीक है। पायोनियर्स नीटवेयर्स में अपेरेंटली इसको रिसेंटली एक प्रमोशन मिला था, सुपरवाइजर बन गया था ये। और क्योंकि एक हिंदुओं के ये सुपरवाइजर बन गया, तो ये दूसरों के आंखों में, मतलब टारगेट में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों के जो जो भी सराउंडेड मुस्लिम कोवर्कर थे, उनके उनके नजरों में आ गया ये बंदा, जो उनकी इस बंदे के अंदर, ये हिंदू के अंडर काम नहीं करना चाहता था। तो फिर ये अफवाह फैलाया गया कि इसने ब्लास्फेमी की है, मतलब जो इस्लाम है और उनके नबी है उनके नाम पे गुस्ताखी किया है इसने। एक रूमर ये आया था कि इसने ईश्वर अल्लाह एक जैसे हैं ये बोल दिया था, जो कुरान के नज़रों में ब्लास्फेमी है। और बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे कंट्री में मॉब के नज़रों में ये तो सबसे बड़ा ब्लास्फेमी है कि ईश्वर और अल्लाह को एक बोल देना, क्योंकि ये शिर्क हो जाता है। आपको ये जानना होगा कि जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो महात्मा गांधी बोलते थे, ये गाना वो सिर्फ मंदिर में बैठ के गा सकते थे। कोई कभी मस्जिद से ये आवाज़ कभी नहीं निकला कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको क्या सदगति सम्मति है, दे भगवान। ये एक्चुअली ब्लास्फेमस है, क्योंकि ये शिर्क है। शिर्क मतलब तुम अल्लाह को, दूसरे जो खुदा है, दूसरे जो भगवान है, उनके साथ एक आसन में एक 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 लेवल पे बैठा रहे हो, और ये शिर्क है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुरान में या इस्लाम में सबसे जो बड़ा गुनाह है वो शिर्क है। दुनिया में कोई भी आप गुनाह कर लो, आप किसी का कत्ल कर दो, किसी का रेप कर दो, इस्लाम में उसके लिए माफी है। लेकिन शिर्क जो गुनाह है उसके लिए इस्लाम में कोई माफी नहीं है। ठीक है। तो अपेरेंटली ये हमें सुनाई में आया कि दीपू चंद्र दास जो है, ये इसने ये शिर्क कर दिया, और ये तो मुशरिक है ही क्योंकि मूर्ति पूजा करता है। तो ये मॉब के नजरों में आ गया, तो पुलिस इसे लेके गया था, जेल में रखा था, तो वहां से फिर पुलिस ने इसको मॉब के हवाले कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश का जो इस्लामिस्ट जिहादी मॉब था, वो इसको पहले पीटा, मारा, लिंचिंग किया। तो शायद मर भी गया था या जान नहीं निकला था, तो शायद जिंदा भी था दीपू चंद्र दास, जिसको आग लगा के चौराहे पे जला दिया गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पाइनियर्स नीटवेयर्स जो कंपनी है, वो तो बोल ही रहे हैं कि एक्चुअली इनके पास कोई सबूत नहीं है कि इसने ब्लास्फेमी किया था। अम, और फिर ऑब्वियसली कि फिर रिलीजियस जस्टिफिकेशन आने लगा, और फिर इसके बाद इसको छुपाने के लिए प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स होने लगा। ठीक है। तो काफ़ी सारे इस्लामिक ग्रुप, जैसे जमात इस्लामी हो गया, एनसीपी, मतलब उनका जो एक पॉलिटिकल पार्टी एनसीपी अलाइंड ग्रुप, सारे सड़कों पे आ गए, ये बोलते हुए कि जो दीपू दास की जो हत्या है ये अल्लाह का डिक्री है, दिस इज अल्लाह's डिक्री। और क्योंकि ये ब्लास्फेमी किया था तो ये जायज़ है। ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल सस्पेक्ट था, जमात लीडर जुबैर हुसैन तशरीफ, वो शायद भाग गया है, या फिर पुलिस पकड़ने की मूड में नहीं है बांग्लादेश में। ठीक है। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश में लास्ट जो 50 सालों से जितने भी हिंदू हत्याएं हुए हैं, उस पे आप देखोगे तो ज़्यादातर का कोई, मतलब किसी सस्पेक्ट, इनको कोई भी जेल वेल में डाला नहीं गया है। उपरंतु बांग्लादेश में एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, जो लगाकर एक्चुअली हिंदुओं को घर से निकाला जाता है, उनके फिर घर उनमें कब्जा किया जाता है। ये लास्ट के 1947 से ये होता आ रहा है। इवन 1971 के बाद भी ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बांग्लादेश ने मिटाया नहीं। ठीक है। ऑब्वियसली फिर इसके अराउंड डिप्लोमेटिक जो टेंशन है वो बढ़ गया। बाय दैट आई मीन कि इंडिया ने तो इतना ज़्यादा कुछ कड़वा कुछ किया नहीं जितना बांग्लादेश ने एक्चुअली इंडिया को दबाया। तो बांग्लादेश का जो फॉरेन एडवाइजर था, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया जो काफ़ी थ्रेटनिंग था इंडिया के लिए। ठीक है। और फिर उन्होंने जो दिल्ली में बांग्लादेश के लिए जो वीसा ऑपरेशन था, उसको उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है। मुझे पता नहीं कि बांग्लादेश इंडिया के लोग
किस लिए जाते हैं अदर देन इंटेलिजेंस। बट एनीवे, फिर ऑब्जर्वर्स ने ये नोटिस किया कि इंडिया का ऑब्वियसली ना मोदी साहब हो गए या फिर जयशंकर जी हो गए, इनसे कुछ खास स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्विटर ट्विटर में आया है, बट उसके अलावा कुछ आया नहीं। इनफैक्ट जिस दिन ये लिंचिंग हुआ उस दिन आई थिंक मोदी जी को ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कुछ बड़ा अवार्ड अवार्ड मिल रहा था। ठीक है, तो हाँ, आई फिक्स तो इट, आई फिक्स्ड इट, कंटिन्यू। हम्म, अभी सही है ना? कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो यही सब चल रहा है। फिर इंडिया में भी जो आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है, खास करके बीजेपी के तरफ से, वो इतना भी मतलब कोई कुछ पैशनेट था नहीं। खास चर्चा नहीं हुआ इस बात पे। अगर न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ फिर भी नेताओं से कुछ बड़ा कोई भाषण वाषण कुछ आया नहीं। इनफैक्ट आप देखोगे कि प्रियंका गांधी और असादुद्दीन ओवैसी दो लीडर थे जिन्होंने इस पे बात शुरू किया। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर है, बड़े पॉलिटिकल लीडर है, उनमें से इन दोनों ने बात चालू किया। और दे स्पोक पब्लिकली अबाउट दिस वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। उससे कॉन्ट्रास्ट में आप देखोगे नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी लीडरशिप से खास कुछ आया नहीं। मोहन भागवत जो आरएसएस है, वो खुद को जैसे बोलते हैं कि दे रिप्रेजेंट व्हाट एवर हिंदुत्व एंड ऑल दीज थिंग्स, एटलीस्ट लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं। उनके तरफ से बयान असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी के बाद आया। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे बीजेपी भी कुछ शायद आई डोंट नो, मतलब पॉलिटिकल कैलकुलेशन कुछ कर रहा है और समथिंग। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली, राइट? इंडिया में इंडिया के हिंदू मरता है, कोई कुछ नहीं बोलता। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान में हिंदू मर रहा है, कोई नहीं बोलता। टू द एक्सटेंट कि अब असदुद्दीन ओवैसी भी चुप नहीं रह सकता ना। असदुद्दीन ओवैसी ये कर रहा है, उसके पीछे उसका एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, विच इज दिस जय भीम जय मीम जुमला, राइट? क्योंकि अपना जो दीपू दास था, वो शायद लोअर कास्ट कम्युनिटी से था। सो ये करके फिर ओएसी विल प्रोजेक्ट इन फ्यूचर कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ द लोअर कास्ट कम्युनिटी। जो ये जो अपर कास्ट बाबू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कांग्रेस हो गया या बीजेपी, ये लोग कुछ लोअर कास्ट हिंदू के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। ओनली जो मुस्लिम लीग की लीडर है, मतलब जो भी AIMIM या फिर जिहादी लीडर है, यही लोग कर रहे हैं लोअर कास्ट हिंदुओं के लिए। क्योंकि लोअर कास्ट हिंदुओं को जो अपर कास्ट हिंदू है वो हिंदू नहीं मानते। ये जुमला बाद में पेश किया जाएगा, जैसे जिन्ना ने अपने जोगेन मंडल को परसुइट किया था, उसी तरह से इसको भी खेला जाएगा। तो वो असदुद्दीन ओवैसी ये कर रहा है, इसको तो ये समझ में आ रहा है। नाउ बीजेपी इज स्टेइंग साइलेंट क्योंकि शायद इसका एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का नाम शायद ये जो नैरेटिव है, शायद ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बंगाल फोबिया फैलाना चाहते हैं। और ये काफी दिनों से बंगाल फोबिया फैला रहे हैं बाकी इंडिया में, कि लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, देखो बंगाली हिंदुओं की तरफ, कि बंगाली हिंदुओं किस किस कैसे कुत्तों की तरह मर रहे हैं। ठीक है, तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा हाल भी ये जो बंगाली हिंदू है उनके जैसा होगा। ठीक है, तो तुम बीजेपी को सिर्फ इलेक्ट ही नहीं, बीजेपी को पावर में रखो। अगर बीजेपी मान लो बहुत ज्यादा करप्ट भी हो जाए, अगर सिटीज में एयर पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ भी जाए, अगर हवा साफ भी ना रहे, ब्रीदेबल भी ना रहे, अगर तुम्हारे सिटी के, तुम्हारे राज्य के हिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट ये सब डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर अरावली जो है वो कोई बड़ा कैपिटलिस्ट के हाथों बिक भी जाए, अगर इंडिया के सारे कोने में क्रिश्चियन मिशनरी फैल भी जाए, अगर हिंदू मिसिया, हिंदू जन विध्वंस, इसको व्हाइट वॉश करते करते मतलब संघी लीडर्स थक भी जाए, अगर हिंदू टेम्पल इसी तरह गवर्नमेंट के कैप मतलब हाथों बंदी ही रहे, ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहा है जनरल कास्ट के खिलाफ कि जनरल कास्ट के लोगों के साथ तो हिसाब चुकता करना पड़ेगा, ये बातें अगर फैल भी जाए, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे बंदे जो बोलता है कि हिंदुओं को 10 मिनट में इस देश से मिटा देंगे, ऐसे लोगों को अगर प्राइम टाइम
न्यूज आवर में अगर जगह दे भी दिया जाए तो भी तुमको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम देखो बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और ये सेम हाल तुम्हारे साथ होने वाला है। और हिंदुओं का एकमात्र जो पालनहार है, इनको जो रक्षा कर सकता है, वो सिर्फ और मतलब सिर्फ बीजेपी हो सकता है या नरेंद्र मोदी हो सकता है। ये जो बंगाल फोबिया है, बंगाली हिंदुओं के बारे में जो फोबिया क्रिएट किया जाए, बंगाली हिंदुओं का जो सिचुएशन उसको एक्सप्लॉइट करके जो फोबिया क्रिएट किया जा रहा है, इसको मतलब इसको बेसिकली इससे जो वोट बैंक पॉलिटिक्स निकल रहा है, शायद इसके वजह से बीजेपी चुप है। बट इनको समझना चाहिए कि हिंदू बीजेपी के बावजूद भी दुनिया में रहे और लड़के जिए, और हिंदू बीजेपी के अलावा भी चला लेगा। अगर बीजेपी इस टाइम पे ढंग का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, अगर ढंग ढंग से अपना पॉलिटिक्स ड्राइव नहीं कर पा रहा है ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे, तो हिंदू ये पक्का है कि हिंदू बीजेपी का साथ छोड़ देगा, और हम लोग ये करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, कितने भी बड़े इंसान हो जाए, अरविंद केजरीवाल भी समझता था कि उनके अलावा दिल्ली में तो कोई आ नहीं सकता। उनके हिसाब से उन्होंने अपना पॉलिटिक्स बनाए थे, अपना कैलकुलेशन बनाए थे, बट वो टूट गया है ना। उसी हिसाब से आप देखोगे रिसेंटली बीजेपी हो जाए या मोदी, उसका ऑरा लेकिन टूट रहा है। मतलब लोग काफी हद तक मैं देख रहा हूँ सारे चैनलों में इनका जो करिश्मा था वो खत्म हो रहा है। सारे लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है, और हम लोग साथ छोड़ देंगे बीजेपी का, अगर बीजेपी या फिर संघ हो गया। संघ के बारे में तो हम लोग को पता भी नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं अभी। तो ये पता होना चाहिए कि जिस तरह का रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है, वो एक्चुअली उसमें अगर बीजेपी अभी चुप रहेगा तो उनका पॉलिटिकल नुकसान ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद भी काफी सारी चीजें हुआ ये सब, जो दीपू दास के लिंचिंग के अराउंड जो कहानी हुआ, उसके बाद फिर आई थिंक 22 नवंबर में रावजान एक जगह है आई थिंक चट्टोग्राम में, वहां पे फिर ऐसा हुआ कि दो हिंदू फैमिली को घर में ताला लगा के बंद कर दिया गया, और उस फैमिली के उस घर में, दोनों घर में आग लगा दिया गया। तो किसी तरह ये फैमिली बच के बाहर निकल पाए थे। हाँ, लेकिन उनके जो पेट्स थे या फिर उनके जो प्रॉपर्टी था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब जब चल रहा है, तब मोहम्मद यूनुस का ये औकात हुआ कि उन्होंने यूएस एम्बेसडर टू इंडिया उनको कांटेक्ट किया, और फिर उसने ये बोला कि इंडिया एंड शेख हसीना एक्चुअली बांग्लादेश में ये जो अनरेस्ट है इसको इंस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन में इंडिया ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है इसको इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली नेत्रोकोना एक जगह है आई थिंक, ये भी वो चट्टग्राम के आसपास है। नेत्रोकोना में एक श्मशान काली मंदिर था, श्मशान काली टेम्पल। शमशान में जो काली माता का एक टेम्पल था, उसको काली माता का मूर्ति तोड़ दिया गया, और पूरा टेम्पल को बेसिकली वैंडलाइज किया गया। ठीक है, फिर नया खेल सिलेट में एक जगह है, जो जहाँ पे एक हिंदू फैमिली पे अटैक किया गया, और इस तरह से चल ही रहा है। मतलब आई थिंक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का ये जो फिर से एक सिलसिला चल पड़ा है, ये रुकने नहीं वाला है। ये तब तक रुकने नहीं वाला है जब तक बांग्लादेशी हिंदू के लिए अलग देश ना बना दिया जाए। वो हिंदू देश नाम दे दो, रंगपुर नाम दे दो, चड़गांव की तरफ उनको अलग अलग एक कंट्री दे दो, फर्क नहीं पड़ता। बट जब तक यहाँ पे एक हिंदू देश नहीं बनता, तब तक बांग्लादेश का ये जो जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर और एक बात हुआ, एक बहुत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था दिनाजपुर पॉलिटेक्निक में, उसका नाम था मनमोहन रॉय। इसने एक हाहा रिएक्ट किया था, उस्मान हादी का कोई डेथ रिलेटेड कोई पोस्ट रहा होगा जिसमें इन्होंने हा इमोजी रिएक्ट किया था। सो उसको बेसिकली उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, बट ठीक है, मतलब इतना तो शुक्रिया बोल सकते हैं कि उनका उनको जिंदा छोड़ दिया गया, राइट। फिर ऑब्वियसली आप इस पे देखोगे, जब यूनाइटेड नेशंस का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली ये स्टेटमेंट इशू कर रहा है कि ये हमें एक ट्रांसपेरेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि ये जो उस्मान हादी है इसका मौत कैसे हुआ है। पर जब दीपू दास का जब हत्या हुआ, लिंचिंग हुआ,
और बांग्लादेशी हिंदुओं पे जो मैसेकर चल रहा है अभी, उसके लिए यूनाइटेड नेशन से कोई अभी तक ट्वीट या कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मीडिया इंस्टीट्यूशन में अटैक हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया कि डेली स्टार और प्रथम आलो जो दो ऑफिस था, ये दो न्यूज़पेपर का, अखबारों का जो ऑफिस था, इन पे हमला किया गया, चीज़ों को वैंडलाइज किया गया, आर्काइव फोटोग्राफ इसको तबाह कर दिया गया। एंड ऑब्वियसली ये जो डेली स्टार, प्रथम आलो, दोनों ही एक्चुअली हमें ये बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि ये लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है दोनों। ठीक है, इट इज़ फैक्चुअली, मतलब इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल कि वहाँ पे कोई प्रो हिंदू अखबार रहे, लेकिन ये सब दोनों लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर थे जो ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात करते थे अपने न्यूज़पेपर से। और ये दोनों न्यूज़पेपर को, ये ऑफिस को तबाह कर दिया गया। सो दिस एक्चुअली रिमाइंड्स कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, नवंबर रेवोल्यूशन रशिया में, 1917, 5 नवंबर, तो लेनिन उसके बाद पावर में आया। तो बेसिकली लेनिन के लिए मैक्सिम गोर्की लिखता था बहुत कुछ। ठीक है, मैक्सिम गोर्की का एक न्यूज़पेपर था, नोवाया जिजिन, आई थिंक न्यू विंडो, इसका इसका अर्थ न्यू विंडो है, या न्यू दुनिया, न्यू वर्ल्ड, ऐसा कुछ होगा। सो मैक्सिम गोर्की का ये अखबार था, यहाँ से वो बहुत ज़्यादा प्रेज करता था अपने लेनिन का। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ जब ये लेनिन पावर में आया, बताता हूँ फिर क्या हुआ। आई थिंक वी शुड डिस्कस इट हियर कि हाँ, फिर जिस तरह से लेनिन ने एक आर्म्ड रेवोल्यूशन ऑर्केस्ट्रेट किया, तो उसका गोरकी ने अपोज किया फिर, कि बोल्शेविक का जो एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ पावर है उसका उसने अपोज किया था, और कुछ कुछ क्रिटिकल कॉलम लिखे थे इसने। ठीक है, तो फिर और उसके बाद आई थिंक जो फ्री स्पीच था लेनिन आने के बाद, उसको सप्रेस कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और वो जो पूरा फेज चल रहा था उसको रेड टेरर कहते हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल को भी, इंटेलेक्चुअल जो उस टाइम रशिया के इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी था उसको अरेस्ट और एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो ये जो न्यू लाइफ, नोवेया जिजिन, यहाँ पे गोरकी एक्चुअली लेनिन को एक्यूज किया था कि लेनिन इज ट्रीटिंग रशियन पीपल एज मटेरियल फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर वो बोलने लगा था कि लेनिन इज डिस्ट्रॉइंग रशियाज कल्चरल एंड मोरल फाउंडेशंस। एंड इसके बाद ये जब कॉलम आया गोरकी के तरफ से, फिर लेनिन गॉट वेरी फ्यूरियस। ठीक है, और फिर लेनिन ने गोरकी को पॉलिटिकली साइलेंस करना चालू किया। तो ये जो न्यू लाइफ वाला जो अखबार था, इसको 1918 में बंद कर दिया गया, गोरकी को मार्जिनलाइज कर दिया गया, फिर सर्वेलेंस में डाला गया उसको। गोरकी के काफ़ी सारे जो एसोसिएट थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया या उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, और गोरकी को फिर लेनिन ने, ही यूज्ड टू कॉल हिम हिस्टेरिकल इंटेलेक्चुअल इन प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी अखबार, जो भी प्रोपागेंडा मशीनरी यूज किया गया था रशिया के अंदर लेनिन को लाने के लिए, क्योंकि लेनिन तो बाहर से आया था ना, आई थिंक ही वाज इन यूनाइटेड किंगडम, देन ही केम टू रशिया। उसी तरह से यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, उसी तरह से जो कोई भी लिबरल फोर्स जो थोड़ा बहुत इस्लाम का या फिर कोई गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर दे, उसको तबाह कर दिया जाता है। दिस इज इस्लाम, दिस इज कम्युनिज्म, दिस इज अब्राहमिज्म, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए आप देखोगे कि इतना ज़्यादा जितना भी लिबरल मीडिया हो जाए यूनाइटेड स्टेट्स में, दे आर नॉट नेवर गोइंग टू क्रिटिसाइज क्रिश्चियनिज्म। आपको कभी दिखेगा ही नहीं मतलब इतना बड़ा एक डेथ कल्ट है, इसको लेके कोई चर्चा हो रहा हो या कुछ। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये तो मीडिया पे अटैक करना, ये तो अब्राहमिज्म या फिर खास करके जिहाद, रेड टेरर, ये सब तो इनका तो काम ही है, कम्युनिज्म का या फिर इस्लाम का। ऑब्वियसली फिर आप और एक एस्पेक्ट देखोगे, विच इज दैट कि नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात बोलना जैसे चालू किया था वो एंटोनियो माइनो ने, सोनिया गांधी जी ने जैसे चालू किए थे, इस बार वो बुचर ऑफ गुजरात वाला जो रेटोरिक है, वो ढाका के हाई कमीशन के पास एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वहाँ रेडिकल ग्रुप एक्चुअली
गैदर हुए थे नमाज वमाज पढ़ने के लिए। सो वो बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का जो कौसाई बोला जाता है नरेंद्र मोदी को, ये वाला जो रिटोरिक है ये वहाँ पे यूज किया गया। ठीक है। सो बेसिकली आप देखोगे कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पे जितने भी एंटी इंडिया रिटोरिक चलता है वो कांग्रेस या फिर हमारे यहाँ पे जो काफी सारे जो एंटी इंडिया पार्टी है उनके द्वारा फैलाया गया रिटोरिक होता है इन जनरल। ठीक है। फिर एक हुआ कि ढाका में एक हिंदू रिक्शा वाला था, तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। ठीक है। तो उसको फिर पकड़ लिया गया, डिटेन करके टॉर्चर किया गया, मॉब ने टॉर्चर किया ये इल्ज़ाम लगा के कि ये बंदा एक्चुअली रॉ का एजेंट है। ठीक है। फिर आज एक खबर आया कि कहाँ पे हुआ ये, आई थिंक इस्कॉन, कहीं पे तो एक इस्कॉन है, ये ढाका नहीं था, आई थिंक ये भी चट्टग्राम का न्यूज़ है कि इस्कॉन डिवोटी एक था जिसको लिंचिंग किया गया क्योंकि वो हिंदू है। ठीक है। ये सब तो चल रहा है। फिर ऑब्वियसली ये जो उस्मान हादी जिसका हत्या हुआ, तो उसका उसका जो ये रिटोरिकल एडवोकेसी था फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया, खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो एक्चुअली इसके द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है, ये जो क्या बंदा है अपना मोहम्मद यूनुस। तो वो सिंगापुर में उसका बॉडी लेके गया था ताकि उसका इलाज हो सके, मतलब उसको बचाया जा सके, बट ही वॉज अनाउंस डेड इन सिंगापुर। तो उसके लास्ट को फिर जब लाया गया बांग्लादेश में, तो उसको काजी नजरुल इस्लाम का जो ग्रेव है उसके बगल में उसको दफनाया गया। आप सोचो, काजी नजरुल इस्लाम जो श्यामा संगीत लिखते थे, जो शायद इंडियन सब कॉन्टिनेंट खास करके बंगाल का सबसे बड़ा सेकुलर आइकॉन हुआ करता था, उसके बगल में इस जिहादी को दफनाया गया। ठीक है। फिर हादी के मौत के बाद एक फॉर्मर आर्मी मेजर है जिसका नाम अब्दुल्ला आजमी है। अब्दुल्ला आजमी ने फिर ये बोलना चालू कर दिया कि हमें इंडिया का जो सेवन सिस्टर है उसे तोड़ना होगा। तो ऑब्वियसली बांग्लादेशी आर्मी, एक्स आर्मी पर्सनल से भी ये बातें आजकल निकल रहा है। ठीक है। क्रॉस बॉर्डर कल्चरल आयरनी, मतलब अबू हिना रोनी एक बंदा है जो एक कॉमेडियन था, शायद वो मिराक्किल में आया था। बंगाली में एक कॉमेडी शो चलता है, एक बंदा है मीर अफसर अली। वो अपना पूरा नाम नहीं बताता क्योंकि वो छुपाने की कोशिश करता है कि वो मुस्लिम है, तो वो खुद को सिर्फ मीर बोलता है। एनीवे अपेरेंटली वो एक कॉमेडियन है जिसका मीराक्किल नाम का एक कॉमेडी शो चलता है बंगाल में। उसमें एक पार्टिसिपेंट था अबू हिना रोनी, जिसको बांग्लादेश से लाया गया था। उसने इंडिया के खिलाफ ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, और वो भी ये सब मतलब जिस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया वहाँ पे भी ये सब चर्चाएं चल रहा था कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसको काटना होगा इंडिया से। और यही जो आयरनी है, अम, ये हमें तब दिखता है जब शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में वो लेता है। राइट, मतलब इन स्पाइट ऑफ everything that is going on with Bangladesh and Bangladesh's audacity to play against India, to play evil against India, यहाँ पे एक एसआर के बैठा हुआ है जो मुस्तफिजुर रहमान को नाइट राइडर्स के लिए खरीद रहा है। ठीक है। सो ये जो और एक बात बता देते हैं यहाँ पे, जो मोहम्मद यूनिस है इसका एक लॉन्ग फेमिलियल हिस्ट्री है बाय द वे। तो इसका जो बाप था उसका नाम शायद दुदू मियाँ दुला मियाँ था, और ये बंदा एक्चुअली मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स करता था जो यूनुस का बाप था। और ब्रिटिश पीरियड में जितने एंटी हिंदू वायलेंस हुआ है ढाका कोलकाता यहाँ पे, इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है। सो ऑब्वियसली एक जिहादी का बेटा, एक एंटी हिंदू लोगों का बेटा तो एंटी हिंदू ही होना चाहिए। अम, अच्छा, फिर इंडियन डिप्लोमेट के रेसिडेंस पे अटैक किया गया ढाका में। तो एक रिपोर्ट रिसेंटली आया है कि इंडियन डिप्लोमेट के रेजिडेंस में अटैक हुआ है, और ये एक्चुअली एक पाकिस्तानी नेशनल ने किया है जो बांग्लादेश में पढ़ने गया है अपेरेंटली। सो प्रोबेबली आईएसआई का बंदा होगा।
और ये लेकिन बांग्लादेश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये वाला न्यूज़ ये लोग ये कवर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आईएसआई का बंदा होगा ये। अच्छा, फिर एक आया कि चट्टग्राम में अच्छा नवंबर 2024 में, आपको याद रहेगा, याद आएगा कि नहीं, एक इस्कॉन पे हमला हुआ था, ठीक है। वहाँ इस्कॉन पे, और वहाँ पे हिंदुओं पे हमला हुआ था, और जहाँ पे उस जगह का नाम है हाजारी गोली, ठीक है। हाजारी गोली एक जगह है, चट्टग्राम में ही है। वहाँ पे नवंबर 2024 में अटैक हुआ था, और वहाँ का जो इस्कॉन पे हमला हुआ था, और वहाँ पे लोकल हिंदुओं पे भी, माइनॉरिटी ग्रुप पे हमला हुआ था। तो उस हमले पे जिसने बेसिकली जो लीड किया था, जो बंदा एक आर्मी ऑफिसर या पुलिसमैन था, यूनुस ने उसको बुलाया, और उसको फिर उसको पुरस्कार मिला, ठीक है, बांग्लादेश में। और ये सब जब चल रहा है, तो बांग्लादेश ने इंडिया में जूट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, और अदानी का कुछ अदानी क्योंकि वहाँ पावर सप्लाई करता है, तो ऑब्वियसली कोई पेमेंट ड्यू था, तो वो पेमेंट इन्होंने दिया नहीं। तो अदानी शायद ये हॉल्ट कर दिया था पावर सप्लाई, बट अभी उसने पावर सप्लाई लेकिन रिज्यूम कर दिया। आप सोचो इंडिया कितना वीकली खेल रहा है। इंडिया फिर आप देखोगे हर रोज 600 टन, या फिर कुछ सोर्स बता रहे कि 400 टन के करीब पोटैटो और ऑनियन आज भी, मतलब हर रोज बांग्लादेश में पहुंचा रहा है। इसी की वजह से इंडिया में प्राइस में, ऑनियन और पोटैटो के प्राइस में हाइक आया है, जबकि बांग्लादेश के ऑनियन और पोटैटो का प्राइस अभी हाफ हो गया है। इंडिया का जो ये एक्सपोर्ट चल रहा है इसका वजह से, मुझे पता नहीं इंडिया ऐसे क्यों खेल रहा है, ठीक है। दिस इज बियॉन्ड एनी लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, फिर कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ ये चीज के खिलाफ, लेकिन कोलकाता का ये हुआ कि प्रोटेस्टर के ऊपर फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मतलब आप हिंदू मर रहा है इस सब कॉन्टिनेंट में, और उसके खिलाफ इंडिया में कोई हिंदू प्रोटेस्ट भी नहीं निकाल सकता, ये तो हालत है इधर का, ठीक है। सो ये सब तो कहानी अभी चल रहा है। और ऑब्वियसली आप देखोगे यूट्यूब में बड़े बड़े चर्चाएं चल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना रंगपुर काट के ले लेंगे, चटगांव काट देंगे। लेकिन ये सब सारी चर्चाएं हैं, जो रियल डेवलपमेंट आर्मी की तरफ से हुआ है। आई थिंक त्रिपुरा गए थे हमारा जो अ, सेना प्रधान जो है वो गए थे शायद, त्रिपुरा गए थे, क्योंकि 1971 में जब ढाका पहुंचे थे, आप देखोगे कि इस तरफ तो मेघना है, मतलब जो गंगा है एक हिसाब से, गंगा के उस पार क्योंकि ढाका है, तो ऑब्वियसली ढाका अगर आपको पहुंचना है सो नॉर्थ ईस्ट से ही पहुंचना होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में शायद ये फोबिया है कि इंडिया अगर बांग्लादेश को अटैक करेगा तो नॉर्थ ईस्ट से ही अप्रोच करना पड़ेगा ढाका पहुंचने के लिए। क्योंकि आई थिंक त्रिपुरा से ढाका पहुंचना, इट इज लेस देन 100 किलोमीटर, इट इज अराउंड 50-60 किलोमीटर। त्रिपुरा का जो एक थंब निकला हुआ है वहां से ढाका पहुंचना बहुत इजी रहता है। सो रियल डेवलपमेंट ये हो रहा है। बाकी ना मतलब प्राइम मिनिस्टर के तरफ से हो जाए या फिर ना ही सेना के तरफ से कुछ। अच्छा, और एक न्यूज आया रिसेंटली कि एक बीएसएफ जवान को पे इन्होंने गोली चला के उनको मार दिया है। सो बांग्लादेशियों ने, बांग्लादेश का जो आर्मी है, बीएसएफ के गोली चलाया है। सो ऑब्वियसली बांग्लादेश इसको एस्केलेट करना चाह रहा है, मे बी प्राइमरीली बिकॉज इन पे यूएसए और पाकिस्तान और चाइना, दे आर आल्सो प्लेइंग अ रोल। और मतलब बांग्लादेश कितना भी डिस्ट्रॉय हो जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, अपना जो यूनुस है, क्योंकि यूनुस तो बेसिकली आप देखोगे तो ये तो स्टूज है बेसिकली यूएस का शायद, और अंदर से ये जिहादी तो है ही। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। आम, जब तक इसे पैसा मिलता जाएगा तो ये सही रहेगा। इसका एक करप्शन का भी चार्ज आया था शायद, इसका जो ग्रामीण बैंक था उसके अराउंड। लेकिन ये जब प्राइम मिनिस्टर बना, वो सारे जो एलिगेशंस या फिर जो भी केस था उसको इन्होंने हटा दिया, ठीक है। सो ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन 1971 में जैसे
मुझे लगता है कि इंडिया का कुछ हद तक एडवांटेज था यहाँ पे, लेकिन इंडिया का एडवांटेज इतना है नहीं। इवन आप अगर देखोगे कि पहली बात तो अगर नैरेटिव के मामले में भी हो, राइट, तो अचानक से जैसे बांग्लादेश के लोग प्रो पाकिस्तान हो गए, विच इज़ अ ह्यूज फेलियर फॉर इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क एज वेल। बट आगे देखेंगे कि क्या क्या होता क्या है एक्चुअली। Bijitda, so we have one more guest who has come. So I am going to add राइट, him and then continue the discussion. श्योर। So welcome, Shastri. So let me actually like give my take on the point that you have raised. You have raised very valid points. Okay. So your last point was that the so-called Islamization of Bangladesh is partly, maybe not fully, but partly the blame goes to India. Okay, because they let this happen. Okay, राइट। so there are two three qualifications on this. Okay, so we need to remember that 1971 when Bangladesh was created from East Pakistan, it became Bangladesh, but inherently it was a kind of Congress government, okay, a kind of secular government, and we know now, we know a lot of things that even Indira Gandhi did not want Indian army to go to Dhaka from the राइट, military historians that we now know. So that like there was no intention of India, that's government at that time 71, to actually Indianize or change the social fabric, okay, the thinking pattern, the perspective of that population which became Bangladesh. Okay, so राइट। in that context, yeah, it's a historical blame which is there, but there is a political angle to it as well. Okay, so yes, and there's one more thing. One more thing is that when 2014, when Modi government came into power, okay, when Sheikh Hasina was ruling, so at that time, I think the society was already Islamicized. Okay, because this radicalization happened in late 80s onwards. Till 80s, correct? The Bangladeshi women were singing songs, Rabindra Sangeet, Shadi. They're wearing, correct? So in late 80s or 90s, when the Middle East money came in, money came from Middle Eastern countries, the real like Islamization happened, and that happened also because a lot of funding came for madrasas from outside the country, especially राइट, Middle East. So in that context, the government of Sheikh Hasina was also responsible, and there was a lot of other factors like America and other countries were funding this. Yes, राइट। the Indian establishment, the security establishment, the intelligence, and the political, they could have actually done much more. Okay, but they had limited scope in terms of the way things were working on. So that is one part to it. Okay, and the other part is regarding. I want to actually. We can see, okay, BJP is playing a kind of a devil's advocate kind of thing, correct? They are not speaking for Hindus, okay, that is accepted. But I, as a Hindu, want to ask all the secular, so-called secular parties, correct, those who say secularism is their motto, including DMK, including Congress, including Samajwadi Party, including other parties, Janata Dal, correct, they all say that we are secular. Why we are, why they are silent on this? No, Why they are DMK not is silent silent. on That's what this? I'm saying. कि the whole DMK, argument no, around, no so part. the, आप देखो जो जो पार्टी बात किया है और वो इस मुद्दे को उठाया है वो कांग्रेस है। They are not silent, but they are playing their own political game, just like Hmm, BJP is playing their own political game. यहाँ पे मेन इशू क्या है? हिंदू जनविध्वंस, हिंदू मिसिया hmm, 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 इन बांग्लादेश। until unless you say as it is, right, फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर बीजेपी ये बोल भी रहा है या फिर बीजेपी का कोई ट्विटर अकाउंट या हैंडल आप देखोगे, आप अमित मालवीय का hmm, ट्वीट देख लो, ट्वीट से क्या झलकता है? वो बांग्लादेश का जो इशू है और वेस्ट बंगाल का जो इशू है उसको एक तराजे पे रख के ट्वीट कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता ना।
जो बंगाल का ओके। वेस्ट बंगाल का इशू है उसको अलग रखो, बांग्लादेश, जब तुम बांग्लादेशी हिंदू के बारे में ट्वीट कर रहे हो उसके बारे में ट्वीट करो। द मोमेंट यू आर इक्वेटिंग दीज टू, तब एक बांग्लादेश का जो रेडिकल बंदा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अरे आ, दिल्ली तो बोल रहा है कि बंगाल और बांग्लादेश का इशू सिमिलर है, तो इसका मतलब है उसका 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 माइंड भी तो एक्सपेंड हो रहा है कि अच्छा फिर तो हम लोग वेस्ट बंगाल को कैप्चर कर सकते हैं। तुम जब इस तरह का इक्विवेलेंट सेटअप कर रहे हो, तुम फिर बोल रहे हो कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है, तुम फिर यू आर फ्यूलिंग द स्पिरिट ऑफ दिस रेडिकल जिहादीज। तो मैं हमेशा इसलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी क्या कर रहा है, बीजेपी इज फ्रेमिंग दिस इक्विवेलेंस कि जो बंगाली वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश का इशू सेम है, सेम नहीं है। वेस्ट बंगाल अभी भी इट्स अ फंक्शनिंग स्टेट, इट इज नॉट एज बैड एज बांग्लादेश, इट इज बेटर देन अ लॉट ऑफ बीजेपी रूल्ड स्टेट फॉर दैट मैटर। ठीक है, बार बार यही जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अरे वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ये अगर अगर कोई बाहर का कोई कंट्री है उसके बारे में अगर कोई इशू है, ट्रीट इट एज इट इज। ठीक है, मुझे इसमें दिक्कत है कि तुम हर चीज को तुम जैसे बीजेपी और कांग्रेस के पॉलिटिक्स के डुअलिज्म में ला रहे हो। खुद के इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है इंटरनल पॉलिटिक्स का, बांग्लादेश को उसमें घुसाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंप्लेंट है। और आप देखोगे जैसे रेडिकलाइजेशन तो शुरू से ही था, क्योंकि बांग्लादेश इज द ओरिजिनल पाकिस्तान। जो जो इकलौता जो मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट था वो बंगाल में था, और वो इकलौता मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट आया था जोगेंद्रनाथ मंडल का जो तपस्विली पार्टी था उनका हाथ पकड़ के, उनका सपोर्ट लेके। और वो इतना गहरा मतलब इट वेंट इन, मतलब इनटू सो मच इन द स्पिरिट ऑफ दिस होल बंगाल कि रिमोट विलेज में भी ये फैल गया था। अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो 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 इनके बीच जो खाए हैं वो वाइडन हुआ था। वो ढाका के अराउंड या फिर बांग्लादेश, करंट जो बांग्लादेश है वहाँ के गांव गांव तक ये फैल गया था, टू द एक्सटेंट जब जिहादियों अटैक करते थे गांव में, मान लिए कोई उच्च वर्ण तथाकथित अपर कास्ट के बंदों को, तो लोअर कास्ट हिंदू ये कांग्रेट मतलब एक साथ आते भी नहीं थे। ठीक है, ये कालिदास वैद्य का एक बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो बात यही है कि ये हमेशा से ही इनको पॉलिटिक्स आता है बांग्लादेश वालों को, और एग्जैक्टली कैसे पॉलिटिक्स खेलना है ये भी आता है। और उसके बाद 1947 के बाद जितने भी सो कॉल्ड अपर कास्ट के हिंदू थे वो तो इधर आ गए, वो इधर आके वो कम्युनिज्म ज्वाइन कर लिया। और सेम जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो बांग्लादेश में जिहादियों के साथ हाथ मिला लिया। और इसका एक रिजल्ट आप देखोगे, ये जो कांगला पुक्खो गौरतो चैटर्जी जैसे लोग हैं, गौरतो चैटर्जी का मैं बार बार बोलता हूँ, उसका ट्विटर अकाउंट देखो। ट्विटर अकाउंट का जो उसका जो क्या बोलते हैं डिस्प्ले पिक नहीं, वो जो कवर पिक्चर है, कवर पिक्चर में वो ग्रेटर बांग्लादेश को दिखा रहा है। आप सोचो, एक सो कॉल्ड ब्राह्मण बंदा जो कोलकाता में बैठा हुआ है, आईएसआई में जॉब करता है वो बंदा, आप अगर भूपेंद्र दिखा सकते हो तो दिखाओ उसको, वो चीज को, गौरव चैटर्जी के इसके अकाउंट में जाओ, दिखाओ कैसे वो लार्जर बांग्लादेश के लिए लड़ रहा है। ये बंदा बोलता है कि बांग्ला को कहूँ, मैं बांग्ला लैंग्वेज के लिए लड़ रहा हूँ। गौरव चैटर्जी का, चैटर्जी मतलब वो ब्राह्मण बंदा है, जॉब करता है आईएसआई में, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, और हार्वर्ड का पढ़ने के बाद आईएसआई में जॉब कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करता है, और वो ग्रेटर बांग्लादेश के लिए लड़ रहा है, कोलकाता से लड़ रहा है। इतना एजुकेटेड बंदा, एक प्रोफेसर है कोलकाता का आईएसआई का। ठीक है, तो ऐसा अगर चलता, क्योंकि इसका जमात इस्लामी के साथ हाथ है। और बात यही है, अगर अगर मतलब वेस्ट बंगाल साइड अगर कोई ब्राह्मण बंदा ये सब के लिए लड़ने लगे, फिर तो खत्म ही हो गया ना। फिर तो बोलने के लिए फिर कुछ रह नहीं जाता ज्यादा कुछ। तो ये तो बहुत ही मतलब क्या बात है, बहुत डिप्रेसिंग एक सिचुएशन है, जहां से निकलने का रास्ता हिंदू बंगाली को ही ढूंढना होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से आके कोई हमें कुछ राह दे सकता है। हिंदू बंगाली का लड़ाई हिंदू बंगाली को लड़ना होगा, हमारे लिए कोई नहीं लड़ने आएगा, ना कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लड़ने के लिए आएगा। ये देखो, दिस इज द गाय गॉर्गो चैटर्जी, व्हाट ही इज शोइंग इन हिज कवर पिक्चर। व्हाई, मतलब आप देखो, ये अगर हम लोग जनरली क्या करते हैं,
और उसको कवर पिक को उस पर क्लिक करो तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली क्या दिखाने जाते हैं। हाँ, ये इसका कवर पिक है। क्यों है ऐसा कवर पिक? हम लोग अगर मैप रखते हैं तो इंडिया का मैप रखते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल का कोई अगर बहुत ज्यादा अगर हिंदू बंगाली हो गया है कि बंगाली नेशनलिज्म के लिए व्हाट एवर, ये बंदा ये ग्रेटर बांग्लादेश दिखा रहा है ना। इसका चाल समझो आप। ये गौरव चैटर्जी, ये ब्राह्मण बंदा है, ये आईएसआई में प्रोफेसर है, लेकिन ये ग्रेटर बांग्लादेश के लिए लड़ रहा है। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बंदों को मतलब लिथड़ नहीं मारेगा, उस इंस्टीट्यूट से निकालेगा नहीं। ये तो प्रोफेसर है, और वो बाहर से यूएस से पढ़ा हुआ प्रोफेसर है। तो ये तो नैरेटिव प्रोवाइड कर रहा है ना यार जिहादियों को। और इसका मतलब अभी रूमर में भी है कि इसका जमात इस्लामी के साथ इसका गठजोड़ है। और ये बंगाल से बंगाल नेशनलिज्म फैला रहा है, मतलब व्हाट एवर बंगाली नेशनलिज्म फैला रहा है। ठीक है। Okay, Shastri, I have a okay. I will ask questions to Shastri and Vijitda both. Okay, so Vijitda mentioned that okay, no political party in its true spirit is speaking for the Hindus, whether the Hindus of Bharat or Hindus of Bangladesh. BJP is doing their own thing, Congress is doing their own thing, others are doing their own thing. So they are doing their own politics based on Hindu blood across Bangladesh or in India. So this question to both of you, Shastri, you can first go ahead. I mean, I marginally disagree, right? So there is something called as navel gazing, which is basically like you're looking inwards. Now, what Vijita is saying, I'm not refuting any of that. I'm not saying he's wrong, right? But I think his focus is a little too narrow. You have to look at things in a broader sense. Now, if I were to talk about the BJP in, say, Maharashtra or even Tamil Nadu, they're actually overperforming, right? So there's definitely a thing about local dynamics that needs to be acknowledged. There is also regional dynamics that also needs to be acknowledged. But I think we should not conflict that with what is happening in other parts of the country or the BJP as a whole, right? So I think that needs to be avoided a little bit. Now, the second thing is with regards to Bangladesh, right? Um, until the government, I'm not talking about the party, because the thing is, I think it's easy for the party to basically make missteps and ruin the entire situation. Now, there's definitely some sense in that. Like, I think the government's definitely saying that, hey, party thoda discipline rakho, right? Because the government might want to have its own narrative. Now, you have to think about it this way. Party is different from the government. They might have converging interests, they might have diverging interests. In case of Bangladesh, they definitely have diverging interests, right? Because it's an international situation. So government might want to manage its own narrative. Government might want to show project that this is not just a party thing, right? इसीलिए वो प्रियंका गांधी को बोलने दे रहे हैं पार्लियामेंट में. After all, it is the government that sort of has the control of who gets to speak, doesn't get to speak. The speaker basically says that, hey, मैं तुझे ये टॉपिक पे बात करने के लिए मैं तुझे टाइम एलोकेट कर रहा हूँ, राइट? आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इज ऑब्वियसली देयर, बट वो किसके लिए कर रहे हो? ठीक है, हम वी कैन आर्ग्यू दैट, ठीक है, वी आर लेटिंग प्रियंका गांधी get some brownie points over the Hindu thing and all that. But I think if you look at it from a external perspective, right, it basically tells the rest of the world that तुम लोग चुप रहो, हमारे पास opposition है, or opposition is also holding the government's view. I think that needs to be understood as well, right? Now, the second thing is, I think we have to acknowledge that not everything can be done in public. थोड़ा पब्लिक मैसेजिंग करना पड़ता है,
thoda you have to read between the lines, and definitely until any action is taken, like military or diplomatic or any kind of escalatory action is taken, government को मुंह बंद करके रखना पड़ेगा, and they will have to bear the political cost that comes with it. I think that's just the unfortunate reality of the situation. Um, Now, with that said, I think within the national security circuit, there's definitely a lot of serious talk going on about बांग्लादेश के साथ क्या करना चाहिए करके, right? But उसके लिए भी एक थोड़ा एक threshold रहता है. And this is just the realities of international relations. Like to 71 के टाइम पे भी जाके देखो तो it like Indira Gandhi also had to patiently wait for about 8-9 months before they could basically initiate military action. So वो political cost वो government को bear करना ही पड़ेगा. वो उसके अलावा कोई choice नहीं है. That's the unfortunate reality of the situation. Okay, so let me throw one more question before I will add नहीं Rishi. If you हाँ want हाँ to join, just yeah, राइट go ahead, Jidda. आई थिंक Jidda, आई go ahead. थिंक अगर so we are converging on one point which is that कि the situation is unfortunate, ठीक है, बट हमें यहाँ पे और एक चीज देखना होगा which is that कि ये सिचुएशन जा कहाँ पे रहा है, मतलब इज इट अगेन लीडिंग टू अनदर 1971? बांग्लादेश के लोग जो हैं और बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं, बांग्लादेश का जो आर्मी है, वो वहां तक ले जाना चाहते हैं या चीजों को? और ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दिस टाइम दे आर थिंकिंग कि दे हैव सपोर्ट फ्रॉम चाइना, यूएस, पाकिस्तान. उनको लग रहा है कि यहाँ ये सबसे इनको सपोर्ट मिलने वाला है. ये करना No, चाहते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन Jidda, है. no, नहीं, मुझे लगता because है कि ये लोग करना चाहते हैं, मुझे लगता yeah, है. yeah, okay, okay, you okay. Let मुझे me give a इसलिए counter लगता है argument. क्योंकि हाँ, मुझे इसलिए लगता है बिकॉज दे थिंक दे हैव अ नैरेटिव व्हिच इज द ग्रेटर बांग्लादेश एंड दिस टाइम दे आर गोइंग टू अचीव इट. और Okay, so let उन्हें me. उन्हें लगता है कि ये जगह उन्हें चाहिए, ये जो सेवन Hmm, सिस्टर्स हो गया, फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी hmm, इन्हें ये सब जगह चाहिए, hmm, क्योंकि hmm, वो चाइना के साथ फिर लिंक कर सके डायरेक्टली. hmm, जो बार्मा के साइड जो चल रहा है, जो चटगांव साइड उनका जो अनरेस्ट hmm, चल रहा है, उसको थोड़ा उस पर काबू पा सके. वाटर जो है उस पर कंट्रोल पा सके. hmm, काफी टाइम ये मतलब देयर मेन टारगेट इज सेवन सिस्टर्स. काफी टाइम बोला जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी ये लोग छीन लेंगे, बट ये सब तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉलिटेड नैरेटिव है, जैसे हम लोग तिब्बत के बारे में बात करते हैं. ठीक है. लेकिन मुझे लगता है कि दे आर रियली थिंकिंग कि ये लोगों को सेवन सिस्टर्स मिल सकता है. एंड देयर इज रियली समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश, जहाँ पे चाइना बोल रहा है ठीक है अरुणाचल हम लोग रख देंगे, और तुम लोग ये आसाम और ये सारा जो है ये तुम अपने पास रख लो. आई डू थिंक दे बिलीव कि दिस टाइम दे कैन पुल इट ऑफ. hmm. Okay, so let me give you a counter argument on this on one by one. First of all, correct, it's called strategic posturing. Correct. When you see a very aggressive statement from diplomats or political leadership, correct, those very aggressive statements are should not be taken literally because they are called strategic posturing, where you are playing an aggressive game and you want to see how the other part actually person responds or the other country responds to it. And second thing is that everybody knows, including Bangladesh army knows, that they cannot fight or win a conventional war with India. Even China is supporting it, even US is supporting it. So militarily it is not possible. Yeah, the only thing can happen is kind of like a guerrilla urban warfare, at the worst kind of thing. Okay. So military knows it pretty well that it cannot win a war against India because it is surrounded by three sides by land border, and Bay of Bengal is owned by India, so they cannot escape it. Okay, so Bangladesh army is not as dumb as we are idiots as they are to actually think they can do it, because they are losers. If today there is a war with India, the army is going to lose its face. They're going to lose all their perks and benefits that they get, because
De facto army controls a lot of things in Bangladesh. So logically, it doesn't make any sense. Yeah, if there are some jihadi elements within the army, but they also do not want their perks to go away. So now, why these statements are coming? They are coming because over the years, correct, the kind of radicalization which has taken place, correct. So, correct, I say zombie, correct, the zombification of Bangladesh. So, I would call it a little zombification of Bangladesh, which has happened. Now, when you have a very critical mass of zombies being enabled by uh, forces which are outside Bangladesh to actually contain India in many ways, correct? So, and they are being just used, they have been used multiple times. So, in actuality, it is not possible, but yes, it is a kind of a see, the jihadis want a destabilized Bangladesh because they can only survive in an unstable Bangladesh. Right. Structurally, socially, and politically. The jihadis, see, Sheikh Hasina ran a government which was a stable government. Okay, there are lots of issues were there, but it was a stable government. It was progressing well in terms of social indices. It was progressing well in terms of economic output. It was showing correct. So at that time, people will not go and join a protest because they have a job to do. They can go and get a job in the factory. So the jihadis want this instability to persist because they can only survive in this kind of situations. So all the elements which are saying all these provocative statements, they are a kind of a like wordplay which is happening, and it's at a posturing at a level where they want a confrontation because they can only survive. Shastri. Um, I think uh, what I would say is also um, we should. So when it comes to Bangladesh, right? I think there's a certain attraction to pessimism when you say that it's a failure of government of India policy, right? When on the other hand, actually it's a failure of secularism. If you think about it, right? Bangladesh under Mujib was supposed to be a secular republic. That that has fundamentally failed, right? And we should start coming out with a narrative saying that in a majority Islamist society, there is no place for secularism, right? There is no place for secularism. Period. Like you can say whatever you want. On the second thing, like China is a very opportunistic power, right? कुछ भी करे situation कैसे भी होने दे वो opportunity वो ढूंढ के निकालेगा, right? Now if Bangladesh, if the Bangladeshis are like, we want to build a greater Bangladesh and uh, we'll invade the Seven Sisters or whatever. China is obviously going to be like, okay, तुझे करना है कर, करके दिखा, right? Uh, this has always been Chinese strategy. That's not going to change fundamentally, right? But it can work to our benefit if we nib Bangladesh where it's at. Now, that's a question of political timing, right? When will the government put uh, uh, um, um, pull the trigger? That's a question of political timing. नहीं, चाइना बोले, मैं वही बोल रहा हूँ कि सो पहली बात ऑन सेकुलरिज्म, राइट? So this is you. We Hindus need to know this is precisely what secularism is. Secularism is temporalism. What is temporalism? कि जब तक जो जो क्रिश्चियन या फिर इस्लामिक पावर है, जब तक वो हावी नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा पावर स्ट्रक्चर को ग्रैब नहीं कर पाता, तब तक जो चलता है उसे सेकुलरिज्म कहा जाता है. इन द सेंस कि देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेट. एक तो गॉड के लिए है विच इज इटर्नल, एक ये ह्यूमन बींग्स के लिए विच इज सेकुलर. ठीक है, तो क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में कि जीसस का सेकेंड कमिंग से पहले दुनिया का जो जो भी देखभाल करना होता है वो एक सेकुलर स्टेट करता है. फिर
जब पूरा जगह, पूरा जो दुनिया है या फिर एक स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो जब पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जो आता है दैट इज क्रिश्चियन और इस्लामिक स्टेट। द उनके हिसाब से जो सनातन है, उनके हिसाब से जो इटर्नल स्टेट है। So this is precisely what was the intent of the secularism, and secularism in Bangladesh has delivered it, I would rather say. In similar ways, secularism in India is also going to deliver. कि जब पूरे सारे हिंदू जब कन्वर्ट हो जाएंगे, वो शायद वो इस्लाम में हो, शायद क्रिश्चियनिटी में हो, तब सेकुलरिज्म का जो काम है, टेम्पोरलिज्म जो है, सेकुलर स्टेट विल सीज टू एग्जिस्ट, एंड देन इट विल बी टेकन ओवर बाय द इटर्नल स्टेट of either Christianity or Islam. So this is what precisely secularism is, and secularism in Bangladesh has delivered. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चाइना अगर चाहता है कि हाँ, अगर कुछ दिन तक अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके, इंडिया को अगर घुमा के, ऑब्वियसली इस पे तो यूएस और पाकिस्तान भी हाँ कहेगा। एंड दिस इज एन इशू जहाँ पे जिस मामले में अरब हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, चाइना हो जाए, यूएस हो जाए, सारे एकजुट हो जाएंगे इस मामले में कि ये क्रिएट करो। आप देखोगे ये जो जॉन डेलोविच, एक यूएस का फॉर्मर एम्बेसडर था ढाका में, शायद वो ज्यू बंदा है, ही इज ए ब्लडी ज्यू गाय। वो बोल रहा है कि वो बांग्लादेश का जो जिहादी है उनका साथ दे रहा है, उस्मान हादी का साथ दे रहा है, इंडिया को कोस रहा है। एंड अब मैं ट्विटर में, मैं मतलब इसराइल को टैग कर रहा था कि हियर इज अ ज्यू वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। बट ऑब्वियसली जो जीविश किताब है वहां पे भी हमारे जैसे जो आइडल वर्शिपर है उनको गाली दिया गया है, उनको उनको ये राइट दिया गया है कि इनको झूठ बोल सकते हो, इनको बहला सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर सब ह्यूमन, दे आर एनिमल्स। जीव लोगों के हिसाब से भी हम लोग तो एनिमल है। तो इंडिया एक ऐसा पॉइंट है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारे जो जो पावर है वो एकजुट हो सकते हैं, और ये हो रहे हैं। अगर पूरा इंडिया खत्म हो जाए तो इसराइल के लिए वो खतरा है, लेकिन अगर सेवन सिस्टर चला जाए वो इसराइल के लिए भला होगा, आपको ये समझना होगा। ठीक है, अगर सेवन सिस्टर चला जाए तो इधर से अगर चाइना कुछ हद तक कैप्चर कर लेगा, ये कुछ हद तक अगर बांग्लादेश कैप्चर कर पाया जो सेवन सिस्टर से वो साइड है, फिर वहां पे ये लोग एक क्रिश्चियन नेशन बना सकते हैं। और अगर क्रिश्चियन नेशन बनाएंगे तो वहां पे फिर इसराइल का दबदबा होगा। इसराइल वहां पे अगर उसको एंट्री मिलेगा उस जगह पे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे, तो वहां से फिर जो इधर के जितने भी छोटे मोटे कंट्रीज है उन पे वो ध्यान रख सकेंगे। बार्मा में जो अनरेस्ट है उस पर ध्यान रख सकेंगे। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे ध्यान रख सकेंगे। वहां से फिर चाइना के साथ भी लिंक एस्टेब्लिश करना वो आसान रह जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिश्चियन नेशन बनाना, बांग्लादेश को थोड़ा लैंड देके, ये तो यूएस और इसराइल के इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे इंडिया को एग्रेसिवली खेलना होगा। और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता ये जो अगर पॉलिटिकल एंगल जिसे दिया जा रहा है कि ठीक है हमारे तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी तो इस पे बात कर रहे हैं, तो हमें तो क्यों बात नहीं करना चाहिए? भाई तुम हिंदुओं के वोट लेके आए हो, तो तुम बात नहीं करोगे तो कौन बात करेगा? अगर मोदी इस पे बात नहीं करेगा तो मोदी कावर्ड है ना, वो बुजदिल है वो। तो ये सब छप्पन इंच बच्चों ने ये सब बातें नहीं करना चाहिए उसे। ये सब नॉर्थ ईस्ट ऐसा इशू है जिसपे स्ट्रेट बैट से खेलना चाहिए। ये सब फालतू प्रियंका गांधी ने बोल दिया और ओवैसी ने बोल दिया तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, या फिर हमें दिखाना है कि हमारा ऑपोजिशन को बोले, ये मैटर ही नहीं करता। इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट बैट से एग्रेसिवली खेलना होगा। एग्रेसिवली खेलना होगा इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी भेज दो, बट बहुत सारे तरीके, वो आलू और प्याज पहुंचाना तो तरीका नहीं है ना मेरे हिसाब से। क्यों पहुंचा रहे हो? ब्लॉकेट करो इनको, घेरो इनको। वो सब कैलिब्रेटेड मैनर से Okay, होएगा वो आई थिंक okay, okay. वी प्राइम Yes. मिनिस्टर जब मोदी जी जब बोलेंगे ना, इट्स बेसिकली लाइक उसका एक टाइमिंग रहता है, राइट? एंड उसका एक नहीं यार, कोई भी अगर इन जनरल अगर अगर कोई भी एनी गवर्नमेंट लिंचिंग हो ने रहा है, जब अखलाक का लिंचिंग हुआ था
तो वो गोरक्षक को गुंडा बताना, लिंचिंग के लिए माफी मांगना, या फिर शबाना आजमी के जो पैर टूट गए थे उस पे तो इंस्टेंट ट्वीट और अच्छा सा रिएक्शन आया था। इस पे क्यों नहीं आ सकता? अगर कहीं भी लिंचिंग हो उस पे तो बात कर ही सकता है। बांग्लादेश कैसे कर रहा है? वो बांग्लादेश हाई कमीशन को चिट्ठी भेज रहा है कि तुम्हारा हमारा जो बांग्लादेशी एम्बेसी है दिल्ली में, वहां पे हिंदू लोग चढ़ गए थे। वो लोग अगर ये इतना छोटा कंट्री होकर कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकता? मतलब ये तो मास्टर स्ट्रोक नहीं बोल सकते यार। नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक की बात सेम नहीं है। चीज नहीं, देख, मास्टर स्ट्रोक। सो बेसिकली इट साउंड्स लाइक मास्टर स्ट्रोक ना, जब तुम बोल रहे हो कि भाई ये बहुत अच्छे से खेलना। अच्छे से खेलना क्या होता है? यूएस बोल सकता है, यूके बोल सकता है, इंडिया नहीं बोल सकता। नुपुर शर्मा के केस में सेम चीज हुआ। वो मास्टर स्ट्रोक खेलने गया कि नुपुर शर्मा के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे भाई? उनके बुक में लिखा हुआ है। वो वहां से कोट कर रही है नुपुर शर्मा। एग्जैक्टली जो उनके हदीस में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं, और इसको बोलना भी नाजायज हो गया। तो ये मतलब अनटिल अनलेस यू आर ऑनेस्ट ऑन द डिप्लोमेटिक मैटर्स, ये तो डिप्लोमेटिक चीज है ना, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी नहीं है। तो यहाँ तो स्टेट बैट से अच्छे से खेल ही सकते हो। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा वो वेनेजुएला का वो ब्लॉकेट कर सकता है, उस पर अग्रेसिव हो सकता, बोल रहा है कि अटैक कर दूंगा, अगर ये बोल सकता है डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा, तो इंडिया तो बांग्लादेश को एक अच्छे से एक ट्वीट या एक अच्छा रिस्पॉन्स बोल दे ही सकता है कि कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। मैं यही बोल रहा हूँ। इसमें इसमें इतना मतलब ठीक ठाक रिएक्शन ना देना, ये मोदी जैसे बंदा बुजदिल है, और ये बंदा बुजदिल है। ये बहुत बार प्रूव कर चुका है कि जहाँ पे इस्लाम पे बात आता है ये बंदा बुजदिल रहता है। ठीक है, इसके औकात से बाहर है इस्लाम को कंट्रोल करना। ये को अपना ऋषि कुछ बोल रहा था शायद। हाँ हाँ। सो नमस्ते टू ऑडियंस, आप सभी को भी। सो one of the audience members who is now watching, he's from Bangladesh. uh, he told me right now to ask a question. uh, so विमर्श दा, कैसे करें वो आप बताइए। Send me the question na. Just send me the question. I will read it to the guests. Send me Fair on enough, fair enough. any other. Okay, 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 yeah. Okay, Shastri, continue till the question comes. वो तो वैसे भी गवर्नमेंट तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट पे बहुत फ्रंट फुट बैटिंग तो कर रहा है, हम देख ही नहीं रहे हैं। वो एक चीज है। दूसरा चीज क्या है कि कुछ चीज है ना, you can only realize what has happened after the action has taken place, right? 71 में क्या हुआ वो, हाँ, अभी हम देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ जो हुआ सही हुआ, बट दैट्स ओनली हाइंडसाइड व्यू से हम देख रहे हैं, राइट? बिटवीन बिफोर 71 there was still a 1970, right? और एक्चुअली 71 दिसंबर में हुआ था, राइट? सो हम लोग तो एक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग अच्छा एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। एक्शन तो बहुत बाद में आता है। नहीं, तभी भी कुछ नहीं किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चुपचाप बैठ रहे थे, क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहे थे। यही है स्टाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वही मैं बोल रहा हूँ, राइट? ये इनका आई थिंक मेरा खाली, लेट मी पुट इट दिस वे, मेरा खाली दो कंसर्न है, राइट? एक कंसर्न इज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, विच मींस कि उन लोग ढंग से उन लोग लोगों को बता नहीं रहे कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहे हैं, राइट? क्यों घुस अभी इंटरवीन करना है तो उसके लिए भी एक नैरेटिव चाहिए, राइट? वो अ, वो उनको वो ढंग से नहीं करेंगे, उसका वो मुझे एक कंसर्न है। और दूसरा कंसर्न है कि एक्शन लेंगे और फिर कम्युनिकेशन लेट आएगा, राइट? सो खाली यही कंसर्न है, बट बाकी सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाइल ही है, सही है। क्वाइट डिप्लोमेसी करो, फिर जब एक्शन आता है फिर धबाधब खटाखट कर देते। 1971 में भी ऐसे ही हुआ था। बिटवीन आई थिंक February to December,
चुप, गवर्नमेंट तो चुप ही बैठ रहा था, गाली बहुत खा रहा था। फिर 71 में दिसंबर में आई थिंक एक दिन बाद फिर पेपर में बाहर आया कि ओ हम जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। एंड बिफोर दैट टू उन लोग मुक्ति बाहिनी को सब सपोर्ट तो कर रहे थे, बट द थिंग इज लाइक सिचुएशन अब आजकल थोड़ा अलग है, राइट? वो टाइम पे क्या था कि यू एटलीस्ट हैड अ मुजीब, यू हैड refugees, you could train them. अभी वो भी नहीं है. So whatever action you take, it has to be on your own. And uh, that उसके लिए क्या solution निकालने वाले वो हमें सिर्फ hindsight में ही मिलेगा. And here's the other thing, हम लोग जो भी intervention करेंगे, it'll be temporary. It'll only kick the can down for 20-30 years, right? Like ये इसका there's no like one shot solution for this. ये kick कर करके you have to break it down to a small considerable size, and then India needs to do what it needs to do. But ultimately क्या है कि I think 30 साल का सॉल्यूशन क्यों है? अगर कोई हिंदू देश बनाना है, बनाओ हिंदू देश। नहीं सीधी सी वो बात है। आई थिंक इस टाइम तो वो हो ही जाएगा, वो मुझे तो लग ही रहा है वो हो ही जाएगा वो, राइट? बट ultimately, I think I'm just going to simply say, put it this way, right? So from the river to the sea, Vanga Pradesh will be free. वही है एक solution. We have to internalize this region and then change it completely upside down. But Right. उसके लिए वो बहुत time लगेगा, बहुत effort लगेगा. And the unfortunate reality is we have to do it both in the east and the west. नहीं, एक साथ तो नहीं कर सकते ना, एक साथ तो दोनों को मोबिलाइज नहीं कर सकते। नहीं, I don't think so. The government can. See, the point is, बांग्लादेश से ज्यादा उलझन में पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो उसे रहने दो। नहीं मतलब पाकिस्तान के लिए आज कुछ नहीं अगर करना, पाकिस्तान आज के लिए अगर कुछ नहीं इंडिया करना चाहिए. बांग्लादेश का कुछ जंग लग जाए, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ये सब कुछ कर पाएगा। वो अगर कोई बांग्लादेश को वो सलाह भी दे रहा है कि भाई मैं भी आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं कर पाएगा वो। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो आई थिंक 2 डिवीजन भेज रहा है। एक डिवीजन वो गाजा में भेज रहा है, दूसरा डिवीजन आई थिंक यमन भेज रहा है। सो उसके लिए पाकिस्तान सिर्फ मतलब बस इसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है बांग्लादेश को। जो कर पाएगा वो चाइना है। चाइना इज द रियल थ्रेट। ठीक है, चाइना हो गया, यूएस भी हो गया कुछ हद तक। I don't think China can. नहीं, चाइना कैन इन द सेंस कि चाइना की यार उसका वो कांस्टेंट नहीं है ना, कि उसका डेमोक्रेसी का कांस्टेंट नहीं है। आज अगर यूएस हो जाए, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीजों को जाने नहीं देगा। नहीं, सो वही मैं यूएस बोल रहा हूँ ना, चाइना का क्या है कि दे आर अपॉर्चुनिस्टिक, कुछ भी होने दो, उन लोग वो अपॉर्चुनिटी निकाल के उन लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट मी पुट इट दिस वे, तू आज बांग्लादेश में तू यूनेस को हटा के तू से हसीना को वापस लेकर आया, तो चाइना हसीना के साथ भी थोड़ा डील मारने के लिए कोशिश करेगा. वो उसका वो अपॉर्चुनिज्म है. वो चाइना का तत्व है, राइट? वो तू एलिमिनेट नहीं कर सकता है. यू हैव टू लाइक अकाउंट फॉर इट, राइट? सो वो तो होने वाला है कुछ. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. You can't tell China you should not do this. You have to account for it, and then you have to basically like impose your imperial will. वो imperial will तो military action के साथ ही आ सकता है, unfortunately. Like, this is our and when you basically impose that military action, फिर China को दिखा सकता है we are boss करके. They can't do anything. Like at best they'll increase troops at the Himalayas. उसके लिए भी हमारे पास लोग हैं. So I mean it's just a matter of political timing. वो आएगा, टाइम आएगा वो. Okay, we have a question from somebody from another country.
So he's asking, given the situation in Bangladesh, India even thinking of mobilizing its forces around this country? अभी तक तो So it अभी will तक like तो a कोई अभी तो कोई मोबिलाइजेशन ऑफिशियली हो भी नहीं रहा है। मतलब जब आर्मी मोबिलाइज करता है वो दिखता है, वो खबरों में आता है, लोगों के नजरों में आता है, ठीक है। आम, मतलब अगर बांग्लादेश के साथ कुछ हो तो एक बड़ा बेस पानागढ़ है, तो पानागढ़ के आसपास मतलब हम लोग का जैसे उस साइड हम लोग रहते हैं, तो वहां से तो ऐसा कुछ कोई न्यूज नहीं आ रहा है कि कुछ बड़ा कुछ हो रहा है या फिर बड़ा प्लान चल रहा है। एटलीस्ट विजिबली नहीं दिख रहा है। अगर मोबिलाइजेशन होता है तो वो विजिबल होता है आम आदमी के पास, तो उस सेंस में तो कुछ। एक्चुअली थोड़ा मैं पुशबैक करता हूँ। आजकल आर्मी मोबिलाइज पब्लिकली मोबिलाइज नहीं करते हैं। उन लोग का फ्रंटलाइन पोजीशंस पे ऑलरेडी ट्रूप प्री पोजिशन करके रख लेते हैं। सो तुझे पहले 72 आवर्स के लिए तुझे मोबिलाइजेशन नहीं दिखेगा, राइट? सो क्या होएगा कि बेसिकली फर्स्ट, इफ मिलिट्री एक्शन इज इनिशिएटेड, राइट, आर्मी घुस जाएगा और फिर विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स मोबिलाइजेशन चालू होएगा। इट वोंट बी लाइक पहले मोबिलाइज करते फिर अटैक करेंगे, ऑलरेडी प्री पोजिशंड है। uh, दूसरा चीज क्या है कि आई थिंक दे आर सेटिंग देयर फोर्सेस इन ऑर्डर। आर्मी चीफ अगारतला गए थे। इंडियन आर्मी ने दो और कंटोनमेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ओपन किया है। दे ओपनड अप अनदर बेस राइट ऑपोजिट, वो कौन सा वो एयरफील्ड है, वो लाहेरी घाट। और फिर आई हैव सीन सम यूनिट्स एक्टिवेटेड अराउंड कोलकाता एरिया। सो कर तो रहे हैं एंड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। Okay, so there is one more question that is come. So in Bangladesh, there is a narrative that there is a kind of a constant firefight between the BGB and the BSF on the Indian side. So we are not there, so we can't ask like answer this अभी factually न्यूज because में आया था कि बीएसएफ के कोई जवानों को तो गोली मारा है। ये मुझे एक्स में दिखा था, बट अदर देन दैट हाँ झड़प तो नहीं हो रहा है जितना पता है। और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये इतना इजी बॉर्डर है नहीं। काफी चीजों से, घरों से गुजरता है, नदियों से गुजरता है, जंगल से गुजर, सो और आई थिंक पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेक्टेड भी नहीं है। सो उस हिसाब से फिर बीएसएफ और झड़प भी हो गया, फिर बात यह है कि ये इतना न्यूज में पहली बात तो नहीं आएगा। सेकेंड बात यह है कि आई थिंक बॉर्डर में अगर कोई दिक्कत होगा देन देन इट विल ओनली एस्केलेट, ठीक है। और वो तो फिर पता चल ही जाएगा हाउ द होल गवर्नमेंट एंड द बांग्लादेशी आर्मी इज बिहेविंग, या वो क्योंकि वो वो है। आई मीन बॉर्डर तो एक्टिव बॉर्डर है, हमेशा थोड़ा हाँ बहुत शूटिंग बीटिंग होते रहता है। बट बांग्लादेश में उन लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं तो फिर आई मीन ऐसा ये सब एम्पलीफिकेशन ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो इट जस्ट मीन्स दैट समथिंग्स हैपनिंग। yeah, Rishi, you want to say something? कुछ और बोलना है? Okay, so I guess it would be a question for all three of you to comment upon. Ki, uh, is this a trend within every democratic nations after 47 onwards कि पास के देश में अगर कोई religious persecution भी हो रहा हो, the framing for taking any sort of action has to be more around the lines of national identity, more than about religious identity. Because I have seen this in the case of 71 as well. Because 71 में भी Bangladeshis were being oppressed by the Pakistani regime,
Therefore, it was necessary for India to take action over there. ये एक narrative गढ़ा गया था तब. क्या समझा नहीं मैं, पहलगाम कैन के यू टाइम रिपीट? में भी I saw. हाँ, okay. So 1971 के टाइम में the narrative publicly, as, as far as Indian government is concerned, was कि Bangladeshis were being oppressed by the Pakistani regime. So Indian government had to take action. There was no mention of Hindu, as Bijeet says, of Hindu genocide and so on. Even in case of Pahalgam as well, we see that even though the newspapers were discussing about how Hindus were particularly targeted in that terrorist attack, but the framing which was taken by the government was around ki Indian nationals, Indian tourists were hurt by Pakistanis. Therefore, it's an attack on India and we must take action. So I've seen this thing around democratic nations की nationalistic narrative पे base होके ही actions ली जाती है, not on the basis of religious identity. Am I correct or not? Just wanted to यस know यस। from you. And why सो is हम it लोग ऑलरेडी so? जैसे डिस्कस किए थे, आई थिंक क्रिश्चियनिज्म वाला जो सीरीज था उसमें डिस्कस किए थे कि इसमें एक जो जॉन स्टुअर्ट मिल का बाप था, जो क्या नाम है, जेम्स मिल नाम था शायद उसका, तो या Yes, जेम्स मिल। उन्होंने, Jim Smith. हाँ, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम, जिसको हार्म प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट? हार्म प्रिंसिपल इज लाइक कि वही बेसिकली कि मैं उस हद तक हाथ को ले जा सकता हूँ जहाँ दूसरे बंदे का गाल तक ना आ जाए, ठीक है? कि इफ आई हैव सम बिलीफ एंड आई हैव सम फेथ, आई एम इंटाइटल्ड टू मतलब रिटेन इट एंड होल्ड इट, और इस बिलीफ पे स्टेट मुझे इंट्रूड नहीं कर सकता, मतलब बेस्ड ऑन दिस बिलीफ द स्टेट कैन नॉट इधर क्वेश्चन मी और जज मी और परसिक्यूट मी, ठीक है? और इससे फिर क्या हुआ, इससे बेसिकली ऑल दिस पीपल दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द क्रिश्चियनिज्म व्हिच इटसेल्फ इज अ सुपरस्टिशियस डेथ कल्ट, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम द स्टेट, सो कॉल्ड द सेकुलर स्टेट दैट पीपल वांटेड टू फॉर्म, ठीक है? क्योंकि वो 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, वहां से फिर वहाँ फ्रांस में तो लाइसेते आया, राइट? लाइसेते मतलब कि तुम पब्लिकली दिखा भी नहीं सकते तुम्हारे, यू कैन नॉट पब्लिकली इवन एग्जिबिट योर फेथ। वहां से फिर इन्होंने जो अपना जो एंग्लिकल जो पोजीशन था, वो लोग थोड़ा बोले कि नहीं, मतलब ठीक है, योर फेथ विल बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, स्टेट उसके लिए तुम्हारा कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो वहां से फिर क्या हुआ, वहां से एक इसका नतीजा ये निकला कि जो भी ऐसे फेथ थे जैसे क्रिश्चियनिज्म हो गया या फिर इस्लाम हो गया, ये स्टेट के क्रिटिसिज्म या क्रिटिक का जो, या फिर जो स्टेट का एपरेटस है, जुडिशियरी हो गया या फिर अपना लेजिस्लेशन हो गया, ये इनके रीच से बियॉन्ड चला गया, ये उससे बाहर चला गया। तो स्टेट, तो दैट इज हाउ, मतलब फिर जब वो इंडिया में भी आया, इसलिए जब ब्रिटिश रहते थे, जब 1857 के बाद ये क्वेश्चन करते भी नहीं थे, या तो इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिज्म हो गया, ये जो फेथ होते थे इनको क्वेश्चन करना ही ब्रिटिश ने बंद कर दिया, राइट? तो वही फिर नतीजा यही निकला कि ये सारी जो चीजें हैं, ये कुछ भी क्राइम कर दे, राइट? ये एक्सटेंड होता गया टू द एक्सटेंड कि अब ये जो फेथ्स हैं, ये अगर एकजुट होकर क्राइम भी करने चालू कर दें, दे आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन। एंड इन फैक्ट इसका डेमोक्रेसी में ये असर पड़ा, बिकॉज ये जो फेथ है, इसका जो इसका क्या बोलते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए भी केयर नहीं करना, डजेंट मैटर वेदर कि लॉजिक के स्टैंडर्ड्स पे ये मतलब खड़े उतरे, ये भी अगर पॉसिबल नहीं रहा, तब भी स्टेट क्वेश्चन नहीं पूछता था। सो देन people started to accumulate under the umbrella of these beliefs and faiths। तो इसका नतीजा ये निकला कि नो मैटर कि कोई डेमोक्रेसी या कुछ है, ये सारे एक जुट बनाने लगे। और इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे पेगन रहते हैं, वेल हिंदू रहते हैं, वहाँ पे हिंदू तो
फेथ के बेसिस पे इकट्ठा नहीं होता ना, या फिर सड़कों पे जैम नहीं करता, सड़कें ऑक्यूपाई नहीं करता, वहां पे ये लोग हावी होने लगे। ठीक है, सो यू आर राइट कि ये जो हार्म प्रिंसिपल था उसका नतीजा ये निकला ग्रेजुअली कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये सारे जो जो भी डॉक्ट्रिन है, विच आर अनसाइंटिफिक सुपरस्टिशियस जो आइडियोलॉजीज है, वो क्वेश्चन से परे हो गए। Okay, so Um, Rishi dropped. Go ahead, I think Hasi, go ahead. क्या है कि we have to government of India तो definitely faith तो use ही किया था. When they went to the UN, they basically said that they were targeted for their faith. So I think we should not dismiss that. But the thing is like एक बोलने का एक चीज रहता है और सुनने वालों के भी और एक चीज रहता है, राइट? जब तेरा इंस्टीट्यूशन से सुनने के लिए तैयार नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएन, तो क्या करेगा? आई मीन बट बोलना तो बोलना जरूरी है, वो अलग बात है, बट दिस इज जस्ट द वर्ल्ड वी लिव इन, अनफॉर्चुनेटली कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सी इवन with the case of Dipu Chandra Das, it took a lot of effort to get uh, any kind of recognition for that. I'm outside of India, right? So वो भी अब आ रहा है, एक हफ्ते का आउटरीच के बाद, एक हफ्ते का constant like badgering on every forms of communication for them, right? अभी आ रहा है थोड़ा बहुत condemnation आ रहा है. So this is the unfortunate reality we live in, right? In some sense, like we are also sort of the Jews of the world. Jews का issue अभी क्या है कि it's no, not a lot of countries are willing to listen to them. Okay, so let me answer this question. If you can see what happened in Kosovo, correct, in the erstwhile Yugoslavia, where the NATO went and bombed, I think Kosovo and the regions to actually, and it was termed as ethnic cleansing of Kosovo Muslims, okay, by the ethnic what they are called. I'm just forgetting that. Croats and other Serbs, Serbia. Correct. Serbia was Serbs, bombed. Serbia. Actually, yeah, Serbia was bombed by NATO, and the pretext was that the Kosovo Muslims were being ethnically cleansed. So no, in internationally, as per conventions, if a religion, ethnicity are being oppressed and they are being tortured upon, the international organizations can take action, and we have seen this happen in Kosovo. So, but there is a problem. The problem is that democracy inherently actually is gives advantage to Abrahamic faiths or faiths which congregate together. So, a 30% vote block is a very bigger vote block rather than a fragmented majority. So that's what we see in India with the Hindus as well, Hindus, the fragmentation of their votes. So now inherently democracy is not ideal for us because we like to differ. Like all four of us, we all talk to each other, but we differ on specific points. But when we talk about Abrahamics and congregational faith systems, they inherently don't have that idea of like disagreeing. You agree or disagree. That's it. So my question to actually two of you and even to Rishi as well is that politically we see that Hindus do not hold sway over political parties in terms of their policies, narrative, or the way they function from DMK to RJD to Congress to TMC, even to BJP. So, is this a failure of Hindu society to actually mobilize as a political force to actually get their rightful, let's say, demands, which is there? So, I'm asking a larger question that no political party is today is going to do anything just because we are demanding as Hindu, but the same thing they will do for Christians or other Abrahamic faiths. So is there something that we have to introspect as a Hindu society
to reflect upon that why we are powerless, why today who is this correct, that Congress lady, correct, so they were in that Gaza bag they were wearing, correct, in parliament. Priyanka Gandhi. Priyanka Gandhi was wearing Save Gaza, correct, and it got a lot of media coverage. Now, and that happened with many actually politicians. Every political party had a statement. Okay, this is wrong, but we don't see this happening. Even at 5th August, it didn't happen, and right now, it didn't happen. Is there something that Hindu society needs to reflect upon? Why they are unable to garner that kind of uh, political what we say political effectiveness to actually get that done? Shastri, Vijitda, and everybody. I'll go first, right? Hmm. I actually disagree. Hmm. Because the thing is like the biggest counterpoint for you is basically Ram Mandir. There was no greater example of pan-Indian political mobilization than that. I mean, I think we might be mistaking the fact that, oh, there's no pan-India reaction, or pan-India uh, Hindu solidarity or whatever, um, for like lack of Hinduness or Hindu political activity. Um, I think at the end of the day, you also have to realize is that, see, people have priorities, right? हर एक चीज पे तो outrage नहीं कर सकता है. And you have to look at things from a local perspective as well, right? Now, if I go to Tamil Nadu and I talk to a Tamil over there, sure, he'll give you the 2 minutes that um, Dipu Chandra Das for Dipu Chandra Das and say Om Shanti Sadgati, but he'll move on to his next issue, which is basically the Deepam at Madurai, right? That's his primary issue. So um, I think what's happening is that we've resolved a lot of pan India issues, but people's attention have gone towards more local issues, right? So local temple issues are becoming much more, a lot more attention is given to that. Um, Building local regional institutions, a lot more attention is now being given to that. Uh, and there's also a lot of political mobilization as well, right? So the finance minister of India came to Hampi and basically said Hampi is poorly maintained. I think that's also a form of basically like a result of political mobilization. And we've all been screaming about how bad our heritage structures have been maintained. And the finance minister is acknowledging that, right? I think that shows that there is some kind of like understanding that you have to do better than that. I think there might be an issue of priorities, that people might have diverging priorities, which is fine. But I think we should recognize that those diverging priorities are still under a broader umbrella, right? Uh, and we should also support other movements as well, rather than constantly demanding focus on one simple issue. We should recognize that certain games are played at certain levels, and certain other games are played at certain other levels, right? So um, I'd rather argue saying that where's the northern Indian support for the Deepam issue in Madurai? Right? I would like to see more of that. I'd like to see more support for the Warkari issues, or like more invitations for regional Hindutva institutions to establish institutions elsewhere, right? I mean, these are all other, they might not be, I would call them sexy, but they are important issues nonetheless. And I don't think we've lost political uh,
power or autonomy. It's more like it's sort of diluted to a point that okay, the regional and local issues are taking much more precedence over, say, pan-Hindu society. Okay, so Bijitda is not here. Bijitda, if you want to answer, or else let me. Rishi, do you have any comments on this? And then I will. I agree with what Munshiji said. So, frankly, I have always seen this as a excuse given by some of the parties to ignore Hindu messaging. Uh, like this has been a constant rhetoric from them that okay, you do not organize more like the other sections of society, therefore you are not worth listening to, and so on. I don't think that's the case. Uh, I mean, we do not come out on streets. Yeah, sure, that's the case. But I believe Hindus are much, like, at least right now, they are much vocal, right? On every issues from Deepam, on the issue of Deepam as well. I've seen in northern Indian channels as well, it is being discussed. It's not an ignored issue anymore. Uh, Earlier, it would have been a siloized issue only being discussed in southern channels alone, but now it has spread in pan India scale. So there are issues with Hindu Okay, societies, yeah, but that's in the level of society. But as far as political mobilization is concerned, I don't see a direct correlation to that. But maybe Vimash Dada, you can maybe pick out some points. Would like to hear yeah. Let it me from give you. you let me give an example. Correct. I know a person in Karnataka who lives in Bengaluru, and a community of Hindus. Okay, they went to a politician that solve my these are our problems. Please solve it. That politician asked me, "Do you vote for me?" He says, "No." Well, how long you are living in this city? He said, for 30 years. But 30 years, Hindus are so politically active. For 30 years, they did not vote in that place, and wherever they had their voter ID cards in another state, they even didn't go there to vote. So this is the political awakening, the political expediency, the political consciousness of Hindus in general. I'm talking about one community whom I spoken to. So that's where I coming from. DMK can go to Supreme Court, spend states money, go to Supreme Court to prevent the lighting of Deepam. Will any other party will take that stand for any Hindu causes? The answer is no. And we need to ask ourselves why it is no. Even BJP, the so called Hindu party. Go ahead. The fix is Maybe always Munshi can judicial. take that. Yeah, Yeah, Munshi, go ahead. I mean, um, the BJP has been burnt quite heavily, right? We have to remember a couple of things. The fix is always judicial. Um, and there's also um, the sort of like strategic philosophy of um, when your opponent is making mistakes, let them keep doing it. Hmm. And there's that perspective that I would also encourage people to take, right? Um, and that's the perspective Tamils in the have Tamils in Tamil Nadu have taken as well. It's like, oh, DMK is going to the Supreme Court. Bad idea. Let them do it though, right? And uh, turns out that the entire thing is backfiring on them. The entire thing is Yes, backfiring. So understand. so it's like there's Okay, that thing, okay, and and okay. and there's
Understood. Let me just actually give you a little bit of information, then you can continue. As a political party, correct? DMK is doing politics for last 30 years. Okay. So we cannot just, and see, their logic might be flawed. I have no problem with that. Their logic may be flawed. What I am saying is that they have taken a calculation that the 30% or whatever percentage numbers are there, forget about the numbers. For the last 30 years of their political experience, they see that I can make a wrong decision, I can take a wrong step, but still it will somehow benefit me rather than taking the Hindu side. So, is there something that why they are making a wrong decision? Correct. They do have some own calculations. Okay, I have these things I can play upon. So we cannot just say that okay, DMK is are idiots into the political stance that they are taking. No, see, I Don't want think to it answer not be this fair part to them. actually. Go ahead. Basically, वही it goes back to the same thing कि क्योंकि temples are not free. So you see, in temples used to be a medium through which the so-called upper class and lower class Hindus used to interact with each other. कि upper Okay, class we should Hindu ने not कुछ say बोला, we should not say upper and lower class. We'd say different punts can come together. different punts and class. I'm saying class. Hmm. कि डिफरेंट क्लास की रिच एंड पुअर हिंदू, राइट? Hmm. ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ पुअर हिंदू अपने सो कॉल्ड लोअर कास्ट में मिलता है, राइट? पुअर हिंदू ब्राह्मण में कम्युनिटी में काफी सारे पुअर हिंदू मिलते हैं, राइट? तो ये जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ हिंदूज, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, एंड देन द स्टेट इज इंटरफीनिंग कि चलो तुमको ये देंगे, तुमको थोड़ा दूसरा वाला कुछ स्कीम दे देंगे करके, ये जो दे हैव स्टार्टेड टू इंटरवीन, राइट? ये जो सोशल डायनामिक है हिंदुओं का, ये बंद हो गया है. नाउ टू ओपन इट अप, वी हैव टू फ्री द टेम्पल. और ये सबसे ज्यादा सरकार को समझ में आता है कि जिस दिन हिंदू टेम्पल ओपन हो गया, वो सिर्फ डीएमके के लिए खतरा नहीं है, इक्वली वो बीजेपी के लिए भी खतरा है. क्योंकि अभी जो है वो पूरा जो नैरेटिव डिक्टेट हो रहा है वो टॉप डाउन हो रहा है कि मोदी जी आके कुछ बोल दिए और पूरा हिंदू समाज हो ऐसे हो गया, राइट? कि भाई, है ना, क्या मतलब, क्या मजेदार बात कर दिया. लेकिन जब टेम्पल चालू हो जाएगा तो रिसोर्सेस हो जाए या फिर वेल्थ हो जाए, या फिर ये जो सोसाइटल डायनामिक्स हो जाए, ये सारे टेम्पल से डिक्टेट होगा. तो फिर एक एक नेता का जो दबदबा है वो कम हो जाएगा, नो मैटर कोई भी पार्टी से हो. तो आई थिंक कि इसके लिए हमें टेम्पल फ्री मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मुझे हाईली लगता है कि जब टेम्पल के थ्रू जब अलग अलग हिंदू कम्युनिटी आपस में बात करने लगेगी, दैट विल इवेंचुअली लीड टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ हिंदू लाइफ, हिंदू पॉलिटी, हिंदू सोसाइटी. और ये फिर घर वापसी, ये सब मूवमेंट का भी रास्ता खोल देगा. अभी घर वापसी किस लिए नहीं हो पाता है कि आप अगर कोई, मान लो कोई मुसलमान समझ भी गया कि यार ठीक है, इस्लाम में ये खराबी है, तुम, और मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूं तो मुझे हिंदू बन जाना चाहिए, इन द सेंस कि मुझे इस्लाम छोड़ना चाहिए. अब घर वापसी के लिए आप मतलब इतना मुश्किल होता है. एक तो कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो फिर भी 3 महीने लग जाता है. उल्टा आप देखो, कोई अगर मुसलमान बनना चाहता है वो रात तक मुसलमान बन के घर आ जाएगा. खतने के लिए शायद 1-2 दिन लगेगा, बट वो रात तक उसको सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. अगर सुबह मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे मुसलमान बनना है, मैं रात तक मुसलमान बन जाऊंगा. तो मतलब ये एक पैराडॉक्स है इंडिया में, जिसमें हम लोग जी रहे हैं. और इसके लिए तरीका मुझे जो जितना दिख रहा है वो तरीका यही है कि थोड़ा टेम्पल को फ्री करो, थोड़ा सिलेबस चेंज करो, हिंदू जो जनविध्वंस है उसको बार बार पढ़ाओ, लोगों के दिमाग में घुसाओ और उससे क्वेश्चन डालो. आज आपने देखे होंगे कि एक, आई थिंक, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक प्रॉफ ने क्वेश्चन डाल दिया कि राइट अबाउट द मुस्लिम परसिक्यूशन इन इंडिया. जस्ट इमेजिन, हम लोग 10 साल से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि बाबर ने इतने मुस्लिम मारे, अकबर ने इतने मारे, हम लोग बोलते जा रहे हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया. आज जामिया मिलिया इस्लामी में क्वेश्चन आ गया.
अब उसको उसके लिए बर्खास्त किया गया ऑब्वियसली, बट वो कोर्ट जाएगा तो वो जीत जाएगा ना, वो आसानी से जीत जाएगा। मतलब एक तरह से दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसको यूज करके फिर हिंदू जो जन विध्वंस है, हिंदू जो परसिक्यूशन है, उसको दिखाना नहीं तो ऑब्वियसली ये झूठा आरोप फैलेगा कि इस सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम परसिक्यूट हो रहे हैं। तुम जब तक ये डायरेक्टली बोलोगे नहीं, जब तक स्टेट अपैरेटस इसको 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 मतलब वोकली चीजों को स्प्रेड करने के लिए आएगा नहीं, तब तो मुस्लिम टेक ओवर करेगा। तुम्हारा एकेडमिक सिस्टम तो जैसे बोला जाता है कि हमने अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो इस्लाम को दे दिया, अपना एजुकेशन तो मिशनरी को दे दिया, और अपना जो पॉलिटिक्स है वो कम्युनिस्ट को दे दिया। तो ये सारे चीजों को जब तक कैप्चर न करोगे, और वही कम्युनिस्ट आजकल टेम्पल चला रहा है, या फिर कोई इस्लामिस्ट मिशनरी टेम्पल चला रहा है, तो ये तो हाल है। ये जब तक सुधरेगा नहीं तब तक पॉलिटिक्स में भी स्टेबलाइजेशन आएगा नहीं। आप देखोगे 1857 के बाद इन्होंने जो किया, ब्रिटिशों ने जो किया, उनमें एक कदम था कि ये ठीक है, उस कास्ट और ये सब में तोड़ो हिंदुओं को, और फिर टेम्पल्स को टेक ओवर करो। बिकॉज ये जो मैसेज पहुंचे थे कि इन्होंने कारतूस में वो सुअर और गाय की चर्बी लगाया है, वो मंदिरों के थ्रू पहुंचा था। तो ये जब तक हम लोग टेम्पल को मुक्त नहीं कराते, तब तक हिंदू पॉलिटी में भी हमारा दबदबा, हिंदुओं का दबदबा तो आएगा नहीं, मुझे यही लगता है। ये हम्म। मेरे हिसाब से ये थोड़ा एस्पिरेशनल है। आई मीन स्पेशली सदर्न पॉलिटिक्स को मैं आंखों से मैं देखा हूँ मैं, सो डायनामिक्स थोड़ा अलग है। टेम्पल्स के अलावा वहाँ पर बाबा लोग का बहुत ताकत भी होता था, राइट। बट वो भी एक ट्रेंड है, राइट। सो जैसे पंजाब में अखाड़ा का एक पॉलिटिकल पावर रहता है, वैसे टेम्पल्स को आ जाएगा, बट it won't change the political dynamics of the state that much. मैं उतना एस्पिरेशनल नहीं हूँ कि टेम्पल फ्रीडम से सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा और फिर पॉलिटिकल एक्टिविज्म सब होएगा। आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, राइट। आई थिंक क्या है कि इंस्टीट्यूशन का एक पावर रहता है, and it grows and wanes, right? So उसका एक growth रहता है और उसका एक diminishment भी रहता है, and then other political forces come. The thing is, you have to, if you want to keep the Hindu society united and engaged, you have to solve problems. You have to bring solutions to the table, right? Uh, you can't see. You have to realize one thing कि आज का हिंदुत्व is on the backs of welfare. वो एक गैस सिलेंडर दे रहा है, पानी दे रहा है, टॉयलेट बनवा रहा है, रास्ता बनवा रहा है, इससे तो हिंदुत्व आ रहा है। नहीं, उससे कैसे आ रहा है? आई मीन कैसे उसके वो बेसिक को सॉल्व करने के नहीं, बाद हिंदू ही होने वो। के, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हिंदू होने के लिए तो गैस नहीं मिल रहा है ना। हम्म। हिंदू होने के लिए थोड़ी। आप अगर पीएम युवा योजना देखोगे, युवा रोजगार योजना, उसका 70% मुस्लिमों को मिला है। पीएम आवास योजना का 40% मुस्लिमों को मिला है। तो बट उसके वो उस मतलब दिस इज जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि यार ये तो इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनको मिल रहा है, इसके बेसिस पे तो हिंदुत्व नहीं आ रहा है ना। ममता गैस जी सिलेंडर गैस सिलेंडर तो ममता अर्बन। का जो लक्ष्मी श्री प्रकल्प चल रहा है, उसके लिए हम्म। लड़कियों का वोट ममता को जा रहा है। हाँ। तो ये हिंदुत्व के लिए हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। ममता को हिंदुत्व के लिए वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं मुझे बोल रहा हूँ कि वो एक हिंदुत्व फाउंड का जो मूवमेंट वो। है उसका वेलफेयर से लेना देना अभी तक इंडिया में नहीं है। जब तुम बोलना चाहोगे कि ठीक है, इस इंडिया में हिंदू जेनोसाइड हुआ है, द स्टेट विल एक्नॉलेज हिंदू जेनोसाइड, एंड इट विल बेसिकली हिंदुओं से माफी मांगेगा इसके लिए कि ठीक है द स्टेट हैज, क्योंकि दिस इज अ कंटिन्यूड स्टेट। सुल्तानेट से जब जो चला आ रहा है, वहां से जो शरिया चालू हुआ था, ब्रिटिश ने ये लिख के गया है कि हम लोग शरिया को फॉलो करके अपना लॉ बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में शरिया चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश स्टेट है दैट कंटिन्यू टू दिस सेकुलर इंडियन स्टेट, सो विच मीन की इंडियन स्टेट हैज perpetrated Hindu genocide in this subcontinent, and Hindu state will ask for whatever
forgiveness and whatever, amnesty, I don't know, before the Hindu की माफी मांगेंगे, ask for apology, and then based on that, after acknowledging the Hindu genocide, it will start implementing schemes to reverse the Hindu genocide, such as कि ठीक है हिंदुओं पे जुल्म हुआ है, तो जो हिंदू युवा होगा वो अगर कोई इंडस्ट्री, छोटा मोटा इंडस्ट्री, कॉटेज या फिर जो भी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, जिसमें हिंदू कला हो, जो खत्म हो गया था, वो उसको अगर अगर लाइफ मिल रहा है नए से, तो उनको स्कीम दिया जाएगा। या फिर कोई हिंदू होने के लिए कोई अगर बेकार युवा बैठा है, उसको 1,000 रुपए दिया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए स्कीम दिया जाएगा, ठीक है, actually, क्योंकि actually, तो ये जब स्कीम देना चालू करोगे तब मैं मानूंगा कि ठीक है, हिंदुत्व के बेसिस पे तुम वेलफेयर स्कीम दे रहे हो। actually, इसमें you तुम्हारे proved 40-50% तो मुसलमान के पास वेलफेयर स्कीम जा रहा है, जिससे तुम्हें वोट भी नहीं मिल रहा है। सो यू ac- कैन नॉट से दैट हिंदुत्व इज कमिंग बिकॉज ऑफ द वेलफेयर स्कीम। मतलब actually you सी दिस prove इज अ prove my point. जस्टिफिकेशन दैट आर बीइंग इन्वेंटेड टू जस्टिफाई बीजेपी। No, no, it's not. आप हिंदुत्व पे आप इलेक्शन जिता के दिखाओ। विदाउट वेलफेयर बीजेपी बोल आपको रहा है ना कि वो हिंदुत्व पे नहीं इलेक्शन जीत रहा है, नहीं दे आर मैं क्लेमिंग। आपको मैं बताता हूँ ना। आप चाहो लाडली बहना स्कीम के बिना आप जिता के दिखाओ। हिंदुत्व मूवमेंट नहीं, ओनली एग्जिस्ट लाडली बहना बिकॉज स्कीम के सी नाउ सी यू आर यू सेइंग कि नीड। लाडली बहना स्कीम के वजह से बीजेपी अगर आ रहा है, अगर ये है, हाँ तो वो तो ममता के कन्याश्री प्रकल्प से लिया हुआ है ना। सो तो वो हिंदुत्व का स्कीम कैसे हो गया? दैट इज अ सेकुलर स्कीम। नो अगर नो कांग्रेस आना हिंदुत्व चाहेगा, का पॉलिटिकल कांग्रेस के पावर। अखिलेश अखिलेश ने अभी बोला है कि अगर लड़कियां मुझे वोट दें, या फिर जो भी मैं अगर आया तो लड़कियों को मैं वट एवर 40 या कुछ 1,000 रुपए दूंगा। ये अखिलेश ने अनाउंस किया है ना। अब उसके लिए अगर कोई अखिलेश को ला रहा है, जैसे ममता आ गई है, तो ममता क्या बंगाल में हिंदुत्व फैला रही है क्या? नहीं है ना। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना। अभी पावर में सत्ता में कौन है अभी? बीजेपी है ना। सेंटर में बीजेपी है। स्टेट में भी बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी है। बीजेपी है। क्या विदाउट लाडली बहना स्कीम वुड दे बी एबल टू कम टू पावर? इज इट ए हिंदू स्कीम? It doesn't matter. They are in power. It should, because your statement was these sort of schemes are Without actually हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ से हिंदुत्व को हाँ बढ़ावा दे रहे हैं? फिर नहीं तो क्या? नहीं तो यू बी अंडर ममता स्टेट राइट। अभी तेरा महाकाल में कुछ तो हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ रेनोवेशन ओवर देयर। वो हिंदुत्व गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है राइट। एंड द वे दे केम टू पावर फॉर दैट इज बेसिकली थ्रू वेलफेयर नहीं, स्कीम। ममता ने भी सो बनाया, विदाउट ममता ने वेलफेयर मंदिर स्कीम्स बनाया। ममता ने दीघा में जगन्नाथ धाम बनाई है। ममता भी सिलीगुड़ी में एक कुछ राम मंदिर या कोई महाकाल का मंदिर बनाने वाली है। ममता तो उस हिसाब से ममता इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। उसने बड़मा नैहाटी में एक बड़मा के मंदिर में काफी इन्वेस्ट की है उन्होंने, मतलब पैसा ऐसा जो भी है ये सब that's किया है। because she knows right. I mean she has to keep बीजेपी इन पे। उसके लिए करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा राइट। यही तो कंपटीशन है। नो, बट इसमें हिंदुत्व बट का क्या मतलब? इस स्कीम से हिंदुत्व का बढ़ावा। सो अगर कन्याश्री अगर ममता चला रही है, उससे हिंदुओं का मतलब हिंदुत्व का वो क्या बढ़ावा हो रहा मैं है? आपसे ठीक सिर्फ है, एक ही सम चीज में बता। सिक्सटी एक ही परसेंट चीज नहीं एक ही सिक्सटी चीज में परसेंट बता। ऑफ द स्कीम्स 60% ऑफ द पीपल हु आर अवेलिंग द स्कीम आर हिंदूज। इससे हिंदुत्व का क्या बढ़ावा हो रहा है? हाँ तो फिर वेलफेयर स्कीम के बिना आप जिता के दिखाओ। वही मैं बोल रहा हूँ ना। विदाउट वेलफेयर फिर वो सी द पॉलिटिकल है ना, फाउंडेशन हिंदुत्व ऑफ का क्या फायदा हो रहा है? नहीं वो द पॉलिटिक्स कर फाउंड रहे हैं ना उसके नो बेसिस पे। सो फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिटिक्स के अगर बिना आप कोई कैसे सत्ता में कैसे आ सकते हो? सत्ता सी में आने के बाद you're बीजेपी being कहाँ है? very एक मिनट एक मिनट। सो ये स्कीम लगा के यू आर सेइंग बीजेपी हैज कम टू पावर। तो yeah यू आर सेइंग कि ठीक है, ये स्कीम चला के दे आर सेइंग कि ये स्कीम की वजह से उन्हें वोट मिल रहा है, देन बीजेपी इज कमिंग टू पावर। नाउ सो yeah व्हिच मीन की द नैरेटिव दैट यू आर सेइंग दीज आर एक्चुअली डेवलपमेंट नैरेटिव ना। तो लेकिन आई बीजेपी मीन तो जय श्री राम बोल के वोट मांगता है ना, वो बोल के भी मांगता है। वेलफेयर भी कि क्या देता बोलते है। हैं कि एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। हाँ नाउ सो ये जो फोबिया क्रिएट करके ये वोट मांग रहा है ना, सो फोबिया क्रिएट करके वोट मांग के आ गया, और कुछ कुछ डेवलपमेंट स्कीम है उसको प्रॉमिस करके ये वापस ये यहाँ पे आ गया। फिर ये कौन सा हिंदुत्व फैला रहा है? हिंदुत्व तो हम लोग फैला रहे हैं ना। ना मैं बीजेपी करता हूँ, ना मैं ना नवविमर्श बीजेपी करता है। इनफैक्ट जो हर एक चीजों पे जो मास्टर स्ट्रोक ढूंढना है कि ये मोदी ने ये कर दिया, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। या फिर जो क्या कोई कोई शेर जब
किसी को अटैक करता है उससे पहले 2 कदम पीछे लेता है, नहीं, मैं इसीलिए सीधा मोदी जी आपके 2 कदम आपसे पीछे एक ही चले चीज गए। मैं मांगता हूँ, आप वेलफेयर स्कीम के बिना आप सत्ता पे आके दिखाएं। नहीं, वेलफेयर स्कीम इज वेलफेयर, रियलिटी सी, ऑफ नहीं, इंडियन इट पॉलिटिक्स डजंट, ना। नो, वेल इट डजंट, यू आर सेइंग कि आप सी, वेलफेयर स्कीम इज योर, बेसिकली आई एम हिंदुत्व जस्ट को ट्राइंग टू, बढ़ावा दे रहा है। I'm just trying to Okay, put, okay. I'm just trying to put Hold on, your hold on. perspective Let me on. summarize. Okay, Shastri, I got your point. Let me just summarize it so that the debate becomes coherent. See, what Shastri is saying is that the first objective, uh, like the only way you can actually further a cause of Hindutva is through political power. If example, take an example, I'll give an example. Let's say there was no BJP in power, would there be a Ram temple established? नो, Yes or no? No. Oh, नो। wait. Let me give you that. So, what Shasti's argument is that if you want to promote Hindutva or promote Hindu causes, first the party who says I am working for it is a, let's take other example. Whether they are working for it is, let's take other. They are saying कि we want to further the cause of Hindutva and Hindu causes. In that case, the party first has to come into power. Only then they will be able to deliver whatever they are saying कि we want to deliver, like 370, Agreed, Ram Mandir, and agreed, uh, other things. Now what Shastri is saying is that today, unfortunately, or fortunately, whatever may be the case, fortunately, unfortunately, maybe the bad, not the right words, but today the majority of Hindus vote based on development rather than core Hindutva causes. So, okay, for Hindutva to come into power, welfare is a very important component of it. So, mhm, today BJP is in power, let's say in center for let's say 15 years. Let's say it add one to two more terms, like 25 years. Okay. So BJP will not be able to come into power again in 2029 if it doesn't do politics of development, houses, water, electricity, राइट, bank accounts. राइट। So that यहाँ is पे his पॉइंट, argument. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई एग्री विद दिस पॉइंट कि ठीक है, ये डेवलपमेंट के बात Hmm, करके ये पावर में आते हैं। hmm, दूसरा hmm, पॉइंट है hmm, कि राम मंदिर नहीं बन पाता hmm, मोदी के अलावा, ठीक है, लेट्स, hmm, मैं मान लेता हूँ। hmm, hmm, मैं सिंपल एक पॉइंट बोल रहा हूँ, आगे अगर 10-20 hmm. साल में आगे हिंदुत्व पॉलिटिक्स को अगर आगे ले जाना है, तो उस पे कोई सेक्युलर पावर का तो राज नहीं होना चाहिए ना, उस पे राज होना चाहिए हिंदुओं का। अब हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स है उसको ये जो सेक्युलर जो टेंडेंसीज है, ठीक है, इससे अलग कर देगा कि ठीक है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स इज व्हाट एवर इट इज, हाउ बिग इट इज, इट डज नॉट मैटर। इसको अगर ये जो चुंगल चल रहा है इससे अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा वो पॉइंट Okay. है, मैं मान लिया। Yeah. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, नाउ हिंदुत्व पॉलिटिक्स इज हॉस्टेज टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रहा है। Okay. I Okay. So strongly disagree with that. Actually, it's not okay. hostage to it. It's more Shastri, like hold a. on. Hmm. So now let me give one more point and then you can actually सो add it to वेलफेयर it. का जो पॉइंट है, लास्ट सेकंड पॉइंट ये Hmm, था कि वेलफेयर का जो पॉइंट था, वेलफेयर अगर है तो एक टेम्पल भी तो वेलफेयर कर सकता है ना। सो तुम एक डिस्ट्रिक्ट हो जाए, एक डिस्ट्रिक्ट में काफी, एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो इंडिया का, कोई तो एक बड़ा टेम्पल होगा ना, No, उसके they अराउंड are तुम building a temple. वेलफेयर They स्कीम are बनाओ ना। building a they are building a temple in Sitamarhi that is done by JDU government. Okay, hold on. राइट, Actually, I want to put one more point, very important point. For last 60 years, correct? The voting pattern, which is we have seen, correct? So, from my understanding, the voting pattern is always on roti, kapda, and makan. Okay, that is the voting pattern which is there कि मुझे रोटी कपड़ा और मकान और jobs दो, then we will vote for you, correct? So this voting pattern, so 2014 when BJP came into power, correct? So the pattern to actually move away from core Hindu causes as primary voting issues is still not here as per the political parties, or else because political parties want votes. So, as per the calculation, the analysis of the political parties who are actually fighting elections and winning elections, as per their assessment, still there is no critical mass of Hindu votes who vote on primarily basis of Hindutva, so that they have to do welfare politics plus mix of Hindutva to actually come into power.
So once that voting pattern changes, you will see that today JDU plus BJP government in Bihar is building a Mata Sita complex temple, correct? So now that you are seeing a correct, the change in terms of the politics is changing, but that change will not happen in 15 years. That pattern will change over maybe 30-40 years, when and then you नहीं, will see that यहाँ पे जो पॉइंट है, राइट, यू आर सेइंग कि हिंदुत्व वाला वो थ्रेशोल्ड नहीं आया है, यू आर क्लेमिंग yes. कि यार वो थ्रेशोल्ड तो नहीं No, no, आया I am एज not एज claiming. That is my assessment. That my assessment means नाउ, what I think इफ is दैट that इज political ट्रू, parties do not think. राइट, ना कोई लिख के देगा, सी Hmm, इंडिया hmm. में हिंदुत्व मतलब बिल्कुल ही मतलब बीइंग वोकल कि मैं हिंदुत्व वोटर हूँ, दिस इज अ मैटर ऑफ शेम टिल नाउ, ये मैं मानता हूँ कि चड्डी बोल देगा, पता नहीं क्या क्या बोल देगा, चड्डी और क्या क्या है, भक्त बोल देगा, ठीक है, भक्त वर्ड को तो इन्होंने कितना डेरोगेटरी बना दिया है, बट व्हाट आर द इंडिकेटर्स जहां से पता चल सकता है कि यार ये तो थोड़ा थोड़ा मतलब इंडिया इज गोइंग बियॉन्ड दैट सॉर्ट ऑफ व्हाट एवर एंटी हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जैसे बिहार में अभी हुआ, बिहार में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई जात पात से ऊपर जाके वोट कर सकता है, ठीक है, और जात पात का जो इक्वेशन है उसको उसको डिसमेंटल करके बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार ने कर दिया ये, यूपी में इसी तरह से जिस जो वोटिंग पैटर्न दिखता है कि ठीक है यादवों का या फिर यादवों के साथ मुसलमानों का जो पूरा इक्वेशन गठजोड़ था, मुसलमानों का 14, 15, 20% उनका वोट है, यादवों का भी 12% करीब है, या वाट एवर 6, 7, 12 जितना भी है, 32% तो वहां पे कोर वोट बैंक मिल गया, ठीक है, इससे उभर के यूपी में रिजल्ट दिखाया, ठीक है, हरियाणा में जो रिजल्ट दिखा है फॉर एग्जांपल कि इतना प्रोटेस्ट हुआ है कि मतलब व्हाट एवर फार्म वार्म ये सब फार्मर्स प्रोटेस्ट ये सब हुआ, उसके बावजूद भी वहां पे जो पैटर्न दिख रहा है ये दर्शाता है कि यार मतलब जैसे अभी केरल में दिख गया, तिरुवनंतपुरम में मेयर बन रहा है बीजेपी का, सो दे आर मतलब हिंदुत्व पॉलिटिक्स ऊपर दिख रहा है ना कि इसका रिजल्ट दिख रहा है कि ये एक्चुअली दीज आर ऑन ग्राउंड मतलब रिजल्ट दैट इज एक्चुअली इलस्ट्रेटिंग द फैक्ट कि नहीं हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक थ्रेशोल्ड बना है, थ्रेशोल्ड आप किस तरह से डिसाइड करोगे, थ्रेशोल्ड इज समथिंग जो एक्चुअली एक पॉलिटिक मतलब निर्णायक एक चीज बनाता है विच डिसाइड द फेट ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिटिक्स ऑफ अ रीजन, राइट, अगर अगर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी आ रहा है, इट हैज क्रॉस द थ्रेशोल्ड, अदरवाइज वो आ ही नहीं Okay, सकता है। okay. Shastri will respond. Yeah, so let me put it this way, right? So Ram Mandir or maybe say Bangladesh, ये दोनों समस्या छोड़ के is there any global Hindu issues that you can rally pan India crowd for? And the answer for that is going to be pretty much a no, right? But what you need to recognize is like where Hindutva politics has, let's say, crossed that threshold, and it'll all be mostly local, right? So uh, there's no, let's say, global Hindu issue whereby you can have a like pan-India Hindu support for anything or something like that. Most of it is all local issues. Oh, मेरा शहर का मंदिर ठीक नहीं है, मेरा रास्ता ठीक नहीं है, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ और यात्रा का रास्ता ठीक नहीं है. And that's what most state leaders and local leaders are trying to fix. Right? So, uh, and I think we definitely need to recognize these things. Like Hindutva might not seem global, but it is definitely it's showing its visibility in local issues. And the second thing is, I think I I want to bring back bring it back to the Deepam issue, right? Now, why is Deepam becoming an issue right now? Why wasn't it an issue 20, 30, 40 years ago? One is I think there's a local alternative, right? So there's BJP is there. It's there despite losses, which to the local Tamil people is like a big source of confidence, right? ये भाग रहा नहीं है, okay मैं defeat हो गया वो करके.
Very clear, right on. The second thing is, I think this is the first time a Dravidian party is um, fundamentally, actually, this is the first time a Dravidian party is interfering in what would be considered as an individual's right to bhakti. Right? The Dravidian parties have done a lot of nonsense. मैं बता सकता हूँ, बट ये पहली बार है जहां पर है ना एक एक भक्त का, इंडिविजुअल भक्त का अ, आस्था पे हाथ लगा रहा हो, राइट? एंड कभी कभी यू नीड moments like that for political mobilization, and we need to recognize these things, right? I mean, you can't expect uh, people to hold on to uh, religious loyalty all the time. People are very complex people. उनके पास हमेशा एक competing interest रहता है, right? Sometimes for me, temples are important, but if you ask me on a day-to-day basis, I would probably say, tell the BJP fix my road first. And you need to recognize these things, like and fortunately or unfortunately, uh, you will have components of development, you will have components of welfare as part of your uh, what you would call as electoral politics. किधर भी जाओ दुनिया में, you will always have these two components. You simply cannot ignore that. Uh, Once these two things have been resolved, right? You have to resolve these two things, right? Then you can basically get people to think about, oh, what about civilization? What about culture? What about religion? What about our religious institutions? So that Maslow's hierarchy of needs has all should always be satisfied. You can't expect 100% pure Hindutva politics. It नहीं actually it नहीं will. नहीं, मैस्लोस जो हायरार्की है वो तो इस्लामिक कंट्री में मैटर नहीं करता ना, बांग्लादेश में थोड़ा ही मैटर कर रहा है, पाकिस्तान में थोड़ा ही मैटर कर रहा है, अफगानिस्तान में मैटर किया था क्या? But it जब matters in India. That's what yeah, it that's what I'm matters. saying. So it At is the end not of the day, universally valid thing, na. But in India, no, there are other communities who are living inside India who for whom it doesn't matter कि रोड अच्छे से बना है कि नहीं. पहले रोड जब अच्छा नहीं बना था तब उन्हें पाकिस्तान बांग्लादेश चाहिए था, they got it. ठीक है, अभी भारत का विखंडन करना है. So road don't matter ना, road don't always matter. they do Maslow's matter. hierarchy of need, it does not work for many communities living within India, जिनको पहले इनको फेथ प्रोपोगेट करना है और इंडिया का विखंडन करना है, बाद में रोड वोट देखा जाएगा. सो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी आर लिविंग एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज पावर्स, we are coexisting and simultaneously we are at perpetual I, whatever civil war or civil peace with these people no, I think you're जिनको ये सब मैटर mistaking. ही नहीं करता. No, I think अगर you're अगर mistaking what's if happening no there. no if I am fighting against a chunk of communities जिनका सिर्फ यही लक्ष्य है कि मुझे मार देना है, जब मौका मिलेगा, जब कोई भी टाइम केयस आएगा, अगर अच्छा केयस कहीं पे आ गया, अगर मौका मिल गया कि वट एवर फॉर सम रीजन इंडिया में केयस आ गया, कि वो पूरा एडवांटेज उठाएगा केयस का और फिर वो अपना सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करेगा. I think you're व्हेन यू आर mistaking. फाइटिंग अगेंस्ट सच पावर, यस डेवलपमेंट इज नीडेड, बट हम लोग चर्चा इस चैनल पे इसलिए कर रहे हैं ना, टू प्रोपोगेट the awareness about that thing. This is So this is road a is very needed, bad but road argument तो to चल ही make, रहा है, actually, उसके to be पैरेलल honest. हमें ये चलाना होगा कि भाई ऐसे जैसे बांग्लादेश में चल रहा है. ये नहीं, जो इस यहाँ पे द प्लाइट ऑफ बंगाली हिंदूज, ये जब चर्चा कर रहे हैं, इसमें तो रोड सड़क ये सब नहीं आ रहा है ना. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थीसिस दैट वी आर डिस्कसिंग, but we are not Bangladesh. That's the fundamental thing that I'm trying to say. We are a but it proper is the कुछ same भी power करो. that is living in Bangladesh and driving the politics in Bangladesh, and that same power is driving the politics in much of India. How I can mean, you be blind to that? just 30 minutes ago, you were complaining about the fact that BJP is saying that, oh, Bangladesh politics is running in West Bengal, and now you're saying that they are running the politics in West Bengal, right? I mean, one, you have I to don't pick get this a. point.
I mean, just moments ago, if we go back 30 minutes ago, you were complaining about the fact that BJP is basically trying to portray West Bengal as Bangladesh, and now you're saying that they are driving the politics in West Bengal. But the point I'm trying to make is that you simply Yes, it cannot is the ignore same these power. things. No. I did not mean that. No. What I said कि जब आप किसी को कंगलू अगर कोई हिंदी बेल्ट से बोल रहा है अरे ये कंगलू ने क्या कर दिया ये बंगाली ने क्या कर दिया सी दीज सॉर्ट ऑफ कमेंट्स आर कमिंग ना कि बंगाल में क्या हो रहा है सो अगर हिंदी बेल्ट से कोई बोल रहा है कि कांगलू सो वो पोर्ट्रे कर रहा है ना टीएमसी वाले अपने एक्स में दिखा रहा है देखो बंगालियों को कांगलू बोला जा रहा है सो आई एम दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो टेंडेंसीज है कि बांग्लादेश बंगाल का एक तरीके से देखा नहीं गया अमित मालवीय ने ट्वीट किया है ना आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू दैट कि बांग्लादेश और बंगाल का पॉलिटिक्स को एक नजरिए से देखा जा रहा है और बंगाली कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है बंगाली कम्युनिटी पे एड होमिनम फेंका जा रहा है मैं इसका विरोध करता हूं अगर मतलब अगर मैं बंगाली होकर मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है मैं बंगाली होकर अगर कांगलू बोल रहा हूँ उन्हें तो दूसरे बंगाली को समझ में आ गया कि कौन कांगलू है और कौन वेस्ट बंगाल का बंगाली के बारे में बात कर रहा है लेकिन कोई हिंदी बेल्ट का कोई पंजाबी आके कांगलू वांगलू ये सब चिल्ला रहा है कोलकाता में कांगलू है ये तो लोगों को वो पोर्ट्रे कर सकते हो ना कि see this is what these people are saying about the Bengali people and it is against the Bengali अस्मिता तो इसको प्ले किया जा रहा है मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था Okay, Anand, welcome. Hello. Sorry, I'm a little late. I was doing other things. हेलो See, I have first. Let's break down the thing. We need to break down to parts. Okay. First, what are the goals of Hindutva? राइट Okay, give me a list of the goals of the current idea of what Hindutva people, I mean, the people who are running the Hindutva agenda. What are they looking to achieve with that Hindutva? First, you need to decide that first and see how it is differential to what we are talking about. So for me, it is simple. As I've said multiple times, at least to Bhupenda, that okay, basically the goal of Hindutva is decolonization of Indian politics and Indian society and Indian civilization. Now, for me, decolonization, de-Abramization is My question is decolonization. different. The moment, My no, question is let me what we complete my want. point. What is No, the but goal? I'm I think telling you're you the goal. misunderstanding my question. I'm not saying what we want is Hindutva. I'm saying what are the people who have created the philosophy of Hindutva, at least in the current space, what are the goals that they want to achieve? Like the RSS. I don't know What is so as per Mohan Bhagwat, this is already Hindu Rashtra. So they don't have any goal. They don't have any goal for temple control. So I cannot vouch for what they are saying. So they don't. But Exactly. That's what I'm saying. So we need to say, okay, they have no interest in temple control. Anything else? Any other things that they have said that they? I know maybe. No, they are not vouching for temple control. Excuse me, Mohan Bhagwat has not said anything कि हमें temple का मुक्ति कराना है. So they don't want temple. They're not interested in temple. Exactly. What are the other goals? I'd like to know those goals because the problem is they don't want temple control. They don't want to take back Kashi Vishwanath and Mathura. मतलब बाकी तो छोड़ ही दो. I think they do. नहीं बोल दिया है भाई. मोहन भागवत ने क्लियर कर दिया है. नहीं, he said no. He said Kashi and Mathura. He said one time. I don't know when he said those two temples. He said कि हर जगह शिवलिंग ढूंढने मत जाओ. He said that's because in South India, in Mysore, they were trying to. Furthermore, he commented कि ये हमने तो ले लिया. इसके बाद और चीजों में क्यों उलझना है? मोहन भागवत ने ये कहा है. Okay, but Bhupen, no, hold on. I wanted to know, Bhupen, do you have any idea what did they lay out any particular roadmap for what specifically they're interested in what are they running the shakas for specifically? Just for social help or what is it? What specifically is the reason they run the shakas? Yeah, let me send that. I'm sending that right now, please. Go ahead. Put it on the private chat. Okay, let me just give answer to Anand's question. So Hindutva is something which is actually first of all, RSS and BJP as RSS as a social organization, BJP as a political organization, they do not subscribe officially, to any kind of ideology called Hindutva. Hindutva was I think we have it. So
first we have to, like, there is no official thing, correct, it's happening, so you cannot put them ke ye wala hai, and I put it in the screen itself for the First of all, they are not a audience. registered organization, so that is there. Ha, That's why. no, no, no. Forget, see, in terms of, correct, Hindutva is only associated with actually Savarkar. He is considered, correct, to actually full-fledged defined what Hindutva is. So let me share the screen for the other people to actually see, so that it becomes a little bit better. Hold on. By the way, the mission statement of RSS is very good if you look at the website at least. I'm looking at it. It will be surprising for many. Okay, so here is the Sangh statement. Okay. The mission, RSS mission is: the Hindu culture is the life breath of Hindustan. It is therefore clear that if Hindustan is to be protected, we should first nourish the Hindu culture. If the Hindu culture perishes in Hindustan itself, and if the Hindu society ceases to exist, it will hardly be appropriate to refer to the mere geographical entity that remains as Hindustan. Mere geographical lumps do not make a nation. The entire society should be in such a vigilant and organized condition that no one would dare to cast an evil eye on any of our points of honor. Strength, it should be remembered, comes only through organization. It is therefore the duty of every Hindu to do his best to consolidate the Hindu society. The Sangh is just carrying out this supreme task. The present fate of the country cannot be changed unless lakhs of young men dedicate their entire lifetime for that cause, to mold the minds of our youth towards that end. It is the supreme aim of the Sangh. This is given by Dr. Hedgewar. Keshav Baliram Hedgewar, founder of RSS, who is also called Guruji. See, again, there are some things here I need clarity on. So, for example, it says, to any who dare cast an evil eye on our points of honor. Like the points of honor, maybe lower, below, it's there. I don't know. That needs clarity. I got to find out what that is. Secondly, they keep referring to India as Hindustan, not as Bharat. So in their framing, it is Hindustan, where Hindus live, not any other name like India, that is Bharat, which the constitution people added. That is a little different. So right, the framing of which is a little different. I think that's just an artifact of history, right? I mean, this is Guruji writing in what, 1920s, 1930s. So at that time, like, you would probably stick with Hindustan rather than Bharat. I'm just saying because someone who wrote the constitution also would have seen the same. Would live in a similar kind of zeitgeist. Why didn't they mention India, that is Hindustan, right? They put Bharat because Pakistan, Hindustan, right? They chose Bharat instead of Hindustan. So I'm just curious about that difference. Anyway, but the points of honor is what I'm curious about, because that's what he's saying, to cast an evil eye on points of honor. So what are the points of honor you need to protect? That needs to be clear. Then vigilant and organized condition, right? Geographically, lumps do not make a nation, which that means that the RSS should be focused on different groups, different geographic regions having a syncretic vision, a vision that interacts with one another, right? Second, it's saying duty of every Hindu to consolidate Hindu society. Again, the word consolidate, I'm curious, what does it mean? They define what does consolidation mean. Then it says, supreme task is just a framing way they're framing it, and lakhs of young men. So what about women? Is it the duty of young women, to dedicate their entire lifetime with a cause? Again, that's like take 50% of the population and not referring to their job. So this still doesn't give me full information of what their goal is. Like, I can see that they want to maintain Hindu culture, but does that mean Hindu religion? Like, are there any particular punts in the Hindu religion that does not contribute to Hindu culture? So, for example, is Arya Samaj considered Hindu? Is ISKCON considered Hindu culture, right? Or is it a new age style of new age philosophy? So that's another interesting question we could ask. I have a follow-up question to that. Does the Sangh consider culture and religion as one thing?
Exactly. See, that's what confused me a little bit. You know, when Mohan Bhagat went to the Hindu temple, Ram temple, I was a little confused because the way the RSS framed itself is that it's a cultural institution, not a religious institution. So I was curious about why he was at the Ram temple specifically. Is it because they contributed to the Ram Janmabhoomi movement, or was it because the Sangh sees itself as a protector of the Ram temple? I was a little curious about that specific reason, because the BHP was not there. It was just the RSS. The former, the former might be the reason actually, not the latter. And on the case, you asked about points of honor, right? So down in the article, you'll get to see RSS mentions about Muslim appeasement and the constant attacks which were happening at that time. So RSS was a reaction, right, after the whole failure of Khilafat movement and Mopla and what happened in Afghanistan border. So, and also, I guess in Vijayadashmi there was an attack as well, which Hedgewarji saw himself with his own eyes and retaliated against it. So, I think these are the things which he's referring to as points of honor, like Shobha then my Yatra question is, nikalna ho, yeah, got that. all of Now I get this. it. So I'm saying, is that still persistent in the RSS today, or has the vision changed since Mr. Hedgewar's time? Because again, that time, now the RSS seems to frame it more as the most Savarkar version of Hindutva, like we say, or No, the Hindu vision, not Hindutva, Hindu vision, where everyone who's born in India is considered to be a Hindu. Has the Sangh gone to that perspective now? okay, Anand, I'm to curious about that. answer to that question, hold on, to answer to that question. See, when Sangh says that everybody, see, the concept when RSS says that everybody who is born in India or the Bharatiya Bhukhand is a Hindu, this comes from the sacred geography. Okay. Although the sacred geography is larger, okay, in that context, the sacred geography, even person born in Afghanistan also Hindu because that's part of sacred geography. You had a Shakti Peeth there. Right. So when one Sangh says that you are Hindu because you are born in the sacred geography of Bharat, so in that context it is coming up. Okay, and the second option part also important is that you see Ghar Wapsi is the only solution, long term solution that you need to look for. Correct. So how you are going to do Ghar Wapsi? By telling that okay, you are not an Indian. Okay. Yeah, Munshi, go ahead. No, I'm still confused about that. Because that brings up a lot of questions then. So what about Hindus who are not from India? Yeah, very good. How Correct. See, wait, yeah, correct. So now the thing is, you have to look at Sangha or its mission statement from a perspective of Indian geography. Correct. So there was no at that time there was no consciousness of like somebody living in America earning a living or doing. Correct. So you have to. It's the statement of that moment of time. At that time, it's a slice of time. Correct. No, but they So knew right about now, the Hindus who have gone to the Caribbean. They knew about the Hindus who were in Mauritius. They knew about the Hindus who had gone to Singapore, Malaysia. It's not like they didn't know about those Hindus. yeah, but correct. That was at that moment of time. I think it did not. They were not that visionary to see that happen. Correct, because it's a reactional. See, you have Smaller to task, see. It's a basically. reaction. It's a reaction, as Rishi mentioned. It's a kind of a reaction against the British and the Muslim League politics of Hindu persecution. So it was a reactionary force, not that thought about thing. Correct. And one more thing is there. So over the time, correct. Over the time, the Sangh has changed its position, its stance, and That's what's my evolved question. and innovated over time. So Correct. whatever is there, it is not eternal. Like it will So what change is the based on innovation? the. So what is the stance now compared to what we currently see? Because then I can come to my point. Because my point requires this clarity. Okay, see, so first of all, you have to remove the word Hindutva, which is political Hinduism. Okay, so understand. Munshi will also able to add to that point. So the term Hindutva was coined by I think a Bengali person. I forgot the name. Bijeet, you can mention the name. I forgot the name. So the Chandranath Bose. yeah. So Pranab Basu. Chandranath Bose was Chandranath Boshu was the person who actually first coined the term Hindutva. And what is Hindutva? In my understanding, it is Hindu. political Hinduism.
I thought it was political Hinduism. Hinduism. No. So see that we can Essence interpret it of Hindu. in many ways. From my understanding, I might be wrong. Okay, because I have not read enough. So, but from my understanding, you also can actually add to that. From my understanding, Hindutva is political Hinduism because it did not exist. So Hindus did not exist as a political force to actually ask and fight for their demands. Okay. Christians were, Muslims were. So against this Abrahamic politics which came to actually got all their rights and they wanted everything. So as a reactionary force, political Hinduism was born as a concept of Hindutva. Now Okay. Chandranath Bosu created it, and Savarkar actually defined it in his books, in his writings, gave it a structure that Hmm. okay, this is what we call Hindutva, defined. Okay, so Savarkar and Chandranath Bosu are like two primary pillars on which what we call today as Hindutva sits upon, based upon. So, So so now Savarkar's Sangh, Hindutva is like historical consciousness, historical I get Hindu that. yes. consciousness. I got that. So in his book, he is writing all this history. It's like Hegelian consciousness So of I Hinduism. still know now what is the stance of the song. So, Now, but when it comes to RSS or Sangh, Hmm. Sangh does not follow or does not implement or does not work towards building a Hindutva state. It is Okay. trying to build a cultural civilization state, which is So what does different from that political. cultural state take? What is the form that cultural state takes? I'm curious about that more because from what I get, the people have different perceptions of what the RSS is aiming to do. I'd rather the RSS be clear about what they're and someone knows the RSS. At least tell me what is their vision of a cultural Hindu state. Is it a pluralistic Yeah, Hindu I state, think for we can example? refer. I think we can refer yeah, you have. to Guru Golwarkar's work on this. So we'll have to refer to that. Or not I'm here? finding that out right now. Yeah, I think Sure. we need to do one more stream on that. What Yeah. do you mean? What Okay, Sangh stands let's for? So we from can what I read can about it. hear. Okay, let me cut the chase. From what I've heard from Mohan Bhagwat for the past I think 2 years right now, because he's been speaking a lot recently, like a lot more than I've heard in the since in 2014 when Modi got into power. He's been talking a lot recently, so I've observed like a noted amount of increase in his speeches, right? So publicly, maybe he talked to the Sangh, but I'm saying in where news picks him up regularly, right? So it seems to be a more pluralistic system where it's going closer to me. I see more the Savarkar ideology that everyone who lives in the geography of Hindustan are part of the Hindu community culture. So no. So even the exact Muslims, definition is जो भारत को पितृभूमि और पुण्यभूमि मानते हैं. that's my point The is that fatherland and the holy land. तो अगर so कोई बारबाडोस में बैठा है और हिंदुस्तान को पुण्यभूमि मानता है तो वो भी हिंदू हो जाएगा. So my point is that seems to be what they're going for. Now the problem here is because of this definition, it is impossible to build Hindu political consciousness because you've basically said everyone who lives here, I will focus on everyone's needs. Because when you do that, you hamstrung yourself. Exactly. You hamstrung yourself. You know why? Because, for example, all a Muslim or a person like, for example, a Dargah worshipper needs to say is, oh, your deeper tool is offending my religious sensitivity. And you're saying, I'm also an Indian. I'm also Hindu. And this other Hindu is oppressing my Hinduism. But you want us to live in harmony, right? So what is the RSS response has to be? It has to be, oh, we allow you to do your stuff. We allow you to be irritating and make these comments, right? Or for example, when you have these J-Beam guys, right? The RSS is saying we have to live in harmony. They are part of our group. They may be little disagrees now, but we have to just tolerate their attacks on Hindus, on other Hindu communities. We just tolerate it because we want to live in harmony. So what does that mean? By this definition of the way you want to live, the pluralism you want to do is you hamstrung political possibility for your Hindu community. So you cannot really rally for. So see, it's so stark. When, for example, when you see Bajrang Dal fighting for Hindu rights against Christian preachers, the RSS's perception is exact opposite of that. Like Christians have a right to preach their religion. So these two are literally in the mind of a casual observer who might be want to get convinced to your ideology. Bajrang Dal is so violent, but RSS is telling me everyone can live here. So they're confused and they assume that it is the Bajrang Dal is just so the RSS is lying enough for the Bajrang Dal to do what it has to do.
So they don't trust the RSS. So the RSS gets lumped in with everyone. So we are, as human beings, we go to the worst that we perceive. I'm saying what we perceive as the worst, we go to that always for everything. Right? So that's what ended up happening. And when that happens, imagine you're a normal and you're trying to build political consciousness in your locality. Now, a Hindu who doesn't enjoy the extreme, like there's different kinds of Hindus again. We're clear that there's plurality in Hinduism. Maybe some Hindus are more aligned to the way the Bajrang Dal does its thing. Maybe some Hindus are aligned to the way Matha does its thing. Maybe some Hindus are aligned to the way economic Baniya does its thing. Right? So maybe one group of Hindus, when you're trying to build political consciousness and consensus to push your agenda, imagine you go into your locality and you think, I'm from the Hindu community and I support the RSS. I support this. This person has already assumed that you are supporting Bajrang Dal. So imagine you want to run a bake sale to get all the Hindus together and share their food, share their culture, and maybe build a community around it. But because they are scared of they're scared maybe some Bajrang Dal person may come to their house. Because they didn't make the food the way the Bajrang Dal person wanted. Even though it may not happen, there's a high chance it will not happen because the Bajrang Dal is not interested in how you make your chapati or your puran poli or but the perception is built in them, unfortunately, over time, right? So they don't want to participate in this thing. That's what is happening right now. It's very clear. Like a lot of conscious Hindus I know in my extended family who don't want to associate with the RSS because they're scared of the other side. They think the other side is that standard because they've been propaganda so much. Because they're confused. I'm telling you, a lot of people are confused. The starting point is, if you want to change perception, you've got to start with the easiest things, not the hardest things. If people are going to the hardest things, they try to challenge the Christian missionaries the first step. No. First you got to build, it's like you've been to start a war, right? You don't start just with fighting the enemy. You start building your logistics network, you start building your literature, you start building your research. We're not doing that. That's not the first step. We're going straight to the last step. Even when challenging missionaries, right? What are they doing? They're going to the final step, confrontation. No, you first research the person, find out who the person is, what their antecedents are, where they're getting the money from, who are the local politicians backing them. All those pressure points you target first, then you go for the last step, which is confrontation. So what is happening is they're using these videos to prevent Hindus from consolidating. The fear of Hindus to consolidate is being created by using these final videos. That's how I'm perceiving. Honestly, I'm telling you. The perception is that. So, and second thing is, again, like Bijeet is right? And I think even Munshi was very interesting. He made a very important point. What are these major points that people will gravitate together to work together? Right? Other than temples, 3 temples, and other than the Ram temple. There's one big thing. The attacks, the verbal and literature attacks against Hindus worldwide. No one is doing any work on that. Like literally, no one is doing any work on that. Exactly, yeah. Exactly. Like I've not seen everything is. I feel so alone, you know. I feel so lonely. Ki bhai, there is no narrative. Yeah. Tell me the name of the last Hindu philosopher who can be academically quoted. Other than Savarkar. I'm telling you, Savarkar is book Hindutva, where he's studying the historical consciousness in a very Hegelian way. But still you can quote this guy because it is a logical framework. But other than that, when you talk about Hindu guru or let's say Osho or some other people, they are very good to describe the metaphysical bhakti and all these things. But academic philosopher, can you name me one good philosopher? All the philosophy that are being discussed in Jawaharlal Nehru University or Jadavpur University are either written by Rousseau or this Montesquieu or Gorky or Schopenhauer, Nietzsche, and all these philosophies. Alasdair MacIntyre, and they include even Amartya Sen, who knows nothing. So Amartya Sen wrote this book about Nyay Niti, in his idea of justice. There is a book, which was again a copy of this Western academic work. Okay. Now the point is that we need to write this sort of academic literature in philosophy and at least history and historical philosophy or whatever philosophical history. In order to sort of counter the attack that are being done. यहाँ पे जब कास्टिज्म पे अटैक होता है, they have equated it with their race theory.
जब Yeah. कर दिया फिर हाँ, now it is a very vertical split. Very so I always laugh when they like go cast and race, they compare it. I'm like, have you no, seen but the they difference? how they are backing it up? They are backing it up with Aryan invasion theory. कि ये जो कुछ लोगों का रंग थोड़ा गोरा है इंडिया में, कुछ लोगों का रंग थोड़ा ज्यादा काला की तरफ है, and they Seriously. are different people. No, तो no, I need उनके it so पास bad. Uh, No, no, so my point is fundamentally that the reason I was mentioning all these things is because fundamentally, if you want to create a like the global narrative, you have to start building from your literature and research. That is not being done, and that unless you start with that, Hindus will not be able to consolidate. right. I Simple. mean, Simple. who's the next I am Naipaul? giving you one simple example जो मैं भूपेंद्र को भी बोला हूँ काफी टाइम कि we are talking about this Bangladesh in this episode, right? Now what are मतलब कौन किससे लड़ रहा है बांग्लादेश के अंदर? What is this civil war about? What was 1971 about? 1971 war was about इकबाल वर्सेस रविंद्रनाथ टैगोर. कि बंगाली लिटरेचर में एक बंदा ऐसा आया टैगोर के नाम से जो इतना मतलब उसका अचीवमेंट इतना बड़ा था कि बांग्लादेशी इन स्पाइट ऑफ देम मतलब गेटिंग एंगेज्ड इन पाकिस्तान, क्रिएटिंग पाकिस्तान व्हाटएवर, वो ये मान ही नहीं पाया कि हम लोग उर्दू में बात कर सकते हैं. And बिकॉज what इन देयर माइंड उर्दू वाज सॉर्ट ऑफ इंफीरियर लैंग्वेज, और यहाँ पे एक लैंग्वेज बैठा हुआ है जो व्हाटएवर टैगोर का क्रिएट किया हुआ है, टैगोर का एक बड़ा लेगेसी है. सो इट वाज द फाइट बिटवीन इकबाल एंड टैगोर. इट वाज द फाइट मतलब बांग्लादेश अनोइंगली दे वर फाइटिंग फॉर उपनिषद against Iqbal's literature, because if you read Tagore, it was the मतलब basically he got hugely inspired from Upanishad, जो बोला नहीं जाता मेन जो एकेडमिक डिस्कोर्सेस में, क्योंकि फिर वो हिंदुत्व आ जाएगा ना फिर वहां पे. So one last point, one more thing I've observed. People may disagree with me, but please do give me a counter if it's possible. I mean, like based on what I'm saying, I find that a lot of the ritual and Puranic attitudes, the Puranic way of like practicing Hinduism comes in the way of Hindu consolidation, or not consolidation, Hindu political power. So, for example, you take for example this movie, the movie we recently came. There's a lot of controversy, right? You might be Kantara, chapter 1, right? Many people started targeting the person who's trying to build Hindu consciousness because he didn't get it perfect, or he didn't get it the way they wanted it in their perception, right? So, what does it do? It makes infighting very easy. It makes you take sides and start fighting. You're not focusing on the principles. You're not focusing on the deeper conversations about the topic, right? Nothing. You're just focusing on this. I'm in this camp. I'm in that camp. We're fighting each other, right? It is typical what even the Islamic what kind of mazhabs do with each other. They keep fighting each other, right? Which is again happening here as well. Say that's one thing. Second thing, for example, take for example, and I think Munshi mentioned very interesting. Naipaul, the beautiful tree. How many people in their family groups or in their book clubs will read Naipaul and analyze it? They will rather analyze, I don't know, Shakespeare, right? That's it's go-to. That's cool to analyze. But no one will analyze this stuff. And if I go to some older person, I tell them, why don't we discuss this topic? No, I would rather go to this discourse by this guru and let's just listen to him. They won't even, I'll ask, why do you ask? I don't ask questions for clarity. No, I just want to listen. I want to just hear it. It is not about whether you are understanding. You just want to hear it and you're feeling better about yourself because you entered a discourse. I've observed that pattern again. That's another it's like very one direction. It's not like you don't understand, study your culture. You want to like just be told. I mean, told. अच्छा कमेंट आया है वैशाली दी ने की है कि वैशाली दी को एक मिनट Which one, Bijeeta? This one. The reason why they use this race invasion theory is because they are incapable of ideating of a civilization naturally sprouting from a land that can then be considered as the mother and inspiration. Exactly. That's what we have been talking about for a very long time. The idea of natural morality and natural convention and natural tradition
this is missing in Abrahamic scripture No, because that's they why they believe wiped in. out so many of those. No, they wiped out so many natural traditions They are for that reason, because historiocentric. they're averse to it. They don't like it. Their They morality is dislike it. historiocentric, external, scriptural, intention morality. Those are motivated moralities. And because they are motivated intention moralities and they are historiocentric, so they have historically done the damage and genocide of natural conventions and natural traditions. Now, why those institutions are there, even the big church and big whatever mosque and everything? Because they are invested to in whitewashing the crime of their genocide of natural conventions. वो चर्च का काम ही है कि ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करो जो चीजों को व्हाइट वॉश कर सके. Can I just reply to one thing Masood Randor said? हाँ. See, this statement, as far as I saw in the RSS, they cherish every Hindu culture, no matter what you are from. I don't think so. It's possible. You can't cherish everything at the same time. It is impossible for any organization. I'm telling you, it is impossible. It is literally like balancing 1,000 cups and expecting not one to fall down. That is an impossibility. You're putting yourself a very high bar, which is almost impossible for any organization to do. I'm not criticizing the RSS for being young. I'm saying I want clarity on what it is. I'm saying the vision of the RSS is not conducive to build in Hindu political consciousness. And maybe for cultural consciousness, yes. Like, for example, maybe they will go to like the Ram Janmabhoomi, or they can do for Bengali culture. Like, they can do that. But it's impossible to bring political consciousness from the RSS specifically, not from the way they framed it, the way I see it. I could be wrong. Maybe they will achieve it, but they've not been able. For example, right? 400 par. 400 par, Modi said for a very specific reason. Because clearly they wanted to do it. They wanted to do a constitutional amendment at some point. Because you need to build a large number of seats to get a constitutional amendment. It may not have been about caste. It could have been about something else. Maybe it's about removing socialism and building more political capital for every community. So, for example, maybe capitalism for every community, so they can build up their own resources, their own institutions. So there could be pride, Hindu pride in their own traditions. But instead of helping with that, they're like, oh, the JP Nadda said they don't want us, so we will not help them. And then the entire thing is fuss. It didn't become about the larger message. It became about the temporary political fight. Right? So it's impossible to make everyone happy. I think you put a very high burden on oneself to say, oh, we can cherish every Hindu culture. So, for example, Sabrimala, a lot of the RSS people were supporting the ladies who wanted to go into the Sabrimala in the beginning. Then they realized, oh shit, what do we do? What do we do? We basically opened the Pandora's box, and then they stepped back a little bit. So you have to be very careful. So, for example, a lot of the casteist groups so really old traditional casteist groups don't like the RSS for that reason, because they're like, you want to destroy our traditional caste based logic. So they tell all their supporters not to support the RSS, support the Congress, because the Congress is okay with some casteism because it helps their benefits the political narrative. So you cannot, all sides of Hindu society cannot balance. What you do is you take a core, the common denominator, and you work on that. And that's my opinion, at least. I could be wrong again. And Okay, Rishi society is going to. Yeah, go ahead. Sorry. Then Rishi will give these things to RS. Okay, go ahead, Rishi. Okay, yeah, and with a society as big as 1 billion people, it's going to be slow. That's also the unfortunate reality, right? You're not going to see instant change, and this is also why being in power is also equally important, right? See, at the end of the day, Sangh is our organization. We should not rely on them completely, right? But we should put pressure on them. And the other thing is, like, if when you're within an organization, right, you tend to think like them. And while you can support their mission or you can support their cause, like, there's obvious benefits staying outside and thinking outside the box for them. So that's my take. No, but I agree with that. It takes some time to achieve things. I would not expect anything to happen overnight. But I'm saying is, you can do both. You can do two things at the same time. So when you mentioned you need to have some amount of help, assistance, socialism, or maybe not socialism specifically, but you need welfareism, right? That could be your focus.
But you can't say, I will only do that first. You say, I will do this and I'll also do some of the other. Like, if you observe the last 3 or 4 bills that the BJP specifically, as the arm, political arm of the RSS has pushed through, they've not been Hindu-centric bills. They've been Muslim-centric bills. Like triple talaq, 370, what's the other one? The Waqf bill. It is not, I understand what is the long-term vision, but nothing has been short-term, anything for like in terms of Hindu-centric. So, for example, take an easy one. RT, take RT, correct, RT. Right education, exactly, right education. Yeah, RT. Even there, right education is like, you should like, I will allow, no, forget about that, minorities, defining minorities. You don't even have to go put a bill in that. You literally just add a clause to your definition of minorities. Minorities in this region, what will Hindu minorities be like in Tamil Nadu, for example? Unique, like maybe you're a Hindu minority and who's being oppressed. Those specific things you can add, but they don't even, that also they've not done. Like their focus seems to be on like, we won't build long, and I appreciate that. The reason I support Modi is because of his long-term economic vision. But from the perspective of maybe a Hindu, you have not actually done anything for him substantively. For him to say, oh, I'm politically galvanized. Okay, wow, you're doing this. Now, let me go and work some more. Let me go work some more, work harder for this thing. So, for example, when you're going on a marathon, right? If you don't keep running, then you lose your energy. You just stop. So you need to keep giving things for the person for the Hindu community to keep going, being galvanized on, which they have not done. They don't even started, in my opinion. They need to start. They can't wait. They're waiting too long. They're waiting too long. It's like, oh, we will do it after 15 years. No, that's too late. By the time you will disillusion your community and they start voting for other people who will give them fake promises. So when so Anand, when people talk about, let's say, Ram Temple and Article 370, these are the two things people say every time. Article 370 नहीं change नहीं किया गया और ये राम मंदिर. Now Ram Mandir was given by court. Technically, if you ask me technically what is going on there, right? Ram Mandir was given by I think the BJP put pressure. Article 370 was implemented in favor of secularism, not Hindutva. No, it is for security and for economics. Security. That's the main priority. It was not a pro-Hindu change. I see. I think you can pick any legislation in the past 15 years and say and still claim it's not pro-Hindu or anything like that. I think that's completely unfair on them, right? Why is it unfair? Political. I mean, okay. Let Shastri respond. It is the same BJP. I am giving you examples. It is the same BJP government who is giving Hajj subsidy. Hajj जाने के लिए subsidy बढ़ा दिया ऊपर से. No. So these are blatantly pro-Islam policy. If the same BJP government you're still looking at it subsidy, you're still looking at it from a glass half full perspective, right? So no. Let's not. Let me finish. I am telling you a fact. Hajj subsidy जो दे no. Bijita, you're not letting me stop. Pro-Islam है या pro-Hindu है? Just tell me this much. वो secular है, pro-Islam है, pro-Hindu है. Actually, it's pro-Hindu. मुझे बात करने बोलने दो ना. See, Hajj used to be something that was given to all Muslims, irrespective of your income type. Modi government ने क्या किया? थोड़ा, see, you can't get rid of it completely. ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है. But उन लोग ने क्या किया कि the most egregious aspects of that subsidy हटा दिया पूरा. अभी क्या है कि तुझे एक low income Muslim ही तू अवेल कर सकता है और तुझे लाइफ टाइम में सिर्फ तुझे 2 visit मिले. I think that's still very sensible. See, there are political, rather constitutional or judicial compulsions that might prevent them from removing the Hajj subsidy, and we should recognize that. But we should not forget the fact that they actually restructured the entire program. If you are not willing to recognize that aspect, then I think it's very unfair for you to just say that, oh, it's not pro-Hindu enough because it's we didn't get rid of it. It's pro-exchequer maybe. How is it pro-Hindu? It's pro-exchequer. How is it pro-Hindu? मैं तो question कर सकता हूँ ना. See, my point is, let me finish, right?
तो हर चीज तो ऐसे उठा के यू कैन से हर ये चीज प्रो नहीं, एक्सचेकर इफ है, देयर इज अ हज ये सब्सिडी, प्रो No, no, अगर I'm हज being 370 सब्सिडी objective है, here. 370 एक is मिनट Just एक pro मिनट, not talk. अगर हज security. सब्सिडी है तो Oh, हिंदुओं का you're not तीर्थ letting me सब्सिडी finish my क्यों नहीं है? point. None of you are हिंदुओं का letting me finish the point. तीर्थ Okay, यात्रा के लिए सब्सिडी क्यों नहीं है? hold. आई कैन Okay, आस्क नाउ. hold. Okay, yeah. Just Hasif finish his point, and then all of you can respond. Go, See, Hasif. you Go can ahead. you can pick any legislature and say none of it is pro-Hindu, right? And that's quite unfair, right? Anand said that 370 is security focused. ठीक है, तू बोल सकता है security focused है. That might be the primary focus. Sure, there's nothing wrong with that. But with 370, there were other transitive impacts as well. So, for example, a Kashmiri Pandit Hindu, if they married into a Muslim family, could never claim, sorry, if they married an out of state person, then they lost their right to property in Kashmir. That was the impact of 370, right? You got rid of that. So you Now, made it is that secular. not pro? Is that not So you pro-Hindu? made it secular. No, So you is that made it not secular. pro-Hindu? Like, no, How prior can to it be pro-Hindu? 370, Pro-Hindu is no, like no, no. something which. No, you're mistaken. Prior to 370, if you're a Kashmiri Pandit, you married someone outside the state of Kashmir, you lost your Kashmiri permanent residency. Okay. Getting rid of 370 got rid of that. Is that not Okay. pro-Hindu? No, One that second. is So pro. you are saying no. You are saying Overton window has shifted towards Hindu. No, Overton no. window is Is that shifting not? towards No, right. wait. On a simple thing, the abrogation of Article 370 finally gave Kashmiri Pandits the right to their own ancestral property, just like the rest of Hindus in India. Is that not pro-Hindu? Okay, Which correct. Kashmiri Pandit? Which Kashmiri Pandit? Those who had the experience of exodus during the time of this No, the BJP irrespective of government? that, if you're a Kashmiri Pandit, prior to abrogation of 370, you married anybody outside the state of Kashmir. You lost your right to your own ancestral property. You lost your own So permanent it was residency within pro-Islamic. your own state. So it was pro-Islamic in a way, right? Did the Because BJP ये enact Sharia से 370? compliant था ना. It was compliant with Sharia. Hence it was in a way pro-Islamic. Now after 370, ये Sharia compliant नहीं रहा कुछ हद तक. That is your point. Now to this, I will say कि BJP has brought the domicile law. और ये डोमिसाइल लॉ की वजह से कश्मीरी पंडित का घर लौटना तो मुश्किल हो गया है. जिनका एक्सोडस हुआ था डोमिसाइल लॉ में तुम्हें इट डज नॉट गो टिल द पॉइंट ऑफ 1990. लोगों के पास कागज नहीं है. सो डोमिसाइल लॉ की वजह से हिंदू कश्मीरी पंडितों का घर जाना मुश्किल हो गया है, लौटना. ठीक है. वो नॉट किसने ओनली लेकर दैट आया मतलब होगा? आई कैन गिव यू स्लीव ऑफ एग्जांपल्स दैट आई नोटेड डाउन. ठीक है. मैं एक बात बताता हूँ. जैसे फॉर ये 370 हो गया. नाउ यू आर सेइंग कि ठीक है ये तो प्रो हिंदू थोड़ा सा हुआ ना. कहां से प्रो हिंदू हुआ? हिंदुओं को कश्मीर हिंदू में ओके. इफ इट इज प्रो हिंदू, हिंदू शुड बी एबल टू बाय लैंड इन कश्मीर. हिंदू कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. ठीक है. जम्मू में रोहिंग्या जाके बस गया, 10 साल उनके नाम से वोट मांग लिया, बट तुम रोहिंग्या का कुछ तो उखाड़ नहीं पाए. ऊपर Yeah. से दिल्ली में ये चल रहा था, ये नया जो सीएम आई थी, ये इनके लिए बिल्डिंग बनाने लगा. ये जो जिनका अनुप्रवेश हुआ था दिल्ली में, जो रह गए बस गए थे रोहिंग्या, इनके लिए ये बिल्डिंग बनाने लगे. ठीक है. तो एंड देन आई कैन गो ऑन. ठीक है. इफ यू वांट मी टू स्टार्ट, आई कैन जस्ट स्टार्ट कि हुआ क्या है. जैसे कश्मीर या पूरे इंडिया में ये जो आई थिंक हुलू मॉल है, हुलू मॉल के एक बंदा था, लुलू मॉल. लुलू या हुलू, जो हाँ लुलू मॉल है. ठीक है. अब ये जो बंदा है, इसका एक्चुअली अरब का जो सलाफी इस्लाम है, इसके साथ इसका कनेक्शन है. ना तुम चारों सब जगह तुम ये इसको मॉल बनाने दे रहे हो, एंड यू थ्रू द मॉल यू आर प्रमोटिंग इस्लामिक कल्चर. ये कहां से प्रो हिंदू हो गया? ठीक है. No, you're not promoting Islamic culture. You're benefiting an Islamist. You can't say you're promoting Islamic culture. Come on. अरे It's not एक the- मॉल का भाई, एक मॉल का जो इंटीरियर होता है, इट गिव्स यू द वाइब ना, वेदर द वाइब No, इज no, no, इस्लामिक no. और द वाइब इज ओ No, कम no, ऑन, it's not that bad. कम ऑन. Mysore में है ना. I've been to. It's not that bad. Explicit भाई नहीं है. एक मॉल के अंदर जाते हो, इफ इट इज एन इस्लामिक मॉल, यू कैन हैव द वाइब.
इसका जो आर्ट वर्क है ये डिपेंड करता है ना, ये मैटर करता है कि भाई एक आर्ट वर्क कितना इस्लामिक है कितना No, हिंदू but it's है. minor. There are bigger things, bigger problems. अगर वो माइनर है फिर तो तुम बॉलीवुड को मत बदलो ना. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कि चीजों को ओवरटर्न विंडो को थोड़ा हिंदुओं की तरफ ले जाना है. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना. वी आर नॉट टॉकिंग No, एज no, I'm talking लिबरल. about. My goal was not about that. What my point is, if you want Hindu political consciousness and for working together, you need to give them small wins, and they have not had small wins. Not about. So, for example, what the way Munshi is saying is You are that there was talking some. about small wins एक ना. एक हिंदुओं minute, को क्या small win दिया जाए. Please, come on. Let me make a point, please. Hold on. You had an argument with Munshi for a while. Let me make my point about something more interesting. Okay. So, for example, Munshi said that it helped with some Hindus they could keep property. That's different. That's you're writing a wrong. I'm saying, what about something that Hindus can say? I did something for my community. Like that is not there. Like you don't. For example, you take like Education Act, right? Right to Education Act. Hindus should be able to set up their own institutions, schools. There's not been they could have easily brought a bill where it makes it easier for Hindus to get government funding to build their education institutions. So you say, oh, we're able to do these things. We're able to work together to make something. So it's a positive thing. So the problem is all these are negatives. The negatives are there and we fix the negative. So what it happens, it puts you as opposite with someone else and becomes a political controversial topic. Right? That was it becomes about controversy, not about positiveness. When you want to get people to work together, you have big positive ideas, like positive stories you need to have. None of these being positive stories, being only negativity to the discussion. That's the problem. The problem is fundamentally negativity in every discussion about Hindus in India. Yeah, and Every we don't time. even What happened? highlight them. I mean, we don't even highlight them, right? So one of the biggest benefit of the new education policy is promoting your regional language, right? तुझे medical education तुझे उसका textbook तुझे अभी हिंदी में मिल रहा है, But there's मराठी nothing में to मिल रहा है. What is Hindu there? What is No, ability no, Hindu no. to there? do that. But no. I think you're mistaking this, right? Like it has everything to do with Hindus. Now today, I can still retain if I'm a student, right, and I'm a Marathi-speaking student. I can still retain my Marathi. I don't have to abandon my Marathi in pursuit of my profession, right? And if you want Hinduism to survive, then you have to let your languages to survive as well. Because without me knowing Marathi, how would I read Tukaram? How would I read his Abhangs? How would I be more invested in my own culture? Hey, I mean, you have to acknowledge that these things are also important. अच्छा, so to counter this, right, about the language, in West Bengal, there was this communist government जिन्होंने इंग्लिश पे ये पाबंदी लगाई कि अगर स्टेट रन स्कूल होगा तो वहाँ 6th स्टैंडर्ड से तुम्हें इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा. बिफोर दैट यू विल बी लर्निंग बंगाली. नाउ जब बीजेपी नहीं था बंगाल में, तो बीजेपी नहीं है, इट डज नॉट मीन कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू द हिंदू लिटरेचर. तो वो तो एक हिंदू उसके he or she goes through and read and skims through this kind of literature. ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा मतलब इसमें रेवोल्यूशनाइज कर दिया चीजों को, ऐसा तो नहीं है ना. आप स्टिल अगर कॉलेज में जाओगे, फॉर एग्जांपल कॉलेज How में, are नो you मैटर saying it's वेदर not यू आर revolutionary? कॉलेज में इफ यू आर फ्रॉम बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इट डज नॉट मुझे मैटर. पहले इफ 70 यू वांट साल टू में स्टडी एक साइंस इन इंडिया, इफ यू वांट टू स्टडी साइंस इन इंडिया, यू हैव टू स्टडी इट इन इंग्लिश. ठीक है. yeah, सो how's that not revolutionary? Like now तुझे the अभी point is, local it is not languages में तुझे revolutionary science because पढ़ने को मिलता है. BJP has not added to the knowledge creation in the local language. अगर वो कॉलेज में जाके ये बोले कि ठीक है, आज से कॉलेज में जो मान लीजिए फिजिक्स हो गया या फिर इंजीनियरिंग है, इसका जो मेन 3-4 किताब है ये लोकल लैंग्वेज में हमने, जैसे चाइना किया है, राइट, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, ये जर्नल है, ये 1 महीने के अंदर जो मान लीजिए दिसंबर का जो भी वॉल्यूम होगा वो जैन तक हम अपने लैंग्वेज में करके सारे 13-14 लैंग्वेज में करके हम IITs में या मेन जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पे रख देंगे. Then that is a revolutionary transformation. लोकल लैंग्वेज में चल ही रहा था. इट्स नॉट लाइक लोकल लैंग्वेज में चल नहीं रहा था. हाँ, अब नीति आयोग बना के तुम वहां लिख रहे हो, तुम्हारा एक ड्राफ्ट दिख रहा है,
वहां पे लिखा हुआ है कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में चालू कर रहे हैं। अगर ये डेवलपमेंट है तो देन फाइन। जैसे इन्होंने जो पिनल कोड था या फिर जो भी अपना सिविल कोड था उसको न्याय संहिता बोल दिया, ज्यादातर अरे चीजें सेम 10 रखा साल है। पहले तुझे इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक सिर्फ इंग्लिश में मिलता था। हाँ, 10 साल पहले टेक्स्ट बुक एटलीस्ट बंगाली में कुछ कुछ मिलता था। यहाँ पे कॉलेज का जो टेक्स्ट बुक है, ये अभी तक जो मेन टेक्स्ट बुक है वो मराठी या फिर बंगाली में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। नहीं, स्टिल इफ यू वांट अब टू भी स्टडी इन मिलना चालू हो कॉलेज, गया है, वही मैं बोल रहा हूँ। मेडिकल में चालू हुआ है। मोस्ट टेक्निकल एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेजेस पे तुझे पिछले 5 साल में ही चालू हुआ है टेक्स्ट बुक मिलना, उसके पहले नहीं था। दैट्स अ बिग थिंग, तो ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। Can I so what? So again, I'll give you another example. This again, the way things are framed by the current how to say cultural fight. It's not conducive to building consolidation. It may give finally consolidation, but it's not fast like the way other communities do it. So take for example the Deepak tool. Okay, Deepak tool issue. So the main point of the Deepak tool issue was lighting a lamp on a pillar, right? Instead of first educating the Hindus of that area, saying this is what that lamp is, they went straight away and filed a thing on court. They didn't get all the Hindus in the region to say, we want this lamp. Whether you want, one person wants it or not, we all want it. So they didn't organize meetings in that area, saying, okay, this is what the lamp is. All of us get stories of among your family and everything about what this lamp was and how for historically that thing has been happening. Then they didn't Anand, organize. No, let me finish. Let me okay. finish. Then they didn't organize like maybe like prayer events where you sit and pray to Murugan. Every other day you sit and pray to, because people live there only. They actually pray. Then after getting the negative verdict, instead of going protesting, this is what Christians do, by the way. Christians and other communities do it. They will do it very smartly. They will do non-violent things. They will sit. They'll sit in silence. They will show black flags. They will sing music. Like this is what instead of going protesting and breaking barriers, and that's the only image that comes out. That image comes out. These news are fighting and scream, fighting the state, and they're violent, and they can easily play that for thing. And then last step is, instead of saying it's about my faith and my love for my God and for my culture, oh, the Stalin government is doing minority appeasement. Why did you bring the minority into this? It has nothing to do with Christians or Muslims. Yes, the Stalin government will do what the hell they want. But what about your focus? Your focus is build that community together, to worship your God in that particular place. But every time the narrative is minority appeasement. Every time I hear a discussion where it's about freeing temples, minority appeasement. It's about what do you call it? Like any other thing. Like one lady said, she said, have 5 kids. Hindus should have 5 kids. Instead of framing it as we should do our duty to our dharma and keep the number of population at 2.1, they're like, oh, Muslims have 19 kids, why can't we have 5 kids? So we immediately because of Muslims, not about us, not about the community that wants to build its political capital. Like the discussion is like this. Every day it's like, and for example, I'll see on the messaging, the groups who go around messaging, there'll be some Christian making comment about Hinduism, and instead of analyzing what that person is, oh, did your prophet did this? Like, at least थोड़ा अप्लाई करो भाई, किसके साथ आप लड़ रहे हैं, किसके साथ आप डिबेट कर रहे हैं. This copy paste. Everyone's obsessed with the Muslims in this country. I don't know idea why. For everything, even things are not related to you, add Muslims to that conversation. There'll be discussion about Hindu temples. On TV they'll invite all the 2-3 mullahs. I'm like, why are you inviting the mullahs to a discussion about Hindu temples? Invite 10 different people, 10 different Hindus with different perspectives. At least उनका discussion तो होगा. मुल्ला कैसे आ गया इसमें इन discussion में about Hindu temples? Exactly. मतलब ये रेफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए. ये रेफरेंस नहीं. Okay. Yes. Okay. I think we need to finish the discussion. I think it's been a long discussion. So we will take not. So we'll take the last question. This is a very important and very poignant question which is asked by Boishalidi. Which actually summarizes the whole debate that we are having. Right. So one side, Anand is saying that there hasn't been enough done, even small little pieces of cake given to Hindus. Okay, take this.
You have voted for us for 10 years. Take this as a token of appreciation from the BJP government. Okay, overtly, it's done covertly, but it needs to be done overtly so that it reflects on the Hindu society that okay, we have been given this for voting BJP, which has not happened and doesn't look like happened. It may have happened as Mr. Shastri is saying, but it hasn't happened overtly. Simple case would be RT. Everybody knows that RT Act damaged, and a lot of Hindu schools were have to close because of RT. So it's a very low hanging fruit which could have been done, which BJP did not do, and lot of Hindu organizations, lot of people who sympathize with the Hindu causes were asking this to go, because you change, make little bit of amendments. You don't have to do abrogation altogether, and they could have made sure that the Hindu organizations could have their own schools, run their own schools. Just put one more kind of a exclusion into that. So that did not happen. So that is something which is Bijeet Da and Anand is complaining ke there hasn't been enough done to actually placate the Hindu voters who voted for BJP for whatever reason, for Hindutva, for development, No, whatever no, reason I'm it not is. about placating anyone. I think people are misunderstanding what my point is. My point is not that the Hmm. BJP has not done anything for Hindus. They've definitely made it Hmm. easier for Hindus to have a voice. It's very Right. clear. I've seen a change in the way. I'm saying if you want to build political consciousness to build a larger, like outside of the BJP, you want to build like people moving, getting together and organizing themselves. It is not possible with just what is currently happening. You need much more at a more deeper local level, and not just through the RSS. Beyond that, it has to go beyond. Like a common secular Hindu must want to hang out with another secular Hindu and say, let's discuss Hindu ideas. Until that happens, you're not going to have political consciousness. People, I think handful of people like you and me and all sitting on TV, on the net may be there, but majority of people are not interested. They're not. They're like, "Mujhe kaam karna hai." There's nothing. People, how people are like gravitate towards stuff when they are pumped up, and that pump is not happening. So I'm not anti BJP. I'm not criticizing the BJP. I'm saying with what they currently have provided, it is not going to happen. That's what I'm saying. and Okay, I think so like we need to have competition between like local what is successful locally, right? So Yeah. for example, like in Maharashtra, like uh, the local BJP and Sena are basically constructing um, roads for Varkari Yatris. Right? Yeah. Why aren't we promoting those kinds of positive agendas? Right? We never seem to do that. Right? So uh, okay, if Shastri, you want who should to, do that? Shastri, who should do that? It should Sangh do that, BJP do that, I do that, you do that. Who should do that? you see, it's everybody's responsibility. That's the point I'm trying to make. Right? See, you can say you can criticize the song as much as you want. But you also have to do some lifting as well, right? You can't rely on just one organization to do everything. कैसे होगा? So if you see something this is what I keep telling people as well. If you see something positive that works towards your political goals, then you should promote it. Right? Like the other day, there were folks um, retweeting this, like I think it was Kannadiga or Andhra dude, I believe, and they were cleaning up their local temples and ponds. That guy was a RSS Influencers, worker, if you don't know. Insta influencers doing that in actually Yeah. Yeah, Andhra. Andhra, and And I shared whatever I saw. Like same thing with Sanskrit Sparrow. The Sanskrit, there's an entire group of young Sanskrit kids learning Sanskrit and speaking Sanskrit. It's a phenomenal yeah, thing they on do. Insta. Yeah, they're doing a phenomenal job, and I share it whenever I can. When I share it with my family, I share it with who I can. Like I do my duty. I like whenever I can share something Hindu related or cultural related, I share it. Even though people don't respond, they're like, I don't care. But I share it. I do my duty. But the problem is, I happen upon these things. I happened upon to see it. But you'll never see never see a mainstream discussion ever. Like it is. Just imagine, okay, tomorrow this Varkare Yatra, right? Imagine the Varkare Yatra. Like today, the entire day, all the BJP spokespeople will not talk about their bloody Congress obsession. They're obsessed with Congress and Rahul Gandhi. I don't care about Congress and Rahul Gandhi tomorrow. I go to talk about the Varkare Yatra. But they're obsessed with Rahul Gandhi. I don't understand why they're obsessed with this guy. I know he gets you votes. Why are you so obsessed with him?
Focus on something that you did. What did you do in that? Like in Maharashtra, you did something. Why can't you focus on that? Why do you have to focus on what Uddhav Thackeray and what Raj Thackeray talked together? Nah, मैं एक unfortunately, बात they have to बताऊं. play So that what is that. my point of view? I want to You know, make it very I know you clear. to play that, but not only that, all the time, the whole day they were talking about only that. Literally. Why? See, So I think the things like they have to have, well, what do you call that? Different strokes for different folks. Like there will be always a crowd that they have to capture by highlighting the failures of the Congress. That Congress of secession will always be there, right? It'll be there until the Congress is gone. They You don't have to want the keep that in Congress mind. gone. मेरा पॉइंट क्लियर है. That's the Yeah, ठीक problem. है. whether Okay, अगर राहुल okay, गांधी okay, को बुद्धू okay. बना के, अगर राहुल गांधी को बुद्धू बना के पॉलिटिक्स में फायदा हो रहा है तो लो, मुझे कोई पंगा नहीं. मैं किस लिए ये बात कर रहा हूँ? व्हाई आई एम रेजिंग दिस टॉपिक? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अभी जो पॉलिटिकल शिफ्ट एक हुआ है थोड़ा बहुत, इसके वजह से हिंदुओं को मतलब अपना जो ओपिनियन है वो थोड़ा वेंट आउट करने का मौका मिला है. नाउ द इशू इज हिंदू, ये जो चेतना है, दिस होल कॉन्शियसनेस वांट टू एक्सपैंड, और इसमें ना ये बीजेपी गवर्नमेंट हर्डल डाल रहा है. इसीलिए मैं इस पे अगर वो इतना वॉइस मौका देता, मैं जो करना चाहता हूँ या हिंदू सोसाइटी जो करना चाहता है वो फ्रीली करने देता, मैं कुछ नहीं बोलता. अगर कोई टेम्पल के बारे में जो भी अगर कुछ लॉ या जो भी रूल है वो कोर्ट में अटका पड़ा है, विच इज आस्किंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओपिनियन, अगर वो नहीं दे रहा है तो मुझे बात करना पड़ेगा. देन बीजेपी गवर्नमेंट इज कमिंग इन माय वे. ठीक है, वो रोड़ा, क्या बोलते हैं, रोड़ा डाल रहा है जो भी है. ठीक है, अगर वो ढंग से आरटीआई का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, देन वो या फिर झूठ बोल रहा है आरटीआई में, जिसके बेसिस पे मैं कुछ भी फाइल कर सकता हूँ, सरकार से पूछ सकता हूँ या फिर कोर्ट में जा सकता हूँ. अगर उसका झूठ जवाब दे रहा है या जवाब नहीं दे रहा है तो वो मेरे रास्ते में आ रहा है. और वो जब मेरे रास्ते में आएगा तब मैं पूछूंगा ये सब बातें कि मतलब हमारा, इफ वी वांट टू एक्सपैंड, लेट अस एक्सपैंड ना. तुम फाइल या फिर जो भी है वो चीजें पकड़ के क्यों रखे हो? खाली करो वो सब चीजें अपनी डेस्क, हमें थोड़ा ताकि न्याय मिले. तो ये जो भी चल रहा था, ये काशी का जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी पकड़ के बैठ गए. सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि बीजेपी अब मतलब एक्टिवली दे आर एक्चुअली स्टॉपिंग द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस एंड द स्प्रेड ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस. इसलिए मुझे इससे दिक्कत है. नहीं तो वो अपना पॉलिटिक्स करे, मैं जैसा हिंदू चल रहा है उसे चलने दे. हमारे टेम्पल खाली कर, टेम्पल में मुझे प्रीमाइस मिलेगा, मैं जाके अपना प्रोपागेंडा फैलाऊंगा, मैं अपनी चीजों के बारे में बात करूंगा, मैं एक लेक्चर दूंगा. एक बड़ा सा टेम्पल का अगर आंगन मिल गया मुझे, आई विल यूज इट. अ लॉट ऑफ हिंदूज विल यूज इट टू गैदर पीपल. मैं उसी तरह, इसीलिए मुझे मंदिर चाहिए टू प्रोपागेट माय आइडियाज, लेकिन वो सरकार करने नहीं दे रहा है. It Like will no one more be major, a, Okay, I will one have very, some space okay, now, which will not be a secular space, they which will have be not, Hindus they have sitting not जहाँ पे created, लोग बात कर सकें. they don't put anyone in charge of the ministry, the information broadcasting ministry. I mean, there is Exactly, someone there, but he's busy with something else. There's not right. a person in charge of the information broadcast ministry. इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में आई थिंक वो अश्विन वैष्णव को देके नहीं नहीं रखा है नहीं जो था आई थिंक there's रेलवे का another मिनिस्ट्री. person, तो दूसरा बंदा है, तो but he's in charge of something else. कौन सी More important. प्रोपेगेंडा, कौन सी प्रोपेगेशन की बात कर रहे हो? हिंदुत्व प्रोपेगेशन तुम्हारा, यू डोंट नो हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री. देन व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस हिंदुत्व प्रोपेगेंडा एंड ऑल दीस थिंग्स? okay, Shastri, go ahead. इंदिरा गांधी को जब पूछा गया था, इंदिरा गांधी को पूछा गया, इंदिरा गांधी लाडली बन के जब आई, मतलब पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहती थी, उसे पूछा गया था कि मतलब लाडली हो तो कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए. शी वेंट फॉर दिस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज शी न्यू. उसके बाद से वहां से फिर कम्युनिस्ट ने पकड़ा शायद. ठीक है, एंड बीजेपी डोंट नो हाउ टू यूज दिस मिनिस्ट्री. दिस इज अ सैड सिचुएशन भाई. They don't want to use it. I feel like they're very afraid to राइट राइट, use दे their नो इट narrative बट दे power. राइट, एग्जैक्टली, Simply like they're scared that Okay, people get offended. I don't understand. yeah, राइट. this is a Anand, you will be fined 5 rupees. yeah. No, I mean, this is a cultural problem with the Sangh and also government of India as a whole, right? I mean, um, the entire information and broadcast ministry has been atrophied over the past 2.5 decades.
like they're usually like just the propaganda wing of the PMO. That's what the Information and Broadcast Ministry has been for at least like 3 or 4 decades now. Um, so it's like nobody knows how to do information and broadcasting uh, in all of government of India. No, This I don't is agree with this that. in all of government of India. I'm not just No, I saying this don't agree is with that. I think Modi ji does a phenomenal. He's very good at information broadcasting. Like for example, his Right. His Man Ki Baat is phenomenal. I'm yeah. telling you, that's one thing I love his Man Ki Baat. He's so good at it. He's like everything is well crafted to talk about Indian consciousness. Again, there's some Hindu consciousness, but mostly Indian consciousness. But it's very Right. good. It's one of the best structured narrative thing. But why is it not done for larger things? Only when they want to make a political point, then it's very effective. Like for example, when the Ram Mandir thing, the two I think two inaugurations. I think one is the first one, then the recent one. That was very well done. Like they really planned out the ideology, the visuals, the messaging. Everything was well planned out. But That once again it's comes from over, once it is the political like point is over, then they like nothing. They've not talked about the. There's not a regular program about the they have a what the museum there. Like no, like people would not know unless they were like talk to your friend who knows there's a museum there. yeah. I mean that's the problem I'm trying to say, right? Government of India does not know how to communicate. But again, that second inauguration, the Dhwaja ceremony was Dwajarohan. Dhwajarohan is basically again it was a PMO effort, right? वो PMO है, वो PM है, PM को अच्छा दिखाना है इसलिए उन लोग अच्छा किया है. And this is a problem across government of India and also across Sangh as well, right? You have Sam to doesn't add both want. of them together. Hmm? They're like, I don't want to talk about my good points. No, you must see it on your own. Like, no one will know unless you talk about it. No one will know. Huh. I mean, some of that that has is changing. changed. No, that I has mean, changed. yeah, that is changing. But और No, थोड़ा it has changed. It has changed. I can tell you. I know. no. It's a long way to go. That's what I'm saying, right? That the Andhra guy who went and cleaned the temples in his district. He's a Sangh guy. He's the one recording it. He's the one posting it on Instagram. But there's no sung branding. He's just some Yeah, they guy. need. Yeah. No. That's what I mean. They need to improve on that, right? Like it can be better. But the first thing is like doing the act itself, right? You're talking Yeah. about, oh, this is the good thing I've done in my location. That's the first step. They're doing that, but they need to do more than that. But it comes back to the same topic that we had, right? Now, for this stream, you had the picture of Modi standing rather timidly in front of a Bangladeshi tiger. Why does that picture hold some resonance? Because India and government of India as a whole sucks at communication. It was evident in Operation Sindoor. Yeah. And I think we all will agree if I say that, we just suck at communicating. And if we want to solve any issue in India, uh, our comms is basically, I'm a slightly older guy. When I was young, everything was running on the basis of Ram Bharose. Now, today, I can say in 2025 that, uh, uh, there are only few things that is run on Ram Bharose, and that one of those few things that is now running in Ram Bharose is like communications. You can I और don't यहाँ think expect पे a it's एक Ram lot. चीज मैं Bharose. बोलना चाहता हूँ. It is not like कि this is due to the innocence, naivety of BJP government or RSS for that matter. No, RSS in fact अभी जो न्यूज में आया था कि पाकिस्तान अपना इमेज मैनेजमेंट के लिए कोई कंसल्टेंट फर्म का सहारा लेता है यूएस में, एंड दे आर आस्किंग फॉर द कंसल्टेंसी ऑफ द सेम फर्म. इट्स नॉट लाइक दे डोंट नो हाउ टू डू इट. ठीक है, They're buying तो out the same बेसिकली firm that दे नो हाउ टू डू ऑल दिस. सो दिस इज नॉट सम नाइविटी और इनोसेंस. ठीक है.
दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी को 400 सीट मिल जाता, वैशाली दी लिख रही है कि इट वुड हैव गॉन टू द रैम्पार्ट्स विद इलेक्ट्रिक सो। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ अगर 400 इनको मिल जाता, ये कास्ट सेंसस लाते। दैट्स वेयर माय प्रॉब्लम इज। तुम बोल सकते हो कि मैं कास्ट सेंसस एक अच्छे से, मतलब राहुल गांधी जिस मतलब व्हाट एवर वाइल इंटेंशन से चीजों को लाना चाहता था, हम लोग थोड़ा उसको डाइल्यूट करके, भाई तुम कास्ट सेंसस ही लाते, तुम कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं करते। और यहीं पे मुझे नहीं लगता कि ये इनका इनोसेंस है या कुछ है। एंड बीजेपी जैसे हिंदू कॉन्शियसनेस क्रॉस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई एम ए राइटर राइट, सो आई गो टू क्रॉसवर्ड जस्ट टू चेक कि भाई कौन सा बुक कैसे मार्केटिंग हो रहा है, क्या सीन चल रहा है, कौन किसको प्रमोट कर रहा है। एंड तो 3-4 साल पहले आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। क्रॉसवर्ड में जितना दिखता था ना बुक्स, काफी सारे वो इंडिक ओरिएंटेड होता था। और एग्जैक्टली जस्ट टू मतलब फॉलो योर पॉइंट कि भाई इंडिक ओरिएंटेड मतलब कुछ हद तक हिंदू ओरिएंटेड है, चलो मान लिया, कोई बात नहीं। अगर इंडिक फैंटेसी या इंडिक कोई एपिक के बाद चल रहा है, मैं मान लिया कि वो प्रो हिंदू है। अभी दिखता बिल्कुल ही मतलब जो या तो मार्क्सिस्ट किताब हो गया, या तो कुछ एक सेक्शन तो रहता है जो बिजनेस ओरिएंटेड है, उसको तो तुम कैटेगराइज भी नहीं कर सकते कि लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट है। बट ज्यादातर जो जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर मुझे दिखता है वो लेफ्टिस्ट लिटरेचर दिखता है मुझे। ठीक है। भूपेंद्र की अटैक की Uh, बात। okay, no, I have actually three sets. One with Free Your Temple, one with Shriram, and one more is there. So I wear, but they all color is same. So same manufacturer. So an interesting thing I'll tell you. One of the interesting thing that the again the BJP does not do, and this every other country does. So the BJP has a lot of access to a lot of interesting journalists. Okay, journalists who are uh, reasonably well skilled. Okay, have you ever seen any Indian journalist go to any other country and ask questions to their heads of state? Right, exactly. You forget about heads of state. Even their I have seen spokespeople. Pakistan doing that. I have seen Pakistani journalists doing that. Exactly. Pakistan is every bloody country. Not one Indian bloody journalist, rich journalists. Not one of them is in any like. I'll see Indian journalists sitting on TV, including Arnab Goswami, Mister. Like Right. I go to ask questions. He's sitting in his program and challenging Western. Saying, get out of your bloody room. Fly to US. You easily can get a press pass. Walk into the freaking White House press room and ask a bloody question. Right. But you would rather sit in your Another- room with all the power in your world and you just scream there. Invite some random person. Sudhir Chaudhary ko you can bring to the DD channel and buy him for what 12 crore, और उसका थोड़ा सा पैसा लगा के मतलब इंडियन जर्नलिज्म में लगा के इंडिया They की कोई haven't बात नहीं even करवा सकते। they haven't even gone to Southeast Asia. They haven't gone to Africa. They haven't gone to UK. No country they go and ask questions directly. They have one correspondent there who doesn't care, who basically doesn't care about India. He cares about just getting his paycheck. This has been told to me to check. I will discuss with this. I think CNN has this person called Sanjay Suri. He will just give you the basic rundown of what the happening. That's it. No pushing beyond the point. And what is this? Why are you portraying India in this particular way? And there's one lady, ANI lady. She asked us. I think she asked Trump. That was like a freaking. That's the only thing that I've ever seen. That the lady in the guts. She goes up and she asks a question to him. India said this and that literally rocked the world. It was really posted all over the freaking world. Russia was quoting. Everyone's quoting it. Exactly. No one bloody Indian journalist guts to do that. Anand, Can you see? That's how the narrative is not working. Wait. For your information, Pakistan has around, I think, $1 billion just for information warfare. That is official. But if you're going to add unofficial means, Pakistan would be spending about, let's say, $5 to $10 billion in 1 year on information warfare when they are not in the war mode. Okay. Right. So one more thing, you are another interesting thing. The Indian like the thought, the writing thought. I don't even know about the large ecosystem sitting in the US targeting India. Like there's one Democracy Now. There's a channel in the US. Okay, it is run by the Democratic Socialists. Do you know Ravish Kumar was on their show, on their channel? Ravish Kumar got to go on Democracy Now. Not one bloody Indian journalist in India talked about that interview.
Like they don't even care. They don't care that this propaganda is being spread over there. There is zero research. Like they don't care. If it comes up, some random person mentioned it, it may come up, then they will catch it. Only So when many it goes viral on Twitter, that's when they catch it. That's what they catch it. They don't understand there's an entire ecosystem there working against the Indian state, and not one of these journalists who have like millions of, I'm guaranteed they got millions of dollars. They act like they're very poor, but they're not. They're rich as fuck. But not one of them is researching that. No, And but if someone the thing Yeah. is like it's a captured institute. That's what I mean, right? Entire broadcasting in department is basically captured. Now, if you want to get a White House as a foreign journalist, if you want to get a press pass, right, Press at the pass. White House, it has to go through the INB ministry, Exactly. That's why I'm so right? upset. And the except for that one lady, the INB ministry always posted their most stupidest chela, because it's essentially a well, in diplomacy, there's something called as pleasure posting and punishment posting. Right? You want to punish someone, you post them in somewhere in Africa. Sorry for Africans, man. I don't mean to demean you, but that's what punishment posting meant. And US is a pleasure posting. DC में जाके you're gonna hang out with a bunch of DC journalists. They won't even pay attention to you. But at least you get the free drink in a nice DC hotel. So it's a No, pleasure I'm posting. So not just that. I'm telling you, there are like random YouTubers in the US, like no unknown YouTubers, who can literally go out of they are creative, okay? They find ways to get tidbits from politicians. Like there is no interest in India, the journalist fraternity, to do anything creative. Everything is a bloody this. I know this politician. He will give me that tidbit when I need it. There is no creativity in catching a politician out and asking him an interesting question. Nothing. They're not interested in doing their actual what journalism is. I have observed. To me, every Indian journalist, their journalist degree should be taken back. They're horrible journalists. This is true Okay, for Top to bottom, every, everyone is but horrible. this is also wait, true wait, for every Indian analyst, right? So if you have an international relations analyst, except for a couple of them, mostly and the thing about IR analysts is that they are supposed to do some amount of public communication, which means that they write articles on public newspapers. None of them, they always have criticisms for government of India. None of them have basically said like, oh, this situation presents opportunities in XYZ way for government of India. None of them. Right? So Horrible. it is okay, horrible. Shastri, But it's a artifact of just 6 decades of bad governance. You're not going to get rid of it this instant. Shastri, do you can you answer this question? It's a very interesting question. Does not Russia also do not care about Infowar? Oh, they care. You can actually Oh yeah, give a better answer. they care. They care. Oh holy shit! Like they're really good at it. It's not just so they have RT, which they run really well. Very good. But RT America. RT America, but they also recruit talent, right? They don't hesitate to recruit talent. Tucker Carlson. So you might remember Tucker Carlson went to Russia, right, to interview Putin. That is And he was all in praise about Russia कि यहाँ पे चीजें कितनी कम महंगी है and all these things. That's typical. He's not a great journalist either. You took advantage of his He has a stupid. base, na. He has a conservative base in US. That's why Modi did that discussion with that scientist, no? That national scientist. Yeah, But I mean, again, what a great opportunity of expounding in Indian culture. He went to Mahatma Gandhi. Like I was like, could you not talk about Savarkar? Could you not talk about the idea of Hindutva? no, Someone should have said bloody it's again Gandhi. because Gandhi. of They already know no, bloody Gandhi. They know Yeah, Gandhi. Don't you explain Gandhi again? No, it's because of this is like government of India's stupidity, right? 6 decades of stupidity has been in this institution. Baked in. Yeah. It'll be there for some time, but you have to get rid of it brick by brick.
The All the reason 3 why, points, the Vasudeva reason, Buddha how, ka country, Gandhi. I'm like, is there no, even is there any reflective of India let right me, now? no, let me come to that, right? So, if you ask any INB Babu, what should you talk about in India? The first thing he'll say is Gandhi. The fucking idiot does not think beyond God. I mean, the our government, like our government spends about uh, about like $6 or $7 million just to preserve Gandhi, his letters, to procure his letters from abroad. Let me show you. I like think like like some 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 Gandhi Chela wrote some very profound cultist letters in a village in France. Government of India will go there and pay $1 million in an auction to just procure that. That's the kind of stupidity we have within government of India. Like, but coming back to my point, right? RT even recruited Rick Sanchez, a mainstream CNN journalist. yeah. Right, Rick Sanchez, he's a mainstream CNN journalist. Usko, they gave him a package he couldn't refuse, and now he's going out there doing interviews with everyone. He's basically got a free hand. Right? The guy even comes. Actually, the guy even comes to India and talks to Indian. अपना ही हिंदुत्ववादी लोग से ही बात कर रहा है वो. Are you उसका Atma? कॉफी पग He's talking लेके about वो आरती all में. kind of things. Indian culture, all he's talking about. Yeah, I mean, I kind of find it funny because I think it's also uh, I feel like this is a thing that I'm sensing within the current BJP government is that they've given up on certain departments. They've certainly But we given up on can't. certain. But we can't let them do that. We Arey, have to keep I tell you shouting. an interesting thing. Other gaming companies are doing better job of representing Indian culture than our bloody INB department. You know, civilization series, right? Sid Meier's civilization series. A lot of people learn history through that game. Okay, there's a lot of like what do you call strategy games. People learn history through that. Like they what are the first exposure of history comes from gaming. A lot of Westerners. Okay, it's a very powerful tool for cultural discussions. Okay, there is a civilization 6. Gandhi was a primary Indian leader. Gandhi was and literally there's a meme No, about it was not the case. Gandhi became primary leader after Richard Attenborough made the movie Gandhi. Before that, he no. was not. I'm saying I'll explain to you what I mean. Civilization, the game, yeah, that In the came after game, the movie. six games they have made, and all 6 games, Gandhi was a primary Indian leader. Like they had no other Indian leader except Gandhi. Gandhi was the standard, okay? And it is only about faith, irrational faith. Their entire design of the Indian story was faith, irrational faith. I'm not joking. 6 games, only that. Gandhi and faith. And they by mistake programmed the AI in such a way that he would guarantee nuke everyone. Aja, I want to announce something Wait, here. So wait. this was going on in my mind. So I'm Let me planning finish. to Bro. write a book. I'm planning to write a book, Gandhism as a Tool of Hindu Genocide. Do you Okay. think this book can be published? No. Matlab, see, I already have some No, material. No, And unfortunately, No. you cannot publish it in India because in India we're obsessed with Gandhi cannot be criticized. I have no idea why, but okay, whatever. because, yeah, Maybe so after this book, there is this IPT thing. But after IPT will be done soon. So okay. Gandhism, because we already, Kaushikda was talking about this thing, right? Ki we have to write on Gandhi and the whole, his biography and everything. So we have gathered all the material and everything. But I want to go beyond the biography of Gandhi. I want to write about Gandhism and not You can Gandhi. name it something else, but not that. I mean, come on, Gandhism has historically assisted and been an accomplice in Hindu genocide. Yeah, you have to name it So something else. You're name something else. I Okay. will write it. I will write it as it is. Okay, but let Gandhism me as a finish this tool of. point. There's a point why I was mentioning this. So now the last game, that this Civilization 7, it clearly started being made like the past 3-4 years. This is the first Civilization game, Civilization 7, where the main Indian, there are 2 main Indian leaders. There is Chandragupta Maurya and there's Rani Lakshmibai. Chandragupta Maurya and Rani Lakshmibai. Both are Hindu conscious leaders.
and the design of their culture. They've done. I'll tell you, I'm not joking. They've done Mauryas, they've done Cholas, and they've done Mughal Empire. Unfortunately, but Mughal Empire, interestingly, it is a lot of Hindu artifacts. It's very interesting. And you observe the research. The research they've done is phenomenal, like really good. And I had a discussion with one of their developers. She literally says, and I said, the Mughals didn't see themselves as Indian. They saw themselves as Central Asian. She hearts it. And I said, Asanish, Marathas are a better modern age civ. And she says, Marathas would be a great addition to the game and a representation of modern India. I'm telling you, Westerners, with the right prodding, they are excellent conduits to push our cultural context. But if the Indian government doesn't do its bloody work, this is few and far between. You may find someone who's a good representative of Indian culture. Or it will get the same, like Age of Empires 4, for example. It's horrible. The Indian history there is bullshit. Like they're obsessed with the Mughals again. They're obsessed with Mughals and they're obsessed with the Delhi Sultanate. That's it. Okay, was Lord Buddha the first woke? Okay, last question. Last question. We say goodbye and we'll come again Sorry, to our Oxford Union version, Indian version debate. Okay, was Buddha the first woke? We need that reaction now on that Oxford Union debate. I don't want it. I don't care. It's a fixed match. No, I don't care. know. See, there's some things like, I put it this way. If you're in Oxford and you don't participate in the Oxford debate, shame on you. But if you are not in Oxford and you don't pay attention to Oxford debate, good for you. Right? No, This I is what don't agree with. I don't agree with that. But okay. No. No, I but mean, was Buddha the if first it's like, one? no. I think one is that Indians need to learn how to debate, not amongst ourselves, but with others. Yeah. We debate a lot amongst ourselves, but it's very important to make a point, put your point forward with others, right? Yeah. Rhetoric matters. Yeah. Having narratives for others matters. Yeah. So we should always participate, right? So if you're in Oxford, and there's a debate about that remotely involves India or Hindus, go participate, make your points, move on, No, right? but it was. Yeah, I watched one of the speakers. It was the most Congress themed opposition to Pakistan I've ever seen in my life. So Like be it it. just. I mean, it's Oxford. Like you're not going to get anything better than that. I was wanting to see J.S. Deepak kick their ass, but unfortunately couldn't do that because they were too scared. No. वो सब the see the thing you need to realize about Oxford is that house always wins. No, that's No, what I'm the saying. It's house. not really true. No. I'm saying the house no matter how factual you are, how much you think you're on the right side, the house always wins because the house always decides the winners and losers, No, irrespective of. I don't care about that. I'm saying when the video comes out, the house loses in some debates. Like literally, the views on the opposite, the one who lost, is so high. It's so freaking high. Well, like you see some of the debates between there's some atheists in the UK and them versus the religious people. Like the religious people may have won, but the freaking those guys like wipe the floor with the opposite side. So it's such good quality debates I've seen in Oxford Union. But I No, was hoping for that kind of quality. But yeah, but you're talking about Oxford students, so it's yeah, like I'm talking Oxford students. like No, you're expecting not too Oxford much students. from them because Yeah. you're expecting too much from people who are born with No, a silver spoon in places like Worli, Bandra, Hoskas, maybe like the nicer area around Presidency College, no, he right? spoke Old well. wealth people. I just find it. I found it very standard. I know how to show I'm anti Pakistan, but I don't know to ruffle any feathers. Like that's what it was. Like it seemed very tame. Like how I mean,
See, unless you have people from the actual middle class going to Oxford, you won't get that quality. Abibi, it's still like creme de la creme of every, at best, it's like creme de la creme of every district politician, right? District politician, right? No, I'm like वो जिला परिषद का वो local MP MLA रहेगा, उसका बेटा बेटी जाता रहेगा अभी. Unless that goes down to middle class people, regular middle class people with a real passion for the Oh, country. that's cattle. That's funny. Yeah, so I don't No, expect much. But the thing is, like, let's but talk about Buddha. Buddha, the topic on Buddha actually we skipped it. I Was don't. That's Buddha, your the opinion. I was have Lord no Buddha opinion. the father of all works? No, I Wokism, don't. Buddhism से निकला. No, Buddhism No, is no. not. Actually, that is propaganda because Buddha was a very smart person. Correct. He Well, knew how to use. Buddhism was slightly anti-woman for that matter. I don't know how anti-woman is wokism. I think It is not. Buddhism is not woke at all. Buddhism is extremely problematic for woke people because it's very nihilistic, and woke people are not nihilistic. Wokism is Woke people about are right, yeah. actually, Buddhism is I would about duties, right? Duty no, to no, no, yourself no, at least. no. Buddhism has the same problem that Hinduism has, right? Interpretations require a certain kind of context. You can read about shunyata and easily mistake it for nihilism, whereas it's not at all nihilism. I think it's So nihilism. I mean, that's what I mean. Like Buddha's you ascetic learned it ideal is without it. nihilistic. I mean, come on. No, I mean that's what I mean. Like you looked at I didn't say shunyata. it's nihilism. I said it's very nihilistic. I didn't say it's nihilism. Again, that comes from reading it outside of its context, right? So it has the same problem as, see, Tomato, if you, tomato. No, we huh? know the fundamental differences between Buddhism and Wokism, but what are the similarities? I believe there are certain amount of similarities. Let's explore that part. Call to moral virtue. No, I mean, come on. That's a good thing. I mean, No, no. Actually, Bijit, actually, the core Buddhism which was taught by Buddha, which is actually documented in Dharmapada, actually, it doesn't have any woke element. Okay, even I'll tell you example. Somebody actually asked Buddha that, like, if I don't become a monk or I don't become part of Sangha, will I be a bad person? Then the Buddha says that, no, like, even if you go and donate some food to the monk, you cannot become a monk. But if you give food to the monk when he comes for his bhiksha, you are doing a good karma which will give you better results in the next. So the later version of Buddhism, it became little bit woke and it became little bit here and there. But the original Buddha, what he taught, there is no anti-Hindu, there is no wokeism in that primary text. The other parts you will find few things. Hey, disciples. So there's And a little masala on top. So correct. There's also a cat story. Correct. So in a Buddhist monk there was a cat, and somebody said that cat is speaking to me. So they put the cat as the primary monk of the monastery itself. Cat who was the monastery's monk, and okay, and that is cat would do Wokism. Come on, that meow. is Wokism. No, that's what I'm saying. The primary Cat Buddhism life which was taught. matters. No, Cat life so that I'm matters. saying the primary Buddhist text which was there taught by Buddha, there is no Wokism, nothing in that. The later stages it became like that, not exact way woke, but bit absurd in many ways. So okay, so shall we continue our debate tomorrow on Sangh, or we will tomorrow No, we are since, starting, correct? no, my suggestion is since tomorrow is Christmas, we should target Christmas. No, tomorrow we are Acha, trying. We will do that. you want a debate or whatever thing on Christianism? We can do No, one. Christmas. Target Christmas. I want to target it. Okay, Christmas. Yeah, there is Okay. a story, correct? The way it was transferred from April to December, correct? Everybody And knows about it. debunk Santa Claus. All kids must not believe in Santa Claus. We must make sure no one Exactly. believes in Santa Claus. So So let's put that out. Huh.
Tomorrow we are going to be the Bajrang Dal Actually, in. we should know that the image of Santa Claus was made after a chindi chor, basically, who used to come down intrude into a house through chimneys, used to steal and then go. So I have to go through that story, No, and we can. don't you know it's Sant Kalash? Sant Kalash is for my Santa Claus came with Sant Kalash. I'm not going to be part of that, unfortunately. God identifies as monk. I'm just joking. I'm trying to end the thing on a very comic note. It's all. Decolonizing Okay. India's erotic heritage. No, Get we that must question. we must do Abhishekam for we must add Abhishekam to Christmas celebration. Very important. Abhishekam They of Man, are the already doing it. they are already doing it, man. They We are are already saying doing it. What are you already doing saying? Abhishekam to Jesus, to tree, Lord Bhai, Jesus. Om the Shri cross, Yashave Abhishekam Namaha. of the cross, Abhishekam of the tree. Om And Shri everything they Yashave are doing, Namaha. man. Bhai. You know who is providing the mantras for the Lord Jesus? It is the Ramakrishna Mission who are writing mantras. Oh God, why man? Why are they I doing am this? not kidding. So they do the Yeshu Puja, na? So Hmm. they chant all these mantras. I sent it to Bhupenda, na? Bhupenda. Ah, yeah, I have it. Yeah, I have it. So here is the Yeah. mantra. Here is the Vaishali, let's mantra. answer Vaishali's question. Om madhura sarala vakye risa tattvang prakasha krasagata parisesho piso putram mritoya tamasi Dharma, shaya dharma. pavitrang meri jang lokabandhum vimala paramahansam रामकृष्णम भजाम ओम यशवे नमः कि जिनकी माता मेरी और जो ईश्वर के पुत्र हैं लोक कल्याण में मधुर और सरल सेंटेंसेस में जिसने भगवत तत्व को लिखा है और उसके बाद क्रॉस में जिन्होंने अपना जीवन दान दिया है Oh God. वही पवित्र लोकबंधु यशुरूपी श्री रामकृष्ण देव को मैं भजना करता हूँ उनका पूजा करता हूँ ठीक है सो Dharma, सच ए dharma, vada कॉम्प्लिकेटेड pav. Can I just answer Vaishali's question? How is Santa Go Claus ahead. Christian? Christians come from Jerusalem. How do you know have snow in it? No, this is basically a European pagan borrowing. Festival. Yeah, so Yule is a very common European pagan festival, and when Christianity went to that region, they wanted to adapt. So what Christians do generally is they adapt local traditions into what they appropriated the tradition. So instead of because they don't want people celebrating their own traditions, but people want to celebrate those traditions. So what they do is they will say Jesus is that person you are praying to during Yule. And then people will convert and they'll still practice Yule for next 2-3 generations. Then they will change Yule to be a Christian tradition. And so what happens is that borrowing, first of all, Saint Nicholas is a character, actual saint. He was a saint. So find a local guy who was doing nice things and canonize him, make him Saint Nicholas, and then take the local traditions of Yule and then make a fake character called Santa Claus. Santa Claus is not even a real thing. It is a corporate creation. Santa Claus. There's no person with beard and ये stuff. बोला जाता है कि एक्चुअली ये कोका कोला ने क्रिएट किया है Yeah, something like that. So ये एक्चुअली उनका स्ट्रेटेजी था और जो सेंटा क्लॉज जो It's a उस तरह mix, का हैट पहनता है Mine, it's a mix. It's a mix of Saturnalia and Yuletide, but mainly it's Yule. Let's say make the Yuletide gay. It's basically from Yule. It comes from Yule. Saturnalia just happens to be the same time. हाँ क्रिश्चियन के लिए जो मेन फेस्टिवल है अगर थियोलॉजिकली देखा जाए वो तो रिजरेक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसे जो रीइंकार्नेशन या रिजरेक्शन होता Resurrection. है वो रिजरेक्शन होना चाहिए क्योंकि दैट इज द कोट एंड कोट मैजिक दैट जीसस परफॉर्म्ड राइट लेकिन फिर भी I find it very goofy how people believe and that this guy Saint Nicholas he was a big genocider by the way ठीक है मतलब he was a very brutal the story is he knitted socks for the kids and he gave them the socks and like that's how the gift giving thing started basically. हाँ राइट तो ये कल डिटेल में चर्चा करेंगे एक्चुअली इसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है I was just joking, okay. I was just joking about targeting Christmas, okay. You have a good. I don't have enough content. I have little content. I don't have that much content to. If we want to discuss Christmas, why not? Like,
there are different things. Matlab, Christmas Arey, is my not a sister is natural. celebrating Christmas tomorrow night with her husband and her extra family. I hope she didn't see this video. She didn't see this video. She Send get them angry this with me. message. Send them this. Yeah, we are going to do a video and then send it to them. Oh God, no. Anyway, so most Christian festivals are basically appropriated from pagan traditions. Right. They don't have anything of their own. Okay, so we will be doing a Santa Claus stream tomorrow. Okay, and I should yeah, not suggest I will that. be I will be wearing a saffron Santa. Get a saffron cap and a saffron saffron. One more thing, why can't we need to take back our green for Mahalakshmi green? You take it back. बहुत हो गया Right. भाई. सब लोग हमारा green लेते रहते हैं. And I also say we take back Vanga Pradesh. That we have to do. There is no other option. From the river to the sea, Vanga Pradesh will be free. We need that. We need that. Hey, मैं तुम लोग को स्लोगन दे रहा हूँ यार, प्लीज ट्रेंड इट. No, Saurabh, tomorrow I'm going to. Saurabh is asking No, people are already why writing about target it. someone's tradition and festivities. Sir, when they got the tradition and festivities because they target someone's tradition and festivities. Literally. Why target someone's traditions and festivities? It Okay, is not so there. Christianism and Islam are literally born out of this funda by targeting someone's tradition and festivities. They get everything. It is only through the genocide of someone else's pagan tradition and festivities that these cults, these death cults, are actually born. I mean, people may be nice, but they may be nice people. Some people may be nice people, but the fundamental how it got this stuff, you have to acknowledge that. I mean, You need to know exactly. You need to know how it all happens. Ignorance is not bliss, bhai. Ignorance is actually genocidal. This is how we lost so many generations of Hindu activism because we're like, oh, we will hurt their feelings, they'll get upset, and then we'll have a bad relationship with them. If they want to be your friends, after knowing the truth, they will be your friends. Yeah, Instead of the fact that you exposed it. And Right? and people ask like, "Are you do this thing? You hate Muslim or you hate Christian?" No, I don't hate anyone, yaar. I don't Can, hate any individual. can I ask you one But question? I have problems for the ideologies Yeah. and No, what I these have a question. ideologies are saying. I have a question. When we expose casteist behavior, do we automatically become enemies of every person of that particular caste? So, for example, if someone is being casteist, right? Do we become enemies of all the people who are of that caste? No, no. Exactly. Because people understand that why we are critical of casteism, and they still are friends. That's all. That's okay. That's the point. I From the find mountain to Saurabh is the very sea, Ajay, very Vanga tomorrow is sensitive. Pradesh will also be right. free. 25th of December, 24th and 25th is also वीर बाल दिवस. So ये वही दिन है जहाँ अपने गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे को, 4 साहिबजादे को जिंदा वो दीवारों पे औरंगजेब ने चुन दिया था. औरंगजेब का जो सेनापति था, उन्होंने जिंदा चुन दिया था. मतलब so they what is it called? The walled them alive. तो हाँ, तो ये इसलिए वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है. बट बात ये है कि वीर बाल दिवस का जो टोन है वो थोड़ा सैड है, इसलिए क्रिसमस लोग क्रिसमस छोड़ के वीर बाल दिवस मनाना नहीं चाहते. बट इसलिए शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी ट्वीट भी किए थे कि आज या कल, आई डोंट नो, क्योंकि 1 साल तो नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था अबाउट वीर बाल दिवस. एक हफ्ते के लिए करते हैं. हाँ. No, I don't agree with Saurabh. It's not hate speech. And I don't even believe that Jesus existed. So how can I speak ill of someone who died, who didn't even exist, who didn't die? Like, I don't understand. Hate speech only matters if I hate a So person. that is the point, right? Jesus has no contemporary historical record at his time that talks about Jesus. That is the first point. Second point about the virgin birth. Virgin birth, ये जो word virgin है, actually
जो जीविश एक स्क्रिप्चर था उससे आई थिंक रोमन में ट्रांसलेट किया गया चीजों को, एंड देन वहां पे जीविश स्क्रिप्चर में जिसको यंग गर्ल कहा गया है, कुमारी जो है, उसका ट्रांसलेशन वर्जिन कर दिया गया, और क्योंकि वो ट्रांसलेशन वर्जिन कर दिया, उसके अराउंड ये कार्ड पूरा गढ़ा गया है कि जीसस हैड अ वर्जिन बर्थ बिकॉज मतलब ही वाज नॉट ए सिनर एंड ऑल। ये जो कहानी है ये एक मिस ट्रांसलेशन से पैदा हुआ पूरा कहानी, और ये पूरा कल्ट वहां से पैदा हुआ है। If you don't, if you're going to be afraid of tackling the two religions theology, Ghar Wapsi is never going to happen. Exactly. For them, it's a very simple Exactly. concept. I agree with They you. will just increase their numbers, and again, and just to pressure, they'll convert lots of people. Right. If you can't, that's my point. My problem with the Bajrang Dal and their current tactics is they don't challenge the theology. They challenge the proselytizing. No, go there and challenge the pastor there. Bloody Ask him theology, difficult exactly. questions and challenge, destroy his, in front of his entire flock. You should destroy his argument. You won't And even you need know to how stop the these process. cults are actually afraid of that. How the cults are actually afraid of that. Yeah. कि लालन टॉप में ईश्वर है क्या नहीं, इस डिबेट पे दो मुस्लिम को बैठाया जाता है. This is how they are afraid of their ideology. Just No, but imagine. technically it helped us. You know why? Because now the leftists and the Islamists are fighting. From the mountain to the sea, Vanga Pradesh will be free. It is free. It's hilarious. No, people are writing it already on X. I don't know whether it is you only. No. But I Tomorrow, saw no. that. Tomorrow we are going to create a poster on this. Tomorrow. Oh God. And post it. No, my Someone question. should make. But my question is, should- will there be a lot of Bengal in Vanga Pradesh? That's the question. We Why need to not? get to the sea. Goa is overcrowded. Russians. Bhai, okay, so there is this Cox's Bazar beach in Bangladesh. It is the dirtiest, probably the dirtiest beach in the world. Okay. I mean, we need to clean it up. Swacha, we have to clean it Swacha, up. We have to gentrify. yes, We need Swacha Gentrification is Vanga the word. Pradesh. No, we need to inspire Modi ji to like initiate Swachh Abhiyan in Cox's Bazar. We need to tell See, Modi ji, we need to clean first this you up. guys need to take the entire Sundarbans. Seriously. How can you allow them to have the Sundarbans? Like literally, how like they literally will go, they'll kill the tiger and eat the tiger. Like you cannot allow that. You go take back the Sundarbans. So the thing is like General Shankar from Gunner Shot, right? He had Yeah. 3 different proposals. I say we should go for all 3 proposals. But his thing was like you need to have 100-kilometer security corridor between. The guy went full Gaza, by the way, but then, which is rare for him. वो भी इतना सनक गया है. सोच इतना पेशेंट इंसान है वो. He's very patient. बहुत हाँ. Very patient, yeah, very chill guy. Yeah. General Shankar, very chill, very patient guy. Yeah, it's still a secularist at heart, and he's like 100-kilometer security corridor चाहिए, and coincidentally that covers the Sundarbans as well. The funny part, no, I also was very secular at heart generally. Okay, I prefer secularism, but I was just thinking the other day. I was just having this like after hearing a lot of debates, I was like, we don't need Hindu Rashtra, we need Hindu Rajya, because you know what happens in Hindu Rashtra, right? Hindu Rashtra, anyone can say I'm Hindu and make up shit. Like there are a lot of these lefties go around saying I'm Hindu and then just make up anything, just say anything about Hinduism, right? But in Hindu Rajya, there are very strict rules. The Rajya will decide the strict rules of Hinduism. They will consult all the Hindu groups and create a proper structured Rajya. So anyone can't just make shit up. Like what's his name? The Sarvadam Vada Pav nonsense won't exist in a Hindu Rajya. But in a Hindu Rashtra, any random person can say, I was walking around my bikini and that is the women's liberation. Like that's how Hinduism was for women's liberation and walking around my bikini. Like guys walking there in their V-shaped underwear. That's what Hindu liberation is about. Like that's also not Hindu liberation. I protest against Vada Pav being equated to Sarva Dharma. So I like Vada Pav. Don't insult Vada Pav by associating with Sarva Dharma Vangi Bar. No, Vangi Bar is also good. Oh wait, a lot of people hate on poha. So Sarva Dharma poha. Okay, so Cox's Bazar for Trump,
that is final. Bad It will idea. go to Trump. Why give it to Trump, man? Give it to Hiranandani or Adani or Here, Right, Lodhani. यार Hiranandani, मतलब Adani. आत्मनिर्भर भारत, come on. We need to decolonize our mind. Correct. Arey, First, I give it to decolonize our Thailand. mind. I give it to Thailand. They'll put all their guns in that direction. Say we need to fight today, and you say other side we put Cambodia. Like this, they'll be fighting there in Bangladesh. Is like, what the hell is going on? Why are they fighting? Nah, I mean, I would just give it to some give it to some local developer in India. Or even better, let them do a JV with some Emirati. They'll Oh also God, no. enjoy it. Hmm. Emiratis love good beach properties. Give it to Omanis. Give Oman people. Oman people are very chill. Oman, yeah. No, but fully no. JV. Joint 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 venture. venture. Okay. Yeah. ओके, चलो आज के लिए समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं. ओके, जय श्री राम, वंदे Jai मातरम. Shri Ram. Namaskar. From the Namaskar. mountain to the sea, Vanga Pradesh will be free. Yeah, With mountain Bengali. to the sea, Bangladesh will be free.